जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तुम सस्ते न से तुम तार है ढीली कौन कसे 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 ट्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड दो Check 1 2 3 पीठ पे चरण उठाओ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ हाथों का योग बनाओ बस ट्रिप करते Hey! This is Ace. कहाँ है? चॉपर! चॉपर का है भाई? एस आ चुका है, चॉपर का है, चॉपर भी आ चुका है। चॉपर! और वो ना भाई आज हम लोग आए हुए हैं मजे करने के लिए, ठीक है, मस्ती करने के लिए। और वो ना टोनी टोनी चॉपर एस मारू क्या? आऊं क्या? आऊं मैं अपनी पे, आऊं मैं अपनी पे। चल देव ब्रो, हम शायद ये करना पड़ा यार। चलो दोस्तों, अबे ओ भाई, ओए ओए, बैठ कहाँ रहा? बैठना नहीं क्या? रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को। ये कहाँ एक्टिव है भाई? ये कहीं तो एक्टिव है, बट ये है कहाँ एक्टिव? ओरिनो नावा एसु देश का यहाँ होगा ये। कहाँ है ये भाई? लेजिड है कहाँ वो? ये तो नहीं है। ये और कहाँ चल रहा है भाई? भाई मेरा वेबकैम और कहीं भी यूज हो रहा है भाई। अब मुझे डर लग रहा है भाई। मेरे पूरे ओबीएस में कहीं काम नहीं कर रहा है वेबकैम, लेकिन मेरा वेबकैम कहीं यूज हो रहा है भाई। मैंने अभी कपड़े बदले हैं भाई। भाई मैंने अभी कपड़े बदले हैं। मेरे वेबकैम में लाइट भी जल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो, ये देख रहे हो? इसका मतलब होता है कि एक्टिव है। ओ भाई सीरियसली भाई, कहाँ चल रहा है ये? हाँ ये देखो, डीएक्टिवेट करके भी आ रहा है।
भाई अब थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं मजाक भी नहीं करूंगा भाई, थोड़ा सा डर का माहौल है भाई। अब इधर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पर ये है कहाँ भाई? अबे है कहाँ सही में? भाई मेरा वेबकैम कहाँ चल रहा है भाई? जेन्युइन देखो नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही आपको? What the fuck? भाई सुनो, अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, वैसे मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वेबकैम में लाइट जल रही है ना। हाँ जल रही है भाई मेरे वेबकैम में लाइट जल रही है, बट वो मेरे पूरे कंप्यूटर में कहीं यूज नहीं हो रहा है भाई। अब थोड़ा सा डर तो लगेगा ना आदमी को। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है भाई ये? भाई अभी भी चल रहा है वो। लाइट नहीं रहती है इसकी। भाई इनमें से कहीं तो यूज नहीं हो रहा ना? नहीं भाई ये थोड़ा सा डेंजर हो गया, बट कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी एप्स दिख जाएंगी। फोन ही तो चाहिए उसके लिए। अभी फायर फिस्ट मारूंगा मुंह में एक ही। ओरेनो नवा इज, मैं चश्मे के साथ बैड ऐसे नहीं लग रहा हूँ, मैं थोड़ा रुक जाओ। अगर मैं इसको जस्टिन बीबर स्टाइल बना लूं और फिर ऐसे कर दूं तो चलो आ जाओ। ज्यादा मस्ती नहीं करते हैं, ज्यादा मस्ती करने वालों को चूहा उठा के ले आता है, अगर तुम्हें नहीं पता था। यार कैमरा तेरे साथ भेदभाव कर रहा है, देख तो खुद ही ब्लर हो जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे को आए। हाँ अब सही लग रहा है ना? अब ये लिटिल रेड राइडिंग हुड जैसा नहीं हो गया ये? आवाज आ रही है तेरी? सही आवाज आ रही है इसमें भाई, बट मैं सुनूं कैसे? इस देसुका को जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अनु टॉनी टॉनी चप्पा चॉप्पा बोकू वाडोक्ता देव नूबड़ा। ठंड कैसा है यूके में? बाय द वे, लव फ्रॉम कोलकाता। लव यू टू मेरे यार। ठंड हो रही है यूके में भाई। ठंड कैसी है? 12 डिग्री हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा कफ सिरप पी लूं दोस्तों। हैं? कब सिरप है? तो यही पी रहा हूँ मैं 2-3 दिन से। हाँ कब सिरप पी रहा हो? सही पी रहा हो, सही पी रहा हो। हाँ भाई कफ सिरप ही है नहीं, मैं तो 2-3 दिन से पी रहा हूँ। पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे, कभी खून की उल्टी हो जा रही है बस। दिलीप भाई पर हाँ, ये हेड मेरी होने वाली है कुछ दिनों में यार। मैं मारूंगा ना इस साले के लिए, अलग से लेके आया हूँ मैं वहां से ड्रीम हैक से। चोर कहीं का। यार अच्छी तो लग रही है मेरे पे। ये खाली दिखने का चोर नहीं है दोस्तों। आ जाओ। बोकू आडोक्ता टोनी टोनी चोप्पा। ओ ये बताओ माय भाई लान कैसा लगा चमकता दिल? भैया बताओ भाई, लायन कैसा लगा चमकता दिल? मैं नहीं समझा भाई, मैं जेन्युइनली नहीं समझा भाई। ये कहाँ चल रहा है? मेरे को सच्ची में थोड़ा सा हो रहा है, बता तेरे को। वो जेन्युइन भाई, जेन्युइन कहाँ चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है यार। ये देख हर जगह पे है बट कहीं नहीं है। बाबा तुम्हारा बीटीएस निकल जाएगा, अनब्लॉक कर दो उसको एक बारी। बिहाइंड द सीन @GamerFleet OG। ए चुप कर कुत्ते। दोस्तों तो जो लोग भी आज आए हैं
मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर लोगों ने टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये देखो, रुको, ये देखो, बकुआ डोक्टा टोनी टोनी चप्पा मोमा डोना कहीं गिव मी सम पार्टी। चलो हम लोग देखने, अरे 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 ओ भाई 1 सेकंड से बच गए भाई, अरे भाई 1 सेकंड से बच गए भाई। तू देख रहा क्या दिखता? ओ भाई ओ भाई, मेरे दिल धक धक हो गया भाई। भाई तुम्हें कुछ इतना गलत दिख जाता ना जो नहीं दिखाना था। भाई क्या पता दिख गया। देखिए एक बार स्क्रीन पे, मत कर यार, समझ बोले यार भाई। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। लेट्स गो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप लाइव। दिख गया क्या? I gotta be honest. नहीं दिखाया है, नहीं दिखाया guys, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया है, नहीं दिखाया है। And Tribe just dominated above everybody else. It only makes sense for all these regions, all these teams to have something in mind, which is try to defeat NA. We'll have to see नहीं what our दिखाया है, teams नहीं can दिखाया है। manage here this weekend. Suffice to say, it's going to be absolutely jam-packed. And if you're at home, you're not going to want to miss a single second of the action. If you're local in the area, I don't know why you're not here. Make sure you're coming here watching it live. लाइट चेंज कर, फटाफट हंस गया रहा चोमू, चोमू हंस गया रहा साले, हंस रहा साला बगल में बैठ के पागल आदमी। हंस रहा बगल में बैठ के, नहीं दिखा, नहीं दिखा, कुत्ते का बच्चा। ये भी दिख रहा है यार जो तुम कर रहे हो। अबे पागल है क्या? Just do it. It's a cool place to be, and you won't miss anything that we have in store for you. So Done, done, that's the done. most important. Done. But now that we've got the lay of the land, everybody कर knows दिया how सही? the tournament works. You understand some हाँ, of these सब sorted. storylines heading into the weekend. Let's start. बाबा ये तो तब भी ठीक है, ये दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो दिख गया था। हाँ वही। शिट भाई। We might as well start the match with them. Our first match भाई versus Inco. Proper, talk to me about LG. भाई सुसु कैसे छूटती है मैं जानता हूँ भाई। ऑलमोस्ट हो गया था भाई। हाँ अब आए ना चैट में, हाँ वो दिख गया था। ये वो कह रहा GF रिवील हो गई मैं। ये इनको देख रहे हो भाई, GF दिख जाए तो मेरे को डर थोड़ा ना लगे, मैं तो और खुश हो जाऊं, मैं तो खुश हो जाऊं भाई। ये मुझे भी दिखेगी मतलब। शिट भाई अब मत देखो, चैट नहीं देखूंगा मैं तो थोड़ी देर यार। These are some of the most winningest players of all time since Call of Duty Mobile's inception. To say they have target on their back is pretty much. And that's just one half of what we got going on. अरे भाई सुपर चैट यूट्यूब, मेरा सुपर चैट दिख गई भाई, वहाँ देखो 772 रुपए दिख रहे हैं भाई पूरे। मेरा यूट्यूब भी दिख रहा है, व्हाट्सएप भी दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है। Ready to go, making sure all of their tech is completed. Look at the pillow setup. अरे इंडियन म्यूजिक बज रहा है, तेरे को पता है यार? तेरे पास ईयरफोन नहीं है ना यार? Comfort kill. मैं रुक जा, ट्राई करता हूँ अगर लगते हैं वो तो। To be on their A game, and I'm sure क्या? they will be, but they're not going to be alone on stage, of course, on the other गाइज हम लोग ये देख रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के मोबाइल ई स्पोर्ट्स वाले चैनल पे, ठीक है? जहाँ के सारे उनको भी सब्सक्राइब करना, प्यार दिखाना हमारा। roster that will be facing us. वो देख लिलीविल का मेन पेज भी खुला हुआ है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, हम ना मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब तेरे को कुछ हो करके। भाई कुछ हो हमारे साथ बस। Ended up third, but I'm sure they're aiming for more. They'll try to climb up that ladder. क्या? They'll try to knock down. हो सकता है लोगों को कुछ आगे जाके पता चलने वाला हो, But like you two have mentioned, जो कि इसी से पता चलेगा आगे जाके। यू नेवर नो, यू नेवर नो। super team, they are the ones with the भाई देख रहे हैं पीछे से आवाज सुन रहा है? गॉर्डन लाओ, गॉर्डन! defeat here वेयर इज गॉर्डन ब्रो? to the roster. You're gonna have a force. Look at भाई गॉर्डन को बुलाओ यार, हमें गॉर्डन देखनी है भाई। players in this team alongside with that. Lil पीछे लिटरली पंजाबी गाना बज रहा है, तुम्हें पता है? ओ मीमी यार कुड़िया काकरा किला। team of यार ये गंदी आदत डला दी यार इसने। Take a look here at the Inco squad. They're up on stage as well. गाने पता होके भी नहीं गा पा रहा हूँ ढंग से, सोचो। In all of gaming, it's just so simple.
लेट्स गो। इंडियन टीम कहाँ है ब्रो हमारी? गाइस बाय द वे जिसको पता नहीं है, ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो हम लोग देखने वाले, जहाँ पे 16 टीम्स फाइट कर रही है फॉर अ प्राइज पूल ऑफ $1 मिलियन, मतलब कि 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पर प्राइस पूल है। लेट्स होप सारे के सारे इंडिया के फ्लैग एक बार चैट में स्पैम कर दो। लेट्स होप हमारी टीम इंडिया इसको घर लेके आए बॉयज। लेट्स गो बॉयज। गॉडल है, गॉड लाइक है इंडिया से, सो लेट्स होप दे विन। लेट्स गो बॉयज, लेट्स होप दे विन ब्रो, लेट्स होप दे विन। लाइव नहीं है तुम साले पागल, मैं क्या नशा करके आया हूँ मैं यहाँ? वो एक कह रहा लाइव ही नहीं है, बल मैं लाइव ही नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? I don't know if the difference is as high as 69 to 31 if I'm being honest with you, but the fight's there. The fight's there. These two are absolute monsters. यो क्या है भाई? Looking like the first start. अच्छा हमारा लाइव नहीं है, मैं तभी सोच रहा हूँ क्या बोल रहे लाइव नहीं। माय बैड सर, आई एम सॉरी। It is important for you not to sleep on any of these teams, and Inco's proving that to us. So we knew that their S&D was definitely going to be a bright spot for them coming in towards this series. Number 1. And they closed it out here. Immediate fight through the middle of the map. पेला है भाई, पेला है। ये वाला कौन ले जा रहा है भाई? इनको तो जीत रही है। तेरे को पता है लास्ट टाइम ये जो लिमनोस्टी गेमिंग है ना, लास्ट टाइम ये लोग जीते हैं, चैंपियनशिप लेके थे 2022 की। हाँ बट देखना अभी, देखना इनको क्या मार रही है, देख 7-1। टीम्स बहुत क्रेजी करके आई हुई हैं इस बार, मेहनत करके आई हुई हैं, तो समझ तेरी तरह थोड़ा ना भाई। भाई ये नशा करके आएगा तू? 1 मिनट रुको यार भाई, एक बार इसका मुंह देखो, दिखाइए, पास आइए जरा, क्योंकि थोड़ा और पास आइए जरा। कितना पास आऊं भाई? कितना मेरे को दिख नहीं रहा है भाई, इसका मुंह देखना, नशा करके आया नहीं लग रहा। देख ले, तू देख, या खुद देख, इधर को आ थोड़ा, ये देख। अबे भाई हेलो आंटी जी, अरे भाई कॉल मत करो यार। हेलो अरे यार आंटी जी, आपका बेटा नशा कर रहा है। करो भाई, मेरे घर से बाहर निकलना टफ हो जाएगा। ये हाँ मेरे कमरे में अभी नशा करके आया हुआ है। मत करो भाई, मेरे घर से बाहर निकलना टफ हो जाएगा भाई। भाई बेटे वो तो अच्छा दोस्त हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ ये सब। वही व्हाट्सएप दिख जाएगा। वैसे तो मैं घर में वही बोल के आ रहा हूँ। ये देखो इसका कॉल भी आ रहा है। देखो वो कह रहे भाई कहाँ चले गए उठ के बीच से। You see it right here on your screen. 12-2 out from Lucasine is not only just MVP for his team. ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा आगे को आना है। You can see on the left side, nobody from LG getting realistically anywhere close. हाँ ये सही है, दोनों दोनों। आंखें लाल हो रही साले, सो जाएगा टाइम पे कुकरी चेला। वही मैं कह रहा हूँ 5 बजे तक तो हम फोर्टनाइट खेल लेते कल को वैसे। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। भाई तुम लोग कौन सी टीम को चीयर कर रहे हो वो भी बताओ हमें कमेंट्स में, ठीक है? कौन सी टीम को चीयर कर रहे हो सारे के सारे? तू कौन सी टीम को चीयर कर रहा है? गॉडल कोई ना भाई। इंडिया 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 इंडिया। हेलो हाँ जोनाथन भाई, जीतोगे तो थोड़ा पैसा हाँ ज्यादा नहीं, 8 करोड़। हाँ एक और है, तेरे को मैं अपने उसमें से दे दूंगा यार, ठीक है? तो 8 करोड़ भी है तो 1-2 लाख भी दे दोगे, बहुत है। 1-2 लाख ही दे देना अगर हो रहा है तो। नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, तो ऐसे करना 1.5 ही दे देना बस। तेरे को नहीं मिलेगा, तेरा मना कर रहा है। बात करो यार, तेरा मना हो रहा है, बोल रहा हूँ ना, हटना। मैं करूँगा 50 10। चलो चलो ठीक है, 20 रुपए। एक मिनट है भाई, जॉनी भाई कॉल पे ही रहना जरा। ये ले 10 है, 10 रुपए पकड़ो, चल मिलते हैं, ठीक है? हाँ वो ले लेना, चाचा की दुकान पे तेरे 10 रुपए चढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम मेरे ही कर दो बस भाई। हाँ लेट्स गो गाइस, इंडिया इंडिया इंडिया। बानी हो गई, कहाँ चिल्ला रहा है बानी? इंडिया इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा, गॉड लाइक जीतेगा।
नहीं, लेकिन मजाक से हटके पहले तो मैं 10 रुपए वापस करता हूँ। चल एक काम कर, अभी चाचा की दुकान खुली थी जब तू आया था, टेबल देगा, अगर कुरकुरे मिलेंगे कुरकुरे लिया इसके। क्या पैसे दो, दिए तो थे अभी, तो मेरे हैं। अब तो रात गई बात गई। मैं ना चप्पल मारूंगा मुंह में, लेके आया इसी से। साले चोर भर रखे सारे, दोस्त तोड़ना है, चोर है भाई चोर, दोस्त तोड़ना है ये। हर्षी आई नहीं आई अभी तक का, मैं अभी तक वो संभाल रही हूँ। क्या? अच्छा आगा वहाँ, अब तो हो गया होगा सही। मैंने नहीं। है मतलब हुआ नहीं है, I guess। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, वो तो ऑन है, सब सिक्योरिटी तो है। भाई कोई आके खराब ना करके चले जाए बस। कोई ज्वाइन ही नहीं कर सकता। नहीं बट कोई ज्वाइंट ना हो, मैं यही बोल रहा हूँ बस। ऑलरेडी समझ रही हो, बैकएंड देखते रहना, क्योंकि यार पता है बंदे क्या करते हैं यार, आके तोड़ फोड़ मचा देंगे, पूरा सर्वर तोड़ देंगे, ये दिक्कत है। वैसे लोग रोनी से इतना नाराज रह रहे। ओए क्या वो वाली तो खुली होगी पोंगल की, बंद होगी वाली, रात हो रही है सब बंद हो गई, 9:30। लो और पैसे ले जाओ, फिर एक ही बारे में ले आओ भाई, बहुत रात तक बैठना है हमने। मेरे यहाँ पे ऑर्डर कर दो कुछ थोड़ा पटर। लो ये लो, अरे ऑर्डर क्या करना है, यहीं से ले लो यार। ये लो बाबा 50 है, कुछ आउटपुट टांग लेके आ जाना थोड़ा। हाँ मम्मी तू खा के आया खाना? मम्मी इसमें भी नहीं खाया, इसके घर में कोई नहीं है। दीपिका जाके आया तू अकेले बेटे? ठीक है मम्मी, हाँ दे दो ना मम्मी थोड़ी सी रोटी। हाँ खा लेगा चाय के साथ। लेट्स गो गेम नंबर 2। भाई मुझे भी पकड़ा दो यार पानी की बोतल, काश मेरे पास भी ऐसी कोच होता है जो मेरे को ऐसी पानी की बोतल देता, बाकी गेम तो आता ही है मेरे को। गर्लफ्रेंड तुमसे मैंने पूछा कि तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। 16 टीमें इन टोटल, 16 टीमों में से कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, और तुम लिख रहे हो गर्लफ्रेंड। ये कौन सी टीम है भाई, ये कौन सी टीम है भाई? हैं? बदतमीज बांदर कहीं के। अरे देव का फोन छोड़ के गया भाई ये। इंस्टा खोलो, इंस्टा इसकी गर्लफ्रेंड देखते हैं। यार लॉक हो गया यार, 1 मिनट के लिए लॉक हुआ है वैसे, जैसे ही 1 मिनट के लिए लॉक होकर हटेगा फिर लॉक कर दूंगा, ताकि 1-1 घंटे के लिए लॉक हो फिर। गाइस जिसने भी लाइक नहीं करी है स्ट्रीम पे लाइक भी मार दो, ठीक है? स्ट्रीम पे लाइक भी मार दो। GF बेशरम नंगे लोग भाई, बेशरम और नंगे लोग। देखो मैं बताता हूँ इन टोटल कितनी टीम है, 16 टीम है राइट। टीम्स के नाम बताता हूँ, वोल्ट है, TLE स्पोर्ट्स है, इनको गेमिंग है, इनको और लिमिनोसिटी का चल ही रहा है ऑलरेडी। लूप्स है, किंग्स है, गॉड लाइक है, एक्सक्लूसिव है, वाइटैलिटी है, ट्राइब है, लिमिनोसिटी है, टीम मेहम है, वुल्व्स है, क्वीन किंग जूई क्लब है, जीव क्लब है, और SPG है, और कागेंद्र है। ये कागेंद्र इंडियन नाम नहीं लग रहा। PRHS भी है, पावर हाउस इंटरनेशनल। ओके लेट्स गो बॉयज। भाई पता नहीं क्यों मेरे को हमेशा अंडरडॉग्स को जीतता हुआ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स होप इनको विंस, मतलब इनको अंडरडॉग नहीं है बट लुमिनोसिटी हैज ऑलरेडी वन 2022 ना, तो थोड़ा सा वो अंदर से हो रहा है कि यार एक बार इनको भी जीत जाए इस वाला, बट लेट्स सी। इन द एंड ऑफ द डे आई होप गॉड लाइक विंस यार, गॉड लाइक ये टूर्नामेंट ले जाए, मज़ा आ जाएगा।
onto enemy's territory, but pays the price as he gets knocked down. 21-21, ladies and gentlemen. These two teams are किसको लग रहा है कौन जीतेगा for dear life right इन now. दोनों में से? लुमिनोसिटी और इनको में से कौन जीतेगा बताओ? कौन जीतना चाहिए वो बताओ, छोड़ो। Trying to defend here with a Fennec, trying to push जीतना तो forward. luminosity Gonna find no चाहिए। one so far here. ये देख रहे हो? Enemy, Bake takes Just the double, saying। Bake takes the triple, मत Bake कहो ना फिर, looking to don't destroy saying। once more, takes the fourth kill, barely gets the fifth one as well, doing an amazing job at making sure वाइटैलिटी गॉड लाइक नहीं नहीं, इस मैच में लुमिनोसिटी वर्सेस इनको गेमिंग में गॉड लाइक तो जीतेगा ही भाई। गॉड लाइक पे तो अपना सपोर्ट है यार, कैसे नहीं जीतेंगे वो? गॉड लाइक को जीतना होगा, गॉड लाइक तुम्हें जीतना होगा। the heat begins to rise on the side of Inco. Didn't complete that second segment either. भाई वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सोचो कॉल ऑफ ड्यूटी टूर्नामेंट इंडिया जीत जाता तो इंडिया में कॉल ऑफ ड्यूटी का ई स्पोर्ट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर कॉल ऑफ ड्यूटी और सारी कंट्रीज थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। दिस इज वर्ल्ड चैंपियनशिप, तुम समझ रहे हो ना? ये कॉल ऑफ ड्यूटी का वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है अभी, और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का। The thick of it over by the A control zone, and Luminosity भाई कितना मस्त responds नाइफ था with जो इसके पास था not यार। enough kills, but they still have control of the warehouse building, still getting themselves इनको का a good थोड़ा सा amount हालत of टाइट control लग रहा है, बट around हो the सकता है B जीत zone. जाए। But nobody really pushed all the way इनको up का on थोड़ा the सा हालत outskirts टाइट है। of the देखो map. 10 लाइव्स है लुमिनोसिटी के पास, 7 स्टैंड्स है इनको के पास। लेट्स होप, Luminosity now down to 10, Inco down to 7. Let's see Two क्या होता है। respawns remain for Inco. You feel like they have to play this damn near flawlessly Come on, if bro. they want to get any segments at all on B. बट अगर 3 बार और लुमिनोसिटी को मार दिया इनको ने तो ऑड्स बराबर हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? वो जो पर्सन है वो जिसके 0 पहले होंगे वो जीतेगा, मतलब हारेगा, सॉरी, Finds the kill onto Wash. क्योंकि वो रिवाइव नहीं हो पाएंगे, दोबारा नहीं उठ पाएंगे। बेसिकली डेथ मैच जैसा है, बट विद लाइव्स, कि किसके लाइव्स पहले खत्म होंगे। 9-0. ओ 7-7 हो गया सही में, व्हाट? Gonna be board try. अरे नहीं यार, इनको का एक और बंदा गिर गया। Kill onto 24 सेकंड है बाय द वे, टाइमर भी है। ओ हार गए यार। damage was right behind them, and with that, they are gonna once again break the potential confidence on the side of Inco. Only 3 lives remain. That's gonna be La, bro, for la. Lucasin Dad and Leaps alive out of भाई, ये वाला distance. मस्त है। Lucasin takes that kill, but Hizala gets knocked out. ये क्या है? इसमें पैसे निकलेंगे। Lucasin on his own gonna bounce to the कौन सा वाला है? पैसे वाला कौन सा है? headshot. Takes that last kill in favor of LG. निकलेंगे ना? 1-0 going in favor of Inco. भाई सुनो सुनो, भाई बट पैसे निकले तो मेरे, ठीक है। इसको मैंने 50 रुपए दिए कि काम का सामान लेके आना, हमने रात भर खाना है, रात भर उठना है, इसकी वजह से। ये क्या लेके आया है? देखो इधर दिखा तो क्या लेके आया है ये। ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्वीन। और इसको दुकानदार ने बोल दिया कि इसके अंदर कुछ खजाना मिलेगा, इसलिए फ्री गिफ्ट। तो पैसे तो मिलेंगे। रुक जाओ एक बार दिखाता हूँ तुम्हें क्या है इसके अंदर। ये देख रहे हो तुम? ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो तुम? कैसा हो रहा है? बढ़िया। तेरे जैसा हो रहा है, बिल्कुल गंदा। ले लो टॉफी निकल तो गई। तेरी साले की तू पिट गया बाबा, ओ लो, तू पिट गया भाई, ये पिट गया। पान वाली टॉफी निकली है। लो फ्लीट भाई आपकी फेवरेट यार, खाओ यार। हाँ भाई क्या? देखो भाई इसी के लिए तो इसको 50 रुपए दिए थे मैंने ये लाने के लिए। Inco Gaming. That was a close round, but there was several moments where we saw Inco struggle. तू उल्लू के पट्टे, तू LG just निकल तो trying यहाँ to से, तू hustle भाई it गलत out बुला the दिया ये last मैंने। couple ये Controls क्या है were ये? off dependent, and Inco were at least able to ये find देख रहे हो? a decent amount of trades ये। to start things off. That's why lives just felt so close until that final hit. ये लेके आया ये। Luminosity were able to remain in control. Now, टीम वाइटैलिटी भी इंडिया की है। आर यू श्योर? वाइटैलिटी का इंडिया में बेस है, बट प्लेयर बेस है पूरा, इंडिया के प्लेयर है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये कंफर्म नहीं है, वाइटैलिटी की इंडिया में बेस है बस। नॉट श्योर कि उनके प्लेयर है नहीं है। प्लेयर होंगे तो भाई वाइटैलिटी को भी पूरा सपोर्ट है हमारा, अगर इंडियन प्लेयर होंगे। मतलब हमारा सपोर्ट तो भाई अच्छी टीम को है जो भी है। पर फिर गॉड लाइक थोड़ा इंडियन टीम है तो दिल से आ जाता है ना यार थोड़ा। ख्वाहिश तो इनको गेमिंग जीतेगी तो देव डांस करेगा ना, अभी बोल रहा था वो। हाँ, अगर इनको गेमिंग जीत जाती है तो देव डांस करेगा। अभी तो लुमिनोसिटी जीत रही है, ठीक है? Wash it there, Nyland, hand finds और the 0 है बिल्कुल एकदम। हाँ हाँ, अरे अगर- अरे लुमिनोसिटी जीतेगी भाई। अगर और अगर लुमिनोसिटी जीतेगी तो तुम डांस करोगे। ओए ओए ये नहीं बात हुई थी, ठीक है? ये पहले से बताना होता है, ये अगली बार से करेंगे ना। potential नहीं नहीं नहीं, हो गया अब हो गया। and there अगर तेरे को पता भी चला क्या बोला उसने? bounces.
क्या बोला? नहीं, आपने जो बोला ना, अगर इनको अबे तुम लोग क्या मुझे फंसाने के लिए बैठे हो क्या यहाँ भाई? हम लोग यहाँ मजे करने आए हुए हैं, तुम मजे तो तभी आएंगे, देखो चैट में भी वही चल रहा है, डांस डांस जीएफ डांस ऐसे लिख रहे हैं सब। हाँ देखो मेरी गर्लफ्रेंड तो देव है। मैं ना ये तेरे ना मुंह में मार दूंगा ये फ्री गिफ्ट। खा ले वो पान वाली टॉफी भी, चोर साला। पान वाली थी। हाँ अबे तुम लोग थोड़े पैदल हो के दिमाग से भाई। ले फिर हार गई इनको भाई। 2 मिनट में उनको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो हार जा रहे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? डांस करेंगे ना। अबे ओए अरे हाँ नबी ना ना मैंने बोला था अगर इनको जीत गई तो तू डांस करेगा, हार गई तो इसमें ये शर्त थोड़ा थी, कोई और थोड़ी ना है। नो 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 जीत गई गाइस, लुमिनोसिटी जीत गई है। लुमिनोसिटी जीत गई हालत। अच्छा बेस्ट आउट ऑफ 5 है क्या? आई थिंक बेस्ट आउट ऑफ 5 है। डांस करने रेडी हो ना? मैं ना तेरे कान के नीचे मारूंगा। ये ले अपनी चाय पकड़। ये इसमें मैंने वो ऐसा उंगली डाल के दी तेरे को। और वही उंगली चाट चाट के खा रहे थे तुम। यार देव को आवाज ही नहीं आ रही यार। बाबा वो दो, पर दो से कैसे ऑडियो जाएगी मेरे को ये समझ अरे नहीं देव डिस्कॉर्ड पर आ जाएगा ईयरफोन लगा के। आ। हाँ एयरपोर्ट से डिस्कॉर्ड दे। पर फिर तुम्हें मेरी आवाज कैसे आएगी अर्शी? नहीं आप यहाँ पर ही रहो, स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको म्यूट मार दूंगा। हाँ तू मुझे म्यूट कर दे। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ये हुई ना बात भाई। क्या कहा? अबे ओए मेरे मत ले जाना, बता रहा हूँ तुझे साला। इसने क्या करा पता है? इसको लिटरली 599 रुपए के एक एयरपोर्ट प्रो मिले हैं, भाई ने ले लिए। कहाँ से? अबे नकली है इसलिए भाई। इनको को तो यार डोमिनेट कर रही है यार लुमिनोसिटी। डांस करो आप, रेडी। अबे ओए ये बात नहीं हुई थी गाइस, ये बात ही नहीं हुई थी। गाइस आप लोग बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं। यार चैट में तो बेचारे लोग इतने प्यार से लिख रहे हैं डांस भैया डांस कर दो ऐसे लिख वाला रहे हैं। चप्पर वाला। हाँ लुमिनोसिटी जीत गई भाई 3-1। पहला 1v1 लुमिनोसिटी जीत गई। क्या लेट्स गो? क्या तू तेरी टीम तो नहीं? अबे चल यार से मारूंगा ना इतना। अबे चल भाई। अबे ये बंदा कुछ भी बोल रहा है भाई। नशा मुक्ति केंद्र में भेजो उसको पहले। लोगों को सही में लग जाएगा कुछ टाइम। मेरा काम हो गया इसका मतलब। We're rejoined. We got the full desk back up here in Spain. Lauren, how'd you feel about that first series? I mean, that was a really exciting series. We'll get an opportunity to take a look back at some of the highlights here from the first match. I felt like the S&D was अभी क्या होगा? इनको डायरेक्ट नॉकआउट था क्या? गाइस किसी को पता है क्या कमेंट सेक्शन में? नॉकआउट था डायरेक्ट या फिर अभी इनको को एक और चांस मिलेगा बेसिकली? Strong suit, right? We knew that their S&D coming out from the Latin America region was going to be their strong suit. And you can see Luminosity, I mean, they wanted to come in and play a little. Let's go. By the way, guys, जिसको नहीं पता है, हम लोग 5000। अगर तुम में से कोई भी, पहले मेरे को बताओ, कोई तुम में से CODM खेलता है? कमेंट में yes no बताओ। फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। देव भाई तुम यार पहाड़ी तो नहीं हुए तुम? मडवे की रोटी नहीं खाते तुम? अरे कैसी बात कर यार, मेरे दांत थोड़े कमजोर है। म्यूट कर ले अपना। अच्छा हर्षिलो तेरी आवाज से आई थी ना? कौन कौन खेलता है? यस 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 ठीक है। तो ये है कि हम लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने दिए हुए हैं 5000 पॉइंट्स, कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स, जो मैं तुम में से एक लकी विनर को दूंगा। ठीक है? He's up there putting down the kills. There was just no follow-up whatsoever. Yeah, insane performance. कब दोगे पॉइंट? आपने भी तो खिलाया है? हाँ तेरे को खिलाया था। हाँ मैं भी खेलती हूँ। वाला नहीं, Black Ops 2 with Epta, and I believe Tectonic standing by to give us a few words. That's right, Glitter. We're here with Tectonic. Good to see you, my man. Congratulations on the quick win. Of
सब लोग एक बार लुमिनोसिटी ओपी चला दो। LG ओपी चला दो, LG ओपी। अरे हाँ मतलब वही लुमिनोसिटी गेमिंग ओपी। भाई लेट्स गो, पहला गेम तो लुमिनोसिटी गेमिंग जीत गई भाई। वही है यार, वो टीम तगड़ी है भाई, तुम समझ रहे हो। पिछला कौन जीतेगा? यार स्किल वाइज तो सपोर्ट तो इंडियन टीम को है, स्किल वाइज भी गॉड लाइक अच्छा खेलती है, तो मैं तो मानता हूँ कि गॉड लाइक जीत। एक बार देखते आ जाओ वाइटैलिटी का लाइनअप क्या है ना? वाइटैलिटी लाइनअप CODM। अरे भाई वाइटैलिटी भी तो इंडियन टीम है। अरे गाइस गाइस सारे इंडिया 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 भाई। वाइटैलिटी और गॉड लाइक में से एक टीम जीतनी चाहिए भाई। चैट में LG भी ओपी लिख रहे हैं यार। ऐसे मत करो यार, डोंट बी लाइक देव। मैंने चैट पढ़ी है, तूने बोला होगा डोंट बी लाइक देव गाइस, डोंट बी अ बैड पर्सन। दिस पर्सन इज वेरी बैड, दिस पर्सन डोंट लाइक आई। थैंक यू। ओए साले मेरे को 5 घंटे स्ट्रीम करनी है, जमाल गोटा डाल के बैठा है पता चला। फन करने के लिए देव की आंख फोड़ दे। क्या कहा? देव की एक आंख फोड़ दे सही में? हाँ मतलब फन हो जाएगा थोड़ा। an opportunity for those teams to take some notes from what they saw on our message अरे there. क्या निकाल लो भाई। If you're wondering what like the rest अरे let me tell you something, करामबिट let me tell you something। throw those links up so you can keep up with all of the action that's happening in the pit. But speaking of the pit, I do want to take a second to check back in with Shift to see what update he has for us. बाल लेकिन बहुत तेज है पता तेरे को, Okay, this बहुत timing शार्प है, is देख लगाम perfect लिया because everything is now ये कैसे wrapped लगा? up as बहुत this शार्प है big भाई, one. काट देता है, GLE चीर देता है, lineup चीजें ये number देखिए। 1 team just dropped to unboxing SVG करता है। Standpoint ये Gaming, तू, the number ये 3 देख। seed out of China that really I don't think anyone was expecting to see too much out of, but they 2-0'd अब them. देखिए So देख अंगली दिखा, नहीं, 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 अंगली तो दिखा एक बार। hope I think for those that are rooting for the भाई East, यार जब असली something as प्रैक्टिकल they टेस्ट आया तब तू हार गया है। watch for potentially आप how डेमो तो दिखाओ। Tribe ओ नहीं maybe नहीं missed out on the veto process where they're playing up against अरे भाई Powerhouse. इसका तो वो भी Yeah, है। tight opening summit hard point, but the क्या कहते हैं Express उसको? much more comfortable for Tribe. They were able to take a बेटा यहाँ रखता हूँ मैं, एकदम से निकल जाता है देख। particular Rehan and Estug, the two नीचे new गिर guys गया। on that Tribe roster, looked particularly Self good. protection! So maybe something to look at for Tribe in the future. But the search and destroy continues to be their call. बोरे में बात Other ले जा रहा updates, Q9, no real इससे बोरा against Vitality. बोरा काट To beat them down in the takeoff. Almost हो गया था। 14. They took that series 2-0 with a 7-4 on हट यार, L. ऑलमोस्ट निकाल दिया था यार, Once ऑलमोस्ट they निकाल start दिया one था as भाई। round one is now done. लेट्स गो इंडिया। Interesting, but I will say, do not India. miss what's भाई coming प्लीज up यार कर दो because यार, the वाइटैलिटी या फिर गॉड लाइक का गेम दिखा दो, मजा आ जाए। So make sure you're checking out all those other streams that are happening to ये cover क्या the है, जो हार BC गई वो and डायरेक्ट E LM हो stream गई या matches लोअर here ब्रैकेट में at जाएगी? the मेरे को यही tournament. कंफ्यूजन हो A रहा lot है। of interesting things happening at the backside of this break. तो So don't go फिनाले far. हो रहा है More गॉड calling for वर्सेस Mobile World वाइटैलिटी। Championships right after this. मैं तो खुश हो जाऊंगा ब्रो। प्लेट भाई आपको पता है ना, खाना खा के डांस करना है आपको। हाँ पेंडिंग है वो। हाँ पेंडिंग है। बा मैं नहीं मानता, सुनो मैंने जब शर्त ही नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई आपने सर? लगाई थी, लगाई थी लोहा। देखो चैट में। भाई मैंने बोला था देव डांस करेगा, मैंने ये थोड़ा बोला अगर हार गया तो ये शर्त है। नहीं यार नहीं नहीं आप चैट देखो, से पूछ बोला लो, था। चैट से हाँ। पूछ लो। चैट से गाइस पूछ कोई लो। लगाई थी, अब कोई शर्त बताओ। लगाई थी मैंने। The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming. यार स्किन कितनी मस्त है ना गन्स की। ये तो है, ये Samsung तो यार। Galaxy S23 Ultra. ओए S23 अल्ट्रा, ओए हटो हटो हटो, पीछे हटो। फोन कहाँ है? अरे तू बैठ रहे भाई, तेरे को थोड़ा ना बोलना, पीछे हटो। बोले वैसे तेरे को ही बोला और है कौन? And S23 अल्ट्रा। यार गाइस मैं डांस कर देता बट हमारा ना वो वेबकैम काम नहीं कर रहा है। अब ये तो तुझे ही पता है यार देव भाई। लाइट अभी भी जल्दी है। तभी तो कह रहा हूँ ये कहाँ है भाई, कहाँ यूज हो रहा है ये? इसको एक बार डिस्कॉर्ड पर ऑन कर दो। अच्छा डिस्कॉर्ड पर ऑन है? नहीं है, अभी किया है मैंने। नहीं है नहीं है। एक बार ऐड करता हूँ इसको, क्या बोलता है?
अच्छा कल का वो लौंडा मुझे सिखाएगा। अच्छा फ्लूइड भाई टीम लैब्स की सेटिंग बता दो। देख रहे हो कल तक का मुझसे बोलता था फ्लूइड भाई स्ट्रीम लैब्स की सेटिंग बता दो। टीम कैसे करते हैं? नहीं हो रहा क्या? नहीं हमें देखना पड़ेगा ना, जहां पर भी ऑन है वहां से बंद करना पड़ेगा। यहाँ ये देख मिल गया। मिल गया। अब तो डांस बनता है। चलो हो गया, चलो, सॉल्यूशन हो गया। अरे नहीं हाँ ये चौपा वाले गाने पे डांस। चलो 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 सारा सारा सिलेक्शन हो चुका है, सब हो चुका है। चल देव बा शुरू हो जा। नहीं पहले आप करोगे। अरे चले चल शुरू हो नहीं जा। देव की बारी थी, देव को करना था। हाँ हाँ। ये तब भाई, ये से कब बता हुआ? रहा हूँ। अरे हाँ, भाई ये देव की चीटिंग मत थी कर यार, ठीक है, थी यार, भूल चीटिंग मत किया कर भाई। जब तेरी बात हुई थी लमनोसिटी ये अगर डांस जीत गया तो तेरे को करेगा। डांस करना है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बोला था। बोला था। अरे यार तो कैसे भाई पूछ लो देव? ये बैठे बैठे भूल गया। ऐसा बोला था क्या? नहीं है। हाँ, हम यहाँ नहीं चीख बोला भी था। रहे हैं भाई, तू नहीं मान रहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ अभी तो मतलब? तुमने बोला था देव की तुम खाना खा के करोगे। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू ये कह रहा है बस? हैं, ये लगी थी बैट। अबे यार भाई गाइस एक बार कमेंट में बता दो लुमिनोसिटी कि जीतने पर देव का डांस। चैट से पूछ लो पहले मेरे को यार, मैं नहीं बोला था यार। अरे आपने बोला बोला था आप डांस करोगे। अगर लुमिनोसिटी जीत जाती तो तू डांस करता, और अगर इनको जीत जाती तो मैं डांस करता। ऐसा था क्या? बट लुमिनोसिटी जीत गई ना यार। ये देख यस 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 या यस 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 देख रहे हैं? अब एक दो तो नो बोलेंगे, झूठ बोलेंगे एक दो तो। चल अरे छोड़, टाइम वेस्ट मत करे, कोई ना 2 मिनट का ही तो है। चल डांस कैसे हो जाता है। रेडी? वही चौपा वाला डांस। पहले हाँ हाँ। अरे पीछे एक बार फिर मैं डेमो तो दो। नहीं देता हूँ डेमो तो दो। डेमो का बहुत कुछ जरूरत है। रेडी? चल रेडी? ऐसे वाला ऐसे पूरा भाई ऐसे बोकुआ चौपा। चलो रेडी? टोनी। ए बोकुआ डॉक्टर टोनी टोनी चौपा। नहीं यार बहुत कैसे बात नहीं आ रही यार। वो ऐसे दोनों करो, दोनों करो। तुम भी तो दिखाओ, तुम करके बताओ। टोनी टोनी चौपा ओ मचिए तो नाकाई गिव मी सम पार्टी। चल अच्छा बोकुआ डॉक्टर टोनी टोनी चौपा। ये चीज करना है। इससे बढ़िया तो मैं छोड़ भाई, डांस करना ही छोड़ दूं मैं तो। तब गंदा डांस कर रहा है भाई, पूरा मूड खराब कर दिया भाई। खाना खाने का भी मन यार नहीं अब कर रहा देखा मैंने। है। इतना गंदा डांस कर रहे हैं ना भाई, तुम तो तब भी बचे हुए हो। तुम इससे देख रहे हो, इस कैमरे से गंदे वाले। अगर तुम सामने से देख लेते ना भाई, जहर हो जाती तुम्हारी जिंदगी। अब मेरे को एसिड से धोनी पड़ेंगी आंखें। हार्पिक समझ रहा है? जो टॉयलेट साफ करते हैं जिससे, उससे आंखें साफ होंगी तब जाके तेरे ने जो हगा है ये हटेगा आंखों से मेरी। यार अच्छा तो था यार। छोटे पोंक वाला। भाई अगला मैच है किसका? ओ ये देखो, ओए मेरी आवाज वापस आ रही मुझे। फिनिश्ड इनको वर्सेस एलजी हो गया। अब होगा केसी वर्सेस वुल्व्स। ओके ये टू बी डिसाइडेड है क्या? हाँ कि कौन अच्छा, किसका वो मैच ब्रैकेट कब के होगा। हिसाब से होगा। हाँ अच्छा, ये हुई ना बात। ओके ओके। थोड़ा कमजोर है मेरा बेटा। अच्छा चैट से बात करते हैं। अरे मैं वो ऑन करता हूँ ना, रुक जाओ। लोग सुपर चैट करेंगे और हम लोगों को वो आवाजें आएंगी, वो वाला ऑन करता हूँ। वो मस्त लगता है बहुत, क्योंकि अभी तो अपन लोग फ्री है, हम लोग बातें कर सकते हैं ना लोगों से, मजा आएगा। ऐसी मस्त मस्त बातें लिखना ना कि सही में मजा ही आ जाए। मतलब हाँ कुछ नहीं, बस सुपर चैट आ जाए एकदम बढ़िया बढ़िया मजेदार एकदम चटक। बोल दिया मैं भी करूंगा। कररैस गाइस, कररैस लेनी है। यस सर। एक एक दिन मुझे भी दिला देना, एक देव को भी दिला देना। मैं ड्राइविंग का भी सीख रहा हूँ। हाँ मैं तू भी भाई इसीलिए सीख रही इसको थी। पहले मैं इसका एक गो फंड भी चलाऊंगा मैं। इसकी नसीली आंखें ठीक करवाऊंगा। बाबा इसकी आंखें जेन्युइनली तुम देखो यार एक और बार।
अबे क्या सही तो लग भाई रही है। नहीं यार तुझे लग रहा है तेरी मेन आंखें से ढक का चेहरा है ये, मेन ढक का इधर को आइए, चेहरा। थोड़ा पास आइए। हाँ देखियो, आंखें खोल, पूरी खोल ऐसे। वाह वाह ये है। अरे बाबा ये देख, तुझे दिखाता हूँ, ये देख, तू खुद देख, ये देख। ऐसा लग रहा है भाई कितना नशा करके बैठा है ये आदमी भाई। ओ भाई ये तो नॉर्मल लग रही है। तू एक काम देखो कर सही भाई। बोलूं अरे तो यार लग वो तो रहा है। गुच्ची भी ले गया ना। है लग रहा है। हाँ है ना भाई, नशेड़ी है ये दोस्त एकदम मेरा। पफी आईज। चैट में कोई लिख रहा है नशीली आंखें, ओए होए। अबे भाई यार बेटे कितनी कितनी कापी गिरा दी, तुम्हें क्या पता है अभी। बेटे देव चला बाजार, कापी गिरी 1000। अबे भाई नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ा आगे को आना पड़ेगा, तो हल्का को। इससे आगे नहीं आ पा रहा ना तू, रुक जा, मैं पीछे का लगा देता हूँ। बस सही है, दोनों हो गए। नाम मत लेना बस, ठीक है, किसी भी चीज का। और सर समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ गया हूँ। यस गुड। ऐसे कैसे कापा आगे जाके अपने चैनल पे ब्रांड्स करेगा अभी। भाई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। And things have kicked off. The competition is going, and it was LG on the main stage who take home the first match of the day. Don't worry, we've got loads more in store. It's going to be a very exciting weekend, and we're going to be with you guys the entire time. Glitter Explosion, मेरे बाबा Proper, केदार and खा Gil गए, क्या देख on the नहीं रहे desk थे। As we take a look at our beautiful, मेरे beautiful stage. बाबा We're केदार calling it the कहाँ World गए, दिख नहीं रहे थे। Championship. हैं? Lots of ये क्या money था on भाई, the ये कौन सी line. सुपर It's चैट going थी? to be a really, really fun time. Thank you so much for joining us. We're excited to get back into it. ये ले, As we take a look तेरी at आंखें our second बहुत ज्यादा लाल matchup लग रही है मेरे update. भाई, Before we do और that, ये मेरे को wanna सॉरी get a बट मैं अपनी couple स्ट्रीम पे नहीं रख सकता हूँ। reactions पहन। on the outcome of the first match in case anybody missed it. Well, I mean, I'm not अब gonna कम lie, लाल as far लग as रही है outcome is दोस्तों। concerned, अब I मुझे feel सब like कुछ that लाल if you're लग North रहा है। America, you might be slightly upset at LG that it इसको wasn't a हरा वाला 2-0. चश्मा That बनाओ slum ना, search and छोटा destroy वाला। was a little bit of an अरे eye-opener considering they won the first बाबा round तेरे लिए बेस्ट and चश्मा then पड़ा they है भाई। lost the preceding कौन सा? 7. But if you're a Proper fan of kappa LatAm, चश्मा। I mean, if you get Vamos ये in ले। the chat, then yeah, you're absolutely happy that you got to ये see उतार, LatAm ला। fight back for a map, but the respawns were definitely lacked for अब आई ना बात, ये ले। not that great. ये तो फीट नहीं That's आएगा यार। right. अरे क्यों And नहीं now आएगा, we're मेरे मुंह में moving फूटा on जाता है। to what's Yeah! next. What's next we're gonna be asking, that is going to be one ऐसे of करते the हैं, teams yeah, playing yeah, in yeah, front of you. The yeah, from Europe भाई। that yeah. has to be above the rest, doing लग a तो सही रहा है। great job at बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। qualifying here. कर दे, This is yeah, the team yeah, that we ऐसे focus नहीं, on. इधर करना, yeah, yeah। Kings, यार अब तो मीम्स करनी चाहिए यार, what डिस्कॉर्ड पर happened मीम्स रुक दे जा, दो। रुक जा, देना मेरा वाला He ले। was just not pretty well. रेडी? Getting an opportunity here to एक take काम back करते हैं, एक some of मीम their बनाते हैं moments साथ में, heading आजा। into this Ready? weekend from this past आजा। season. Obviously, Kings on one side of the competition. पहले will be करेंगे facing yeah, off ready? against 1 2 3 go, Wolves. We'll be seeing yeah। them as well, but कौन while we क्यूट get लग रहा है started, सबसे ज्यादा? I wanna hear your thoughts on Yeah! teams. I wanna सबसे hear बढ़िया your कौन लग रहा है? reactions. Yeah! Hello Realistically, cutie, like, yeah! Europe, as far as Brooklyn 2 was concerned, अरे भाई। not even a little bit whatsoever. You are the number 1 team in Europe, and at the end of this entire weekend, you better put your entire region on the map. The best of the best for a reason. You have to ice up with a match going up against China, respectfully. And then on the flip side, like I said, we have Wolves. Hello Jack Some भैया, moments from relief their please run खोपड़ी। last year अबे। World Championship as well. Give me your thoughts on Wolves. I mean, Wolves, look, they finished fourth last year in World 22. This was the team that actually beat Tribe, and they never realistically got to bounce back as far as that lower bracket matchup is concerned. यार They are मस्त लग रहा है वो। realistically, as far as returning members are concerned, this is probably one of the rosters that will see a lot of consistency as far as names are concerned. Number 1 control team in बहुत China, खाना खाओ number यार। 2 overall. They're चाय looking to make ठंडी a हो statement here again. चाय तो पी ली मैंने कब। Yeah, and it's going to be real important for the side of Wolves to try to provide अरे what we बचपन में तो saw बहुत that गोरा था got देख। that top 4 spot. This Chinese सही team बात है भाई। has been historically, you said it, one of the best वो तो across चाय बहुत this पीता ना region.
So in here as they face off against अगली बार ये Kings, 10 साल बाद which ये trick will बोलेंगे। they'll do? It's gonna be a best of 3. I'm भाई gonna God be like saying का कब but मैच it हाँ will be important to see how these teams just adapt to the fact that Beatles are way different than what you may see on a best of 5. बचपन में देखते थे मेरे लड़के को how संगमरमर we था ये have संगमरमर interactions. As we are done with the highlights, we are gonna take a look onto the roster of the team. There you have. भाई हम लोग लाइव तो देख रहे हैं ना, पता चला हम 1 घंटा पीछे। with King. गाइस लाइक मारते रहो, लाइक नहीं मारा ना जिसने उसको गाली लगेगी हमारी। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। देव क्या बोला? सब्सक्राइब कर दो सारे। सबर कराइब। सबर कराइब। पता देव कौन सा वाला है? देव वो वाला है, वो जो बच्चा आगे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पीछे आके बाल्टी में नहीं कुछ जाता है। And this one's definitely going to deliver on all of that, plus a little bit of extra. Again, Wolves, as far as a roster is concerned, 4 players are returning from last year, both King, Jing, Zai, and Neon. As you have them on your screen right now, getting hydrated, getting ready for this match. They're going to get tested for sure. अबे यार करूँगा वो गोजो सातरू This is one of my favorite moments. कर दे, गेम स्टार्ट होने में टाइम है अभी। How the players are getting themselves वाला नहीं settled वाला in. कर दो, डीमन के लिए ज़्यादा लोग नहीं था। I don't know if you want to call them strategies or maybe superstitions or comfort situations that they निकाल लो, put निकाल themselves लो। in. I am seeing significantly less pillows here this time around, Gil. I'm surprised. I'm honestly surprised. I feel like Philo gives you like 10% accuracy or something like that. It's just crazy. It has to. And not to see यार that वो with सही था। it. It's weird. I think it might be है the ना, fact बम that का- we saw people with double pillows. क्यों जीरो? नारी नारा नाई दे क्यों जीरो? That's my take. सांजरो क्यों जीरो? नारी नारा नाई दे ऐसा कहते हैं यार, डायलॉग भूल गया Is मैं। that too many? हक दिया भाई ने, इसको मैंने मौका दिया था भाई। That's a great वो जो question. सातरू। I guess it depends on how you like to play it. I'd और say वो like वाला भी जो 2, उसने नया बनाया वो you're great, वो 3, उससे निकलता है जो वो वाला है, वो वाला। Be building an entire stage for sure. अरे बात मर मत ऐसे जाना करके यार। कूदता है, ऐसे करके कूदता है यार। क्या है बंदा भाई वो? यार। क्या है यार वो? मस्त बंदा है भाई। First one, Summit hard point. भैया आज का वीडियो खतरनाक था। थैंक यू मेरे दोस्त, आई लव यू। सबसे ज्यादा क्यूट कौन है? तुम। To be as fast as they can. I think I don't quite remember the name, but one of the players also likes to play with a shotgun, and Summit Hardpoint is definitely one that you may be able to see something like that. Then as we would move on to Search and Destroy, we are going to get to see Express, which I'm quite surprised. I was not expecting to see something like that, but I am. भाई हम लोग रुके हुए गॉड और वाइटैलिटी के गेम के लिए, क्या हमें देखने को मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। Hope it does, because that's always funny. Another firing range? देव बिल्कुल उसी तरह लगता है जो वो वाला है। शेर Both Lauren and I literally coming in. शेर We were like, how many firing ranges we're gonna get? We were now मैंने देखा। back best of 3s on बढ़िया main है। stage. No गाइस firing किसी range उसको देव whatsoever. बिल्कुल And उसकी I तरह gotta लगता है। say, one शेर thing that does jump off the page for me, it has to be the Summit hard point, the match number 1. Funnily enough, when both Shift and I were doing our notes, we were sitting down there. आजकल मैं Instagram बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ यार। A lot of players are coming up to us, and a lot of the individuals for Kings were just like, no, we're going to ego chow them on Summit. This is Wolves, one of, if not their best hardpoint across the entirety of the region. They love their scrappy hardpoint maps, Lauren. You better hope that if you are Kings, that ego chow does go in your favor. You do not want to be 0-1 down. मेरे को लग रहा है वो है डायरेक्ट एलएम है when winning मैच। There's not a lot of time. मेरे को थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा कॉल ऑफ ड्यूटी Shout मोबाइल। to Mayank Respect World. ऐसे लोगों के साथ बैठने की जगह वहाँ बैठूंगा मैं। भाई कॉल ऑफ ड्यूटी में आ जाना कभी भी। मोबाइल में आ जाना दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में इसको पेल दूंगा। पबजी का गेम प्ले भूलिए मेरा लगता है। all day, just for a little added twist. All right, now proper. What are your vibes on this matchup? How's it gonna दोस्त तोड़ना दुश्मन बुला रखा है मैंने अपना ही। मैंने अपना ना जानी दुश्मन बुला रखा है। इस साले ने जैसा है जैसी गंदगी मचा रखी ना, इसमें ना
सिर्फ मुंह में मार के दांत निकाल लिए इनके में। Both. I think what the proper mention is going to be really, really important. The hard point is going to be huge for the side of Kings. They gotta make sure they take it because the S&D. I had my doubts on the side of Kings. I gotta say that Wolves has a really, really clean, a really solid performance to search and destroy. But now let's not speculate no more. Let's go straight into the action. We say goodbye to Glitter as we say hi to the players. And ladies and gentlemen, that's how we begin match number 2. स्टार्ट हो गया ऑलरेडी 5 पॉइंट्स में नहीं, ये तो नॉर्मल वाला है, ये तो फर्स्ट टू 250 वाला है ना। इसमें जो भी पहले 250 पे पहुंचेगा वो जीतेगा। ये दूसरा वाला है, इसके बाद होगा वो वाला जिसमें वो पहले जिसके खत्म हो जाएंगे वाला ना, वो इसके बाद होगा। भाई क्या फिनिशर क्या है ये बाबा, लेकिन गन्स की स्किन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अलग ही है ब्रो। ये देख नाइफ देखा तूने भाई, ये क्या है? और एक के बाद तो गोल्डन ग्लव्स टाइप थे कुछ। ये क्रिस्टल ग्लव भाई, that you can really stick to your guns and take this map number 1 and potentially the rest of the series. भाई ये तुम लोगों के भी हो सकते हैं, याद रखना मैं स्ट्रीम में कभी भी 5000 COD पॉइंट्स गिव अवे कर सकता हूँ कभी भी। मैं स्क्रीन पे एक कोड दिखाऊंगा, वो जो सबसे पहले लिखेगा उसको मिल जाएंगे, ठीक है? मैं स्क्रीन पे कोड दिखाऊंगा, जो सबसे पहले रिडीम कर लेगा उसको मिल जाएंगे वो। तो तैयार है ना सारे के सारे जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल प्लेयर्स हैं। 5000 कॉल पीटीए हाँ क्या गेमफ्लीट भाई मर गया। सुजल हैकिंग वर्ल्ड भाई, आई होप आपके घर में सब ठीक हो, आपके जितने भी घर वाले आई होप वो ठीक हो भाई। लव यू। किधर लिखना है, मतलब किधर लिखना है नहीं, तुम्हें स्ट्रीम देखनी है बस। मैं कभी भी 5000 पॉइंट्स गिव अवे कर सकता हूँ कभी भी, एनी टाइम। The way that Kings are playing, but Wolves are not too far behind. Only losing by about 10 seconds is not going to be the end of the world for the Chinese team as they are trying to retake control their side, already with double digits. Now we go to a rotation over towards B3. This is where your point comes into earlier, where shotguns are no specifically can really come out to play. But you have to be rather careful. You can see Kings on the mini map already trying to play for those rotations towards new Wolves, more than aware of it. 3 seconds until we will rotate over towards B3. Nobody was watching the ski lift push over on the bottom side of the map, but now you are अपने को उसमें डालो ना कम्युनिटी में। of a predicament. Spawn trap potentially. Kings still spawning in towards the back. Wolves from the outside looking in, having players inside of the hardpoint itself. King able to take down one, immediately traded off, but the numbers thanks to Zai and Neon क्या लगता है देव कौन जीतेगा? इसमें players in towards the back, by the way, and I don't know if Wolves are more than aware of that, as they're still trying to influence the spawns to get closer and to reinforce this hard point. मुझे भी किंग्स ही लगता है। भाई स्ट्रीक ले गए वो। अबे भाई ये क्या हो गया? याद रखना दोस्तों, मैंने वुल्व्स का सपोर्ट किया था एकदम से बुल्स, हाँ बुल्स जीतेंगे। ओए चीटर, ओए क्या वुल्व्स जीतेंगे? वुल्व्स जीतेंगे भाई, और तू क्या हूं क्या कर रहा है? मैं तो किंग्स लैंड बोला था हारने वाली है, बुल्स जीतेगी। बहुत ही कुत्ता भाई। सबसे किंग्स क्लैन जीतेगी जैसे ही देव ने बोला किंग किंग। उनका एक पॉइंट नहीं निकला यार भाई। अब मैं समझ गया, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच ये देख रहा था बैठ के मेरे साथ। कुत्ता साला है। मेरी वजह से हुआ क्या? मैं मेरे पापा को बुला रहा है। ना मैं खुद को कैसे बता सकता हूँ भाई। अरे वो देख के वैसे हुआ था भाई। मैंने तो बता दिया यार, मेरी बहुत गंदी आदत है। क्यों साले यार किंग्स क्लैन अभी तक अब 48 हुआ है यार। कमबैक होगा, नेवर गिव अप, नेवर व्हाट, नेवर गिव अप। Trying to get himself at least that angle of attack. Look, this is the difference between Kings P3 to P4. They're investing operators to make sure they don't get broken up. So at least they can anchor out the spawns. They're already doing a great job at that. Marvel. He is up to 19 eliminations already through 3 hard points here on Summit. That's just how scrappy ओ it किंग्स is. क्लैन निकल गई। क्या बोला था मैंने? 84 मरे किंग्स क्लैन, किंग्स क्लैन। अबे भाई जीत तो वुल्व्स ही रहे ना, जीत तो वुल्व्स ही रहे ना। नहीं अब तो मैं किंग्स क्लैन के साथ हूं। अरे नहीं वुल्व्स ही जीतेंगे यार, पहली
बोला था। नहीं बड़े पॉइंट। अबे जाई भाई दिखाओ यार इनको जरा इनकी। हो गया अब तो खत्म। नहीं 250 है ना, 250 है, 100 हुआ है अभी तो। फर्स्ट टू 250 है। यार ये देख के तो मेरा खेलने का मन कर रहा है ना यार, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जूट सेट के भाई बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है भाई। of the P1 reset, but not for too long after. There's going to be King players trying to fight back. 57 चैट में क्या चल रहा है? चैट में कुछ अच्छा हो रहा है? ये मैंने उनका सपोर्ट किया, वो बढ़ी नहीं रहा आगे। भैया केदार का मंदिर नहीं दिख रहा है, कहाँ छुपा दिया? छुपाया नहीं यार, पीछे रखा है वो, देखो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, दिखाऊं उंगली से दिखाता हूं, ये देखो बस क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मुझे भी दे देना। ये फोटो के आगे से है, जस्ट ये फोटो के आगे से, ये वाली फोटो है ना, इसके आगे से है। बाबा केदार का मंदिर नहीं दिख रहा, कहाँ छुपा दिया? छुपाया नहीं यार, वहीं पर है अभी, गंदे हाथ वरना मैं ले आता। अच्छा आप ही लेके आए थे क्या वो घर पे? थैंक यू यार। I like the way the Kings are playing. They struggled last year across the entirety of Europe, and tonight they're on the right foot. भाई नेट वेट से पेल दे रहे लौंडे यार। भाई वुल्स आ रहा है, वुल्स कमबैक कर रहा है थोड़ा थोड़ा, स्ट्रीक तो वुल्स की भी बन रही है। ये सबके पास मुक्के वाला क्यों है? नया है क्या? भाई वो देख भाई क्या पेल रहा है यार वो। देख किंग्स में उनका जो मार्वल है वो तो बहुत सही खेला है, मैक्सवेल कैसे लेते हैं नाम, 27 किल्स पे है वो। ओ भाई हाँ। और गेम में देखो देखो देख वो जाई के 28 किल है, वो 27 किल पे। ओ भाई पैग गया, हाँ पैग गया तो भाई 30 किल्स पे है। क्या लग रहा है तेरे को सही में? देख दोनों का 28 देख बराबर हो गया। किंग्स बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, डे 1 से भाई। किंग्स जीतेगी, किंग्स किंग्स जीतेगी। हाँ किंग्स क्लैन, लेट्स गो वुल्स 140, लेट्स गो। वुल्स जीतेगी। तुम लोग एक चीज ध्यान देना, जब से इसने बोला कि किंग्स जीतेगी उनने 128 से एक आगे नहीं बढ़े। जैसे इसने मुंह बंद करा 3 पॉइंट बढ़ गए उनके। वुल्स नहीं बढ़ेगी, वुल्स जीतेगी। मैं बोल भाई वो देख वुल्स बोला इन्हें किंग के बढ़ने लग गया। शिट भाई ठीक भाई, तू क्या पनौती आदमी है रे। मेल पढ़ो भैया की टीम में ये काम आएगा। मैं तो मजाक नहीं, मैं सच में हो रहा है, वहां की टीम में कोई पॉइंट ही नहीं बढ़ ले। वाह मुंह शाउट आउट दो अक्लैड किंग भाई, शाउट आउट टू यू ब्रो। with the defense, with the standoff against the opponents here, with the Fennec running out of bullets, but still किंग्स के बंदे देख रहे हैं कैसे ग्रुप में घूम रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी है हुआ ये कि वो ग्रुप में जा रहे हैं, 2-3 बंदे भयंकर एक ही साथ पेल ले सबको हो। मतलब यार बराबरी का मुकाबला चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी तो भाई। देखो अब देख किंग्स के 150 हो गए, 151 हो गए, टक्कर का मुकाबला चल रहा है। और अभी तो फिर भी 90 पॉइंट्स बचे हैं भाई इस हिसाब से। वो देख 153 हो गए थे। हो रहा है भाई, हो रहा है भाई। वुल्स वालों का बढ़ नहीं क्या हो रहा है? अरे वुल्स को सपोर्ट मैं कर रहा हूं। होगा वुल्स होगा। नेवर गिव अप, नेवर व्हाट, नेवर गिव अप। ले भाई वुल्स आ गए फिर से। अरे नहीं भाई आपके लिए नहीं बोला था यार। ठीक है अबे उनके 170 हो गए। 170 जोड़ उसे 43 किलो हो गए देख जाई के। क्या खेल रहे हैं भाई ये? और उसके 33 हो गए थे मार्क्सवेल के, मार्वल के। पॉइंट्स कैसे रिडीम करने हैं? Bless you, I like you, I subscribe you play Minecraft on mobile, please folded hands 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 folded hands। थैंक यू हर्षल भाई, अगली बार लेस फोल्डेड हैंड्स। थैंक यू, लव यू। गारंटीड मोबाइल पे खेलिए माइनक्राफ्ट। into the P1 reset. King trying
to go into his spot. He likes to kill those computers, gets a kill just for the second. मैं बता रहा हूँ As ये पहला मैच है बराबरी का चल रहा है जो out with that long shot. वो गर्दन भी उड़ा दी भाई As they get greased inside of heal, 29 kills so far for him. Gonna be knocked out as well. भाई वो एंगल होल्ड कर रहा था वो और फिर भी उसके एंगल में आके मार के गया डैम ब्रो भाई मैं नहीं खेल सकता कभी भी मोबाइल में ऐसा आई एम रियली सॉरी मैं चाहे दिन रात प्रैक्टिस भी करूं मेरे से नहीं हो पाएगी इतनी मतलब तुम सोच रहे हो कितनी मेहनत लगती है ऐसा खेलने के लिए देव की शक्ल देख लो नो डिसरिस्पेक्ट पॉइंट्स के व्हाई आर यू डिसरिस्पेक्टिंग मडवे की रोटी व्हाई ब्रदर नॉट लाइकिंग इट Able to at least bring this back down to about a 10-point game or so, but Wolves, they are on the better side of the map. They have the numbers. They're starting to push through inside of the fences there with the Brownion, letting them absolutely have it. Now you have to points कैसे redeem करने It's Grizz up top. मैं कभी भी अभी से 1 घंटे में भी अभी से 15 मिनट में भी कभी भी यहाँ सेंटर स्क्रीन में एक कोड डालूंगा वो कोड जिसने पहले रिडीम कर लिया वो जीत जाएगा 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हम लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने खुद से दिए हुए इस स्ट्रीम में देने के लिए तुम्हें मैं कल भी स्ट्रीम करूंगा परसों भी स्ट्रीम करूंगा इसकी और तुम लोग उसी के हिसाब से वो कर सकते हो तीनों में 5,000 पॉइंट्स दूंगा With a trophy system, that's so unfortunate. It just happens, buddy. It just happens. You're gonna have Neon trying it to survive, and it manages to do so without War Machine. The back. अब थोड़ा निकल गया आगे taking this map, they're trying to do so. Kings tried to phase them off. अब मुश्किल है ना थोड़ा 20 पॉइंट्स चाहिए ना बस They're losing this game by अब थोड़ा प्रेशर हो गया advantage we've seen so far. That could be all भाई प्लीज से माय नेम हरेश गदवी हरेश गदवी भाई शाउट आउट यू लव यू Oh, it is. लव यू Takes that kill, 7 seconds. लिलीवाइल स्ट्रीम कब करोगे फ्री फायर भी खेलो लिविल स्ट्रीम और फ्री फायर Possible, and on top of that, proper, they got the hill. भैया पहचाना मुझे भैया पहचाना मुझे डीसी वाला लिप बाय द वे बिग फैन यो ब्रो व्हाट्स अप लिप तुम्हारे तो सी में बम देखा मैंने बोला था ना वो जीतेगी तब से बोल रहे थे तुम किंग्स क्लैन अब चलो डांस करो हार गए तुम तुम दोनों के ना इतने डंडे मारूंगा ना किसी दिन में शर्म नाम की चीज नहीं है दोनों में से किसी को एक आदमी थोड़ा शर्माता है भाई बेइज्जती लगती है एक आदमी को ऊपर आसमान में देखो और थूको और वो मुंह पे गिरना चाहिए टेस्टी होगा नहीं यार रोनी तुमने तो किया होगा रोनी नहीं कर पाता रोनी ऊपर को नहीं देखता है क्यों भाई जे को बात हुई कापा बहुत हंसता है भाई मेरे बीच में बहुत हंसता है भाई यार अब दिखाया मुझे तुम लोगों ने क्या किया भाई देव को मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ ट्वर्क की एक तरह से देव से तो खाता चलता फ्री ट्वर्क का माइक म्यूट करके तुमको बताता हूँ किसका खाता चल रहा है हेलो मेढक का चेहरा 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 भैया फायर फायर मेढक का चेहरा वाले को तो अलग से डंडे भाई भैया जैक कौन सी क्लास में जैक कौन सी क्लास में मेरे को भी नहीं पता ब्रो 12th बोलता है They were able to get inside that hole convincingly, get all of the time. They had the leader's advantage. How about a casual 104 kills? In which Con Maxwell? Right? Zai was the one that was kind of jumping on the page for me while he was just really ripping them asunder as far as the claw is concerned. But देखना पैगी के 53 थे असिस्ट देखना 26 भाई लेकिन यार लोगों का स्किल सेट तो है भाई ये मैं हूँ भाई से खेलते हैं ना भाई बुलजाई ना मैं हूँ भाई ये साला मेरे किल चुराता ना जो हर एक गेम में लव यू फ्लीट भाई मुझे लिलीविला में आना है
but those kills were just चिल्लाने का मजा ही कुछ too अलग है much ना of an है impact. ना? You cannot मजा आता है। भाई अरे मेरे kill if you're चिल्ला getting killed. ओए चुना नहीं Time after बंदा time डेन after भाई time. कौन सा बंदा We saw that fight for the spawns. We saw ऐसा स्टेडियम में करूंगा तब मजा आएगा देव भाई कुछ खा रहे हो क्या? Not enough now. Search and destroy is gonna be interesting. We do not. देव भाई खा रहे हैं मडवे की रोटी which, you know, और रोटी कितनी है ना? लाई और हाँ भांग की I चटनी। said that भाई ये फिर आ गया। the rounds of spawns were fast. On Express, if I'm not mistaken, is Boy, boy. 15 to 16 seconds on the side of LATAM. That's how fast these rounds can go by. यार हेलीकॉप्टर वाले हेडफोन बड़े मस्त लग रहे हैं यार दिखने के तो। लॉल भाई। वैसे हेलीकॉप्टर में पहनते हैं ना हेडफोन, ऐसा आवाज नहीं आती बाहर की। आएगी नहीं? अरे हाँ यार भैया गो खाओ। हैं? कौन सी ऐड भाई? एक बंदा। भाई मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला? मैंने बोला? Big fan bro, please shout out to you PUBG ID bro, love you. यस लीड भाई तुमने कभी लगाया है उंगलियों में जो लगते हैं? देख कैसल कितना फ्रैंक हो रहा है, देख नाचो लिख रहा है। बेटे कैसल वहीं आके मारूंगा, दिख मत जाना मुझे। और रोनी तू आ कैसे रहा है हमारे वीसी में? तू किस मुंह से आ रहा है यहाँ? तू आए क्यों? और तू कैसे आए यहाँ? तुम सालों को ना Bro big fan. Please shout out fire. आओ मैं अपनी पे। रुक तो रुक। बेटे मिल नहीं रहा है वो जो मैं दिखा नहीं सकता स्ट्रीम पे। अच्छा मैच स्टार्ट होने वाला। अरे हो गया। ये देख वो वाला जो तू कह रहा था ना, टारगेट है 7। वो बॉक्सिंग ग्लव्स। भाई मेरे को फील हो रहा है बट कि वुल्व्स ही जीत जाएंगे। वुल्व्स डोमिनेट किए भाई। भैया सुअर का चेहरा भाई वेजर करे क्या? सुअर का चेहरा ये सब नहीं करता वाले मैं भाई भाई, खा बच्चों के भाई। साथ तो खास करके नहीं करता। अरे भाई हार जाओगे यार। बेटे टाइम पे शादी हो जाती है, तेरे बराबर बच्चे होते मेरे। Still all 5v5 across the board. Nobody has yet to drop. A lot of information perhaps to be traded. Spy is playing in a fantastic angle to try to overwatch this A bomb site. And you can see on the minimap, that's exactly what they're trying to always get towards. Wolves stuck inside of lockers, trying to get themselves control of this A bomb. Jack face reveal tears of joy. इसको बोलते कवर। उसने एक बंदा मारा, जितने में पीछे मुड़ा दूसरे ने पेल दिया उसको। तू सीख। बॉट मार के वहाँ डांस कर रहा होता है। मोए भाई मर गए मोए ओ भाई साहब ने देखो सामने को कैसे पीक लेके बैठा हुआ है वो देखना। ये बाहर गया और ये गया। PvP का टिप्स वाला वीडियो बनाओ भाई। भाई शाउट आउट दे दो भाई दिल। And completely change the strategy as it seems like they're rotating overthrow. उसी टीम का Trying to get themselves over towards B. अच्छा अबे भाई नहीं है Hand here for Neon. नहीं है भाई, वो लेफ्ट में मैप देखो ना, मैप नहीं दिख रहा तुम्हें बी और ए साइड। अब हो गया स्टार्ट देखो प्रॉपर। Of the catwalk as well. So now with the bomb being planted. और ओए भाई बहुत क्लोज नहीं हो पाएगा। अकेले बचा यार, वो कैसे डिफ्यूज कर देगा बॉम्ब? Now in a 1v4 retake. क्या पता कर भी दे भाई। हार गया नहीं हुआ। Regular members only प्रोफेशनल सर्किट है, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। रेगुलर मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम कब होगी? बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। भैया आपको लाइन की ड्राइंग कैसी लगी? बट मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज 126 घंटे की मेहनत पे 100 व्यूज आए सिर्फ। ब्रदर व्यूज के लिए काम मत करो, व्यूज के लिए काम मत करो। नेवर वर्क फॉर व्यूज। भाई क्विक स्कोप देखा। एक्सपेक्टेशन को रखो 0 और फिर काम करो। मानो 0 व्यूज आएंगे
क्योंकि नहीं देखना किसी को तुम्हारा लाइन यार, ये सोचो टाइम आएगा, टाइम लगेगा भाई। इन सब चीजों से अपना दिमाग वो नहीं करते, दिल नहीं छोटा करते ब्रो। 5-6 साल लगाओ, ये ऐसी चीज Sorry है। bhai, but re-say my name. Harish Garvi, simple please. से नहीं Folded होता। hands, folded hands. सॉरी भाई, बट रीसेव माय नेम हरेश गदवी भाई। सॉरी यार। आपको लान की ड्राइंग कैसी लगी? बट मुझे बहुत बुरा LGRABCOZ हेलो भैया, बिग फैन। आई एम आल्सो फ्रॉम हल्द्वानी। हेलो बेबी, लव यू बानू, लव यू। ले लगा दिया, फिर से प्लांट हो गया। मैं बता रहा यार, वो भाई डोमिनेशन कर रही है, डोमिनेट कर रही है। भाई ने एंगल ही चेक नहीं करा, भाई जाके खड़ा हो गया। ये रोनी जैसा है भाई, घुंघरू लगा के घूमते क्या हैं। पता डिफेंडर्स में है? डिफेंडर्स में को। हाँ ये भी हो सकता है। अबे अटैकर मैप होगा ना भाई। साले वो प्लांट करके भाग जा रहे हैं, वो तेरे को। अरे दो ना इसके फ्लीट भाई, मारो ना एक। ये तुम्हारे साथ बैठ के तेरा मुंह चला रहा, दो ना भाई इसके। अरे अरे भाई फंस गया, भाई फंस गया। ग्राफिक्स हट यार, बहुत क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी भाई। मैंने ये सुना है कि वंस यू प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल यू कैन नेवर गो बैक टू एनी गेम। और मैंने बहुत दोस्तों से सुना है कि वंस दे हैव प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल यू कैन नॉट गो बैक टू एनी गेम। ग्राफिक्स, गेम प्ले, सब क्रेजी। सुअर का चेहरा जैक फेस रिवील कब करोगे? हेलो भैया, बिग फैन। आई एम आल्सो फ्रॉम हल्द्वानी। दिल भैया भैया जीटीआर दिला दो। कैसल तुम को तमीज नहीं है क्या? भैया जीटीआर दिला दो। मेढक का चेहरा, मेढक का चेहरा, सुअर का चेहरा, सुअर का चेहरा। तुझे बताता हूँ लिलीविल में, तू मिल मेरे को, तू मिल मेरे को बेटे। नहीं यार, एक गेम तो निकाल दी है वुल्व्स ने, सॉरी किंग्स ने, बट वही है टारगेट 1 to 7 है। 1v2 है। 1 to 7 है, अभी 4 है। थैंक्स ब्रो लामोदिल, यू आर माय मोटिवेशन खोपड़ी। हाँ तो इसमें 13 राउंड होंगे, फिर 1 to 7 जीत जाएगा। या फिर अनलिमिटेड राउंड्स भी हो सकते हैं, जो भी पहले 7 निकाल ले। हाँ अभी तक प्लांट नहीं हुआ है, जीत सकते हैं किंग्स वाले। क्योंकि देखना 1 का ही है ना, 1 versus 2 है। 1v2 तो निकाल ही लेंगे यार किंग्स वाले। और वो प्लांट कर रहा है भाई वहाँ। ओ भाई लेट खेलेगा। वो दोनों ए डिफेंड कर रहे हैं, वो बी पे प्लांट कर रहा है। नहीं सॉरी उल्टा। क्या लगता है आ रहा निकल जाएगा। निकल रहा है। नहीं कि वुल्व्स वाला निकाल लेगा, 1v2 निकाल लेगा वो बंदा। किंग्स निकालेगा देखना। वुल्व्स वाला 1v2 निकाल ले, लिख के ले लो भाई। देख क्या एंगल उठा लिया, देख ऊपर चले गया। एंगल देखो बाबा, एंगल देखो, कर डिफ्यूज पेल लेगा वो। आ रहे एक आ रहे। टाइम ही नहीं है, 15 सेकंड बचे हैं, क्या खेल ले। कर्नाटका में व्लॉग करो भैया। बट टाइम का भी इशू है, टाइम का भी इशू है, 7 सेकंड बचे हैं। वम्मू चलाइएगा फटाफट के बाद किंग्स जीत रहा है भाई ये वाला। नहीं बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज कॉल था। Through 5 rounds worth of play, one more round and we will swap sides and we'll see Kings on offense. But that's numbers in a nutshell. In a 2v1, you just have so many different corners that you need to check when it comes down to वामू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। Last offensive round here for Wolves. They're taking this through the main hallway, and while Kings realistically, they're prepared for this. They have so many numbers down by the elevator staircase. It's going to come through from the trades. 1 for 2 as the round starts to develop. Spy is at least going to find Jing just lurking inside of one of the hallways. And it's a 3v3 across the map. Still bomb being carried by King. In the world, you gotta feel is their oyster working over towards A. They're at least splitting the defense up. अरे ले गया। उनके 4 दिन 2v2 है। नहीं 2v3। अबे ये है लेकिन 2v2 है भाई, नहीं 3v2 है। Right now they are not playing bad, but it seems like they're just not sure कर रहे हैं यार anymore हाँ वुल्व्स नहीं, वुल्व्स अरे ले किंग्स वाले कर रहे हैं। Get a great kill for Peg, not gonna be enough 2v1 though, as he is left alone by Marvels. क्या होगा कापा जीनियस। अबे स्नाइप किया भाई। और स्नाइपर का एनिमेशन क्या है, बिजली कड़कती है भाई। क्रेजी भाई वो बंदे ने वो उसको पीछे स्प्रे दे रहा था और एकदम से फाट, जैसा मेरे साथ होता जाता है। भाई मैं हाश लव यू ब्रो। भाई पबजी के भी खेलो, जी परिक्रमा करके।
strategizing even before we started these maps. भाई कुत्ता पालो ऐसा जैक दोस्त प्लीज रिवील कब करोगे नेम ले लो सुअर का चेहरा 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 सर तो IRL बता दो कब पाएंगे। सुअर का चेहरा 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 And they still have players looking over towards A. Realistically, if you are Wolves, through that opening लैम दिल scrimmage, ब्रो going बट 1 अपर for की 2, ऑडियंस and you एकदम have फायर control of है bombs, Thank you, you bro. know where they're located at. There's लेकिन still a वही lot ना of फिर time ये left on the ऑडियंस clock, बनाने के लिए मेरे को sure. 7 साल भी तो लग गए अभी जनवरी में 8 साल हो जाएंगे You should सोचो be able to defend, you would think. समझ रहे हो At least in paper. टाइम लगता है पार्टी चीजों दो को यार। Let's see. अरे जनवरी में दूंगा ना भाई जब होगा तो पिछली जनवरी में कहा दी रोनी तुम्हें दी कोई पार्टी? ना कोई पार्टी नहीं। भाई घर आ तुम्हें जाना दी? पार्टी मिल जाएगी भाई मेरे को तो बर्थडे की भी नहीं देते भाई। हाँ सही बात है यार। अबे तो तू Birthday पार्टी पे में कभी- ओए तेरे बारे में सोचता हूँ मैं भाई रोनी के बारे में तू चाचा जी डाइट और कर जैक को पार्टी भी बुलाओ ये देख ले, कौन ये है? देख। Own weapon, his own focus. डाइटिंग कर तेरे मम्मी पापा को भाई बता सैलेड खिलाओ भाई, पार्टी में सैलेड खिला सकते हो भाई। Plenty of है? time to और play देव with. को क्यों नहीं You दी? gotta be cautious though. देव को इसके बारे में भी सोचते हैं फ्लीट भाई, इसके जब नहीं होगा। अरे मैं देव के बारे में You बहुत have at least सोचता one हूँ भाई player for Marvel. He's pushed all the way over by the A bomb site. But this play itself has developed and it's taken about a whole minute. What has Wolves done in response? They've given up. सॉरी फ्लिंट भाई। गाइस एक मिनट देव को पार्टी दे के आता हूँ ऑडियंस मेरे चैनल पे चली गया ही मेरा वाईटी स्टूडियो हैंग हो गया सच में लैमू ऑल दिस कैमरा ही बंद हो गया। His own weapon with his own देव locus. बोल रहा है मुझे घर जाना है। You can see it in the middle देव of कह रहा है मुझे एक सेकंड यार अनसेफ लग रहा है I don't know, but at least he wanted to make things even as far as Kings are concerned. Now 3v3 in a post plant takes about वैसे 7.5 चैट में to लोगों be को able to पता है get that देव का defuse असली all नाम the क्या way है? through. ओ हाँ You have allowed Wolves to just kind of waltz his way inside of lockers. How has Jing done this? अबे ये Last क्या player up in the control. अरे Marvel though बाबा। is able to find two, भाई struggling to ओ find to the ओ box. भाई Teammates is able to punch him out. And now you वाह have the किंग्स वाले क्या कर रहे हैं defuse सॉरी clean वुल्स as वाले day. What was started off what should have been a very Dominate. easy retake 4v3 forced out the First to 3v3 seven Wolves and लग we रही है just मेरे को ended अब। in a Wolves, हमने तो पहले ही round बोला game था one. It was Wolves very जीतेगी। anticlimactic. हाँ It was बोला था बोल रहे तुमने थे। फ्लीट भाई मैं बोलता हूँ ना देव को अपने घर में ड्रॉर्स का एक्सेस मत देगा, तो देखो कैसा चश्मा पहन के बैठ गया ये। वो चश्मा हटाएगा ना। वो ज्यादा बेकार लगेगा। क्या है नशा तू स्ट्रीम की स्टार्टिंग देखना ठंडा पसीना ठंडा पसीना ठंडा पसीना ठंडा पसीना क्या है ठंडा पसीना क्या है भाई ये ठंडा पसीना 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 थैंक यू भाई थैंक यू फॉर द सुपर Find a way to Love you. actually get an advantage and not get away from it. 1-for-2 trade. क्या लग रहा है कौन जीतेगा गाइस 20 के लाइक्स करने 20 के लाइक्स 20,000 लाइक दिखा दो भाई को मेरे को पता नहीं वुल्स लग रहे हैं पता नहीं और अगर वुल्स जीत जाते हैं तो कायदे से वुल्स जीत ही जाएंगे मतलब फिर एक तरह से नहीं क्योंकि वो लोग पहला राउंड भी वही जीते ये वाला गेम भी वही जीत रहे भाई मेरे को लिटरली वाइटैलिटी और या फिर गॉड लाइक किसी का गेम देखना है मेरे को देखना है इंडियन टीम्स में क्या वो बात है कर सकते हो सुअर का चेहरा 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 And a 1v3. That's right. 40 seconds. अरे does भाई not क्या matter at क्या all. आइडियाज ले ओ स्प्रे ट्रांसफर तो था A lot भाई of damage onto Grease. भाई वो भाग रहा उसके पीछे भाई पैसे पीछे बढ़िया भाग उसके ओला है भाई अरे भाई लेगा भाई दो लेगा भाई He is the perfect वुल्स वाला scenario भाई क्या for खेल the रहा है Wolves 1v1 कर player. दिया उसने गेम राइट 1v3 से 1v1 राइट It's now a भाई 1v1, बीजीएमआई no के भी longer खेलोगे 1v3. मैं हाश हूँ So लव that's यू ब्रॉम definitely परिक्रमा what करते पीछे दिल से आ रहा है परिक्रमा उसके। करते दिल Diffuse हो परिक्रमा गया। बड़ा करते एंगल लेके बैठा है भाई वो एक अच्छा। एक लेगा इसको Now you want अबे डिफ्यूज वुल्स को ही करना है ना अच्छा आ रहा है Kings being late to the party, trying to फेक किया shoot them out. अरे बाप 1v3 निकाल गेम दिया गेम गेम Oh भाई my god. That's a 1v3 भाई बैठा ही रह गया किंग्स क्लैन का refusal. Crazy They are man. even further उसने आके ahead. छीन के ऐसे ही चले गया खेलती हूँ मैं। I'm not gonna lie, Wolves are making me feel some type of way as far as their पता नहीं retakes are यार। concerned. That is just पर एक शर्म भी होनी चाहिए मतलब मैं तो इतना ही kills बोलूंगा around the stairs and through the hallways. क्या खेला है यार, बहुत You know खेला he है has to be सीओडी around तो। ticket. He has to be in a position to at least ऐसा check नहीं that खेला, bomb. पर खेला By तो है। proxy checking through ticket, that's exactly भाई where जो he's तुम located खेलती हो at ना जब wall. मिशन कंप्लीट Now with a करने के लिए 2-round lead. उसको खेलना नहीं कहते Themselves closer towards the 2-0 here versus Kings. Kings need an answer. Their offense has not really been
यार फ्लीड भाई हम भी ऐसी टीम बनाते हैं, हम चारों चलेंगे फिर बढ़िया करके ई-स्पोर्ट्स खेल ले। बेइज्जती करवाने में साफ बोलना। नहीं यार तुम कैरी करना यार, है कैरी करना तुम हमें। भाई जैसा ये लोग खेल ले ना हमारी चारों की बॉडी कैरी करके कैरी करना। अरे एक ही टाइप का कैरी हो पाएगा कि तुम तीनों पिले हुए हो और मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। रिवाइव नहीं होता क्या इसमें? नहीं मतलब वो मल्टी उसमें हो सकता है, क्या कहते हैं उसे, बैटल रॉयल में हो सकता है। लेकिन इसके ग्राफिक्स भाई यार देख के कितनी स्पीड से खेल रहे हैं लोग भाई, वो देख के चक्कर से हो रहे हैं। एंगल क्या चेंज कर रहे अरे तो तभी तो प्रो है भाई, तभी तो पैसा लेते हैं वो ऐसे खेलेगा। वही तो बात है। ओ भाई वो ये कहाँ से पड़ी? पीछे तो था उसकी जस्ट देख रहा है वो, एक ही राउंड चाहिए बस। अरे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है भाई मेरे को, अभी भी उम्मीद है मेरे को। Yeah, sure are. Now one round away. Our Wolves from the 2-0 and 1-0 in Swiss. Same. And the offense from Kings now actually. Guys, मैं तो डे वन से वाइटैलिटी और गॉडलाइक को सपोर्ट करता हूँ, मैं इतना ही बोलूंगा बस। और भाई मैं भी ये तीनों देख लो भाई, ये वुल्फ सपोर्टर है। मैं तो भाई डे वन से गॉडलाइक और वाइटैलिटी। इंडियन टीम्स भाई, इस टीम से इस मैच के लिए तू डे वन से सपोर्टर है उनका। क्या मारा, लाइनअप में ले गया भाई। ले भाई तीसरा भी कर दिया भाई ने। अब नहीं होगी, अब उम्मीद नहीं खत्म भाई। पता था कि उसने और भी क्या मारा खींच दिया भाई, मीटर खींच दिया, मारा है भाई वुल्फ, गंदा ही मारा है भाई। यहाँ पे लोग लैंड देखने गए होंगे क्या? वो देख वो अपना तकिया लेके आया है खुद ही। सबके पास है तकिया? नहीं सबके सब नहीं रखा है, देखो मतलब पहले टीम के पास भी था। कंफर्टेबल होता होगा ना नीचे में रख के। यार फ्लीड भाई ऐसे बैठ के खेलने में कैसा लगता होगा? कहाँ पे? ऐसे ही वाला जैसे प्रॉपर जैसे बैठे हुए लोग, मैं तो बिना लेटे खेल ही नहीं पाता। यार इंडिया में हो जाए यार कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का लैन, मजा आ जाए, जाके देखेंगे। टीम बना लेंगे ना, हम खेलेंगे हम साथ। अरे खेलेंगे यार, देखेंगे। हाँ वामू गैंग। देखो मेरा कैसा है ना, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, तभी तो चलो टीम बनाते हैं। पर एक लिमिट पता होनी चाहिए, मतलब मैं ये भी बोलूँगा। नहीं भाई लिमिट लेस। अब जैसे मैं हूँ, दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट मैं आज रातों रात तो एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाऊंगा ना, है ना? बन भी सकते हो, अच्छा पढ़ोगे तो। अब क्या पढ़ोगे भाई? भाई तुम्हारे पास अगर डोरेमोन की ब्रेड आ जाए वो वाली तो कर सकते हो ना भाई। इजी है। डोरेमोन की ब्रेड? हाँ ब्रेड क्या होता है भाई? किताब पे छाप कर खा जाता है। अरे ये देख रहा है भाई, तू गलत देख रहा है, मैं भी गलत देख रहा। It was a 1v3 and then what realistically felt like a 1v4 to end all of Express on 2 different bomb sites. Absolutely electric stuff. हेलो भैया जी, राम भैया जी के बीच डीजे माइक खेलो PLZZZ। हम लोग लाइव ही देख रहे हैं ना इसका। एक बंदा कमेंट में आके ये क्यों बोला गॉड एल 4 फाइट चल रहा है? अरे मजे ले रहा हूँ। Through all the different fixtures that Express has to offer, and हाँ, हम सही जगह पे तो देख रहे हैं। was just at an all-time high for Wolves. Lauren, what a display! I mean, you had mentioned it, obviously. फ्लीड भाई, heading into this match. एक प्राइवेट सुपर चैट करने पे कापा की पिटाई हो सकती है? It did not go भाई 10,000 की होगी तो कर सकता हूँ। So ये तो ज्यादा होगा, इतना वर्थ तो नहीं है भाई आदमी। 2000 भी चलेगी नहीं। हाय डीजे माइक खेलो, मैं हाश हूँ, लव यू। यार ये भी वर्थ नहीं है यार, इसमें 5 रुपए खर्चने का मन नहीं करता। करते दिल परिक्रमा करते दिल। कि यार देव मैं तो नहीं सकती यार। भैया मेरी मदद कर दो प्लीज। सुअर का चेहरा, सुअर का चेहरा, सुअर का चेहरा। time left Dave is made of on the steel. day to get some wins. क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? Might be a little bit of a rougher भाई मेरे हिसाब से तो जीत गए भाई ये लोग, ले गए बुल्स वाले, ले गए ये वाला मैच तो। Our winners from Wolves ready to chat. Does League Ops know what's happening? Okay. All right. वो लोग बात कर रहे हैं कि अभी कॉफी कौन सी पी है इसके From the बाद। guys out of the Wolves.
Things are looking pretty crazy. I think we are. गॉड लाइक का भैया मैच कहाँ हैप्पी देख रहे मैरिड हो? लाइफ मेढक का चेहरा 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 Be ready to have a chat Unbox. just yet with F. However, we can continue talking about the performance here. Happy married While life? things are getting figured out, I want to hear your thoughts, Gil, on how it all went, and talk to me a little bit about the fact that there might be the necessity of bounce back here. Yeah, it's gonna be देव भाई तुम कहाँ जा रहे हो यार? for the side of Kings. They try to, भाई I क्या feel लिख like रहे हो तुम लोग? they try to get ahead of themselves by trying to outplay their opponents on their own. अबे गलत स्ट्रीम चल रही है फ्लीट भाई. भाई मुझे घर जाना है यार. To actually have a scenario where they're confident what's going on. यार They don't सही चल necessarily रही है have मेरे to हिसाब से तो. always हर्षी adapt चेक to करना एक what the बार. enemy's सही है, playing. सही है. If you make the enemies actually है ना? play by हाँ, your सही है. own rules, I think that's gonna be super यार important बस for यही बोलूंगा us मैं to कि figure ये रोनी को out. माँ बहन की गाली मत So बकना for है. now, we are going to भाई get मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी. Okay, so we clearly sound a little bit confused right now. I've got information to Fleet, explain I'm what is challenging going you in on. Minecraft the last PvP. map, we did have a player DC. No, So no, after no, that, no, I think no, I'm no. gonna go ahead and replay Gojo Sadru. Gojo. Yo I'm the end of this Yo, match man. to what we thought was a 2-0 will now reset back to a 1-0. We're gonna go back to that SD. भैया भाभी अच्छी है. That's what I want to know. अबे भाई ये Information देव को. I will disseminate it to you. Just the edge of my seat. Why? देव Actually, भाई not ये sitting down and खा के standing, रो so गुड़ I'm on गुड़ my तुम. toes here, Glitter. All right, I need to know all the information. I need to know it's snap. But regardless of the map, this डर क्यों रहे हो should यार? realistically, शर्मा का है रही हो. comes out काम का है रही. यार यार तुम यार बैठो यार देव भाई. देव भाई थोड़ा चिल मारो यार देव भाई. भाई रिलैक्स करो यार. रिलैक्स करो देव भाई. A lot of these opening rounds when Kings were on offense just were kind of decided what like the first like 20 seconds or so when they found all the trades for Wolves. They had मुझे कर numbers दो that भाई they का. could follow, but yeah, a real good opportunity here for Kings to maybe try to bounce back and force map 3. Yeah, it's not always that you get भैया आए भाभी अच्छी हाँ सुअर का चेहरा सुअर का चेहरा सुअर का चेहरा. चाय नहीं दी हो. ये काढ़ा था. अच्छा. मैं चाय तो पी ली मैंने. Scenario because this is still Wolves, this is still Mama, going ये to क्या be लाया तू? SD. So I don't know. I'm not sure if this sort of shake-up will actually be enough. भाई इस बंदे ने मेरे पैसे सिर्फ बर्बाद करे भाई. We may have gotten अब ये some क्या लेके आया clues to दिखाऊं what- तुम्हें. Tell me about it, Laura. All right, इस so we have a बंदे ने little मेरे bit more पैसे information. सिर्फ और We are सिर्फ going बर्बाद back करे into भाई. that second game, but if ये I'm not क्या है? mistaken, we will be starting with a score line इसमें of लिखा है 5 चाउमीन. to 2, as that's when हाय, the हाय. ओ DC ये तो happened. बहुत So it's not टेस्टी the होता है full reset यार. like you're वाह asking और यार. इसमें छोटा भीम बना हुआ है. S&D, we're going back to the Oh, point yeah. where So the DC lucky. happened and then picking up from there. All right. So, I mean, यही छाप दो देव के मुंह पे. इसमें देव का नाम भी लिखा है. कचरी नमकीन. I think it's going to be extremely interesting Kachra. to be able to see again. Like Kings, a lot of their problems were on आओ खा के offense. देखते हैं Defense भाई. was at least being traded वो out. देखो It भाई was a तुम्हारा 3-3 चश्मा पहन के split बैठ गया at the पीछे. end of everything, but be able to make things as even भाई as क्या हो गया? बाबा possible. You इसके get the अंदर ना वो replay coming सेम back चीज in, है. the advantage, of course, बस फर्क going to इतना है कि इसके अंदर Wolves. गिफ्ट There is नहीं है. going to be a lot to होगा. claw your way back अभी from तो if लाऊं you मैं. are Kings. Again, all of these इसमें निकलेगा. different trials and tribulations as far as the Swiss bracket आजा is उसको खोलते concerned, देखते इसमें है cross-regional कि नहीं. matchups. इसके निकलेगा. You might find yourself in the 0-1 Swiss play here soon. Yeah, it's not a massive opportunity, but it is a भाई भाई कुछ बढ़िया मिला है. able to kind of figure out what went wrong भाई ये in some मेरा of वाला those था ना मेरा earlier वाला. अरे कान गंजी मारूंगा. पान की to टॉपिक bring it तुमने back. ली है? It's अरे still बाबा. very ओह भाई देखा to ना close ये out 2 more क्या seconds. निकला यार? So सही चीज ला दो. अरे भाई. but it at least opens the क्या door a चीज little bit. निकली There's है? some light coming through the crack in the door. निकलने से there for पहले Kings टूट Go. गया. Yeah, when you thought that भाई दिखाता हूँ तुम्हें. that you mentioned you भाई see चीज तो अच्छी निकली थी भाई. नॉट माय फॉल्ट. अच्छा सामान लाऊंगा. fight to भाई अब try देव to और मैं go ट्विनिंग कर सकते हैं. देव वो वाला to लगा that ले. scenario where you अरे get भाई. the best results possible. दुश्मन But को it's मिटाने. honestly never will be in a search and destroy against the Chinese team this time being Wolves. Ready? So, I'm intrigued. I'm बस intrigued देव थोड़ा as to old how fashion वाला है. much Can Kings actually change in order to have a different outcome to what we've witnessed so far? So in this match number 2 of the night, you know, the Wolves gotta ऐसे ही होगा try ना? to do it again, but Kings want a different result. King wants to take us to a game of control, a map number 3.
In which case, I feel like he could be a really standing. पर ये ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना। Well, while we're waiting for our players to get themselves reset into this replayed portion of the second game of this matchup, you guys are hanging out with us here at DreamHack Atlanta. Don't forget that there's loads to do in our Snapdragon Pro Series area outside of watching the competition. You can always stop by the pit. I've heard lots of yelling going on in the pit, so I'm sure we're seeing Shift is at least getting some insane action going on there as well. He can hear me. He's waving from a distance, and there's laser tag. We haven't even gotten a chance to देखो एस्ट्रोनॉट बन गए भाई, दीदी कहा था ना। on decimating all of you. वाह यार, रातों रात एस्ट्रोनॉट बन गए यार। I don't care about our 1v1, but I want to make sure that Alan doesn't go undefeated on the entire weekend. I will. It's not so much for me as it is for everybody attending DreamHack. We cannot. देव का गिरे वाले खाने का मन कर गया। On top of that, we've got all of the tech, we've got the charging stations, we've got this custom jersey area, which I need to get in on that early. Right? Like, did you see how cool that looks, Gil? It's amazing. It's amazing. When I saw that on the social, we can see the display. We can see the artists that are. यार तुम लोगों के ऊपर पूरे में पड़ा हुआ है। Like it literally cuts the air. Graffiti. बात को ठंडा तो लग रहा है, जैकेट दूं? When in Atlanta, look, you got to be able to take it. नहीं Everybody, I mean, I was real excited. We were walking towards our green room with all like the spray paint, the style for all the logos and everything else included. That is the style that we have here as far as Atlanta is concerned. Again, if you have never been here, I definitely recommend it. It is artsy to say the least. And we're starting to see some of these graphics loaded in, and our players are slowly looking slightly more settled. We see their devices in hand. They are almost ready to go. And as I say it, let's get right back into it. Here we go. Into the game. This is going to be तेरी मार्केट में ज़्यादा पहचान होगी ना, चोरी का माल बेचते रहते हैं साला। यार रोनी तो अगर बाय चांस चोरी की गाड़ियाँ उठानी होंगी तब है। अबे भाई मैं क्यों उठाऊंगा चोरी की गाड़ियाँ? Quite interesting. There you go. Sai with kill वो number ये 2. क्या कर रहा है? गड़ 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 गड़। A lot of damage being dealt. The bomb's going to be planted, and it seems like wolves are not here to mess around no more. No, they are surely not. Oh my God. A little bit ये of तो replay दिखा। trying to retake yourself, Zai. Still on his own playing way. replay दिखा। He'll end up cleaning up just about everybody this side of the Mississippi. That is a fantastic take as far as a round is concerned. Now Wolves once again 1 round away from the मेरे हिसाब से तो Wolves ही जीती है। Somebody stop Third him. match He's a भी। monster. A true monster. मेरे हिसाब से तो Wolves पूरी championship जीतेंगे kill number 1. Neon capitalizing. Spy with the Never give up, triple never kill by himself, immediately pushing 4 more. There's the usage of that shotgun. मेरा दिल हमेशा से बोलता है और हमेशा बोलेगा गॉड लाइक नहीं तो वाइटालिटी, दोनों में से एक टीम जीतेगी That's gonna make it a 2v2. इस बार जीतेंगे भाई। Ladies and gentlemen, that was insane by Spy, but he is now knocked. And ladies and gentlemen, right is down. Neon, look at that. जगत भैया लामू दिल 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 smiling face smiling face smiling face smiling face smiling face grin. I don't know. I feel like that light is fading. बच्चा कैसा है भैया? मेढक का चेहरा 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 पर इस सेकंडरी से क्यों चल रहा है? King stay alive. Oh my goodness. दीदी जी कौन है आपके? जीएफ नहीं हो सकते जगत भैया ऑफ। Doing it now in their favor. हाँ। So that was इतने 6-3 कैसे हो जाएगा? that we just witnessed there. वही। Well, वो हो गया 6-4 Kings स्कोर हो गया। showing that they are still having something to पर ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि अभी चल रहा है? So for लाइव now, पीछे चल रहा है देखो। well, we will get to see some more. Have to remake the lobby, of course, as far as this one is concerned, just to make sure that everything is just about all square. Just getting confirmation there from League Ops as well as production. We will be remaking this one, but I'm not gonna lie. Look, when we got in towards that अच्छा कुछ issues हुए शायद उसकी वजह से rematch हो रहा है। हाय पीवीपी टिप्स वाला वीडियो बनाओ प्लीज, लव यू भाई। बनाऊंगा बेबी बनाऊंगा। Number 2 just about running at everybody that he possibly could find in his crosshairs, killing
just about everybody in that round. But hey, look, you back a king into a corner. भाई a toughest question Nami or Robin? भाई नामी और रॉबिन नहीं होता है, नामी एंड रॉबिन होता है. Definitely a sight Yudev, for some sore eyes, I'm sure. नामी या रॉबिन? And I mean, we were talking about the clutch plays from the side of Wolves, but that last round was not too bad from the side of Kings. इसको वो कौन था तलवार वाला? बिग मॉम ज़्यादा पसंद है भाई. And managed तलवार वाला कौन था? तलमियोक. अरे नहीं यार, वो कैप्टन कौन था तलवार वाला? अबे जोरो थोड़ी. कौन तलवार वाला फिर? अरे सांजी अबे जो हैट नहीं, सॉरी माय बैड, वो शैंक्स बोल रहे हैं. हाँ शैंक्स. एम्परर ऑफ द सी. सबसे पावरफुल वही है ना? नहीं. That's some fresh information. So all these rounds were warm up, and realistically, what that means, there's no funny business anymore. You have some really good insight for both these teams on how they want to try to approach these offensive rounds. The retakes for Wolves might be a little bit more speculated when it comes down to Kings. So very interesting development as it's continuously kind of leading towards Kings as this narrative is just building itself. Just like Kings are starting to feel like they are out of it, but not anymore. The slate is completely wiped clean. Gonna have a full replay of this Express map number 2. And I mean, Kings are, I feel like they haven't changed their strategy that much on what we saw on this, what we are calling war map rounds. So it's gonna be Godel won the match. But kaha? Well, while we have this completely being remade on the main stage, gonna throw it down to Shift. अबे remade हो रहा है पूरा, कुछ glitch हो गया शायद. Oh. Things are going great. I'll just say that much. It feels like we're back in the old Call of Duty days. We had a lot of people were here just a moment ago because there's been a lot of electricity all across. A lot of matches that are still happening, but there is one game that has finished. And I'm not sure if we can label one team in this matchup as a favorite over the other, but Japan's only squad in Volt has taken down Exclusive, EU's #2 seed. Exclusive I thought was looking pretty solid, and again, not really knowing much about Volt outside of what they did at CDFI, it's hard to know how good they were going to be. Were they able to replicate what Scars did last year? And it looks like we're starting to get a little bit of our answer. The Arsenal hardpoint, 250, 238, 3 different players dropping 40 bombs, minute 30 plus. अच्छा अलग ही चल रहा है वो. A lot of the players, and then a 7-5. पर ऐसा कैसे हो रहा है कि दो लाइव चल रही है वो? अब तो एंड भी हो गया उनका मैच ऐसे. They're also icing up and coming up clutch when they need to the most. So keep an eye on Japan. They're starting off 1-0, where Exclusive will drop to that 0-1 side of the bracket. Other updates though across the rest of the games. Dream Girl. It was a very drama queen. Arena squad, but a 10-8. किसकी दुकान में गया था भाई देव भाई? एक वो आता है, A to Z आता है. क्या आता है? A to Z. उसमें ABCD होती है Z तक. खाना कुछ मेरे काम का है. Nazuko after seeing ZENITSU peanut yo वही मो poop poop अमावस्या के चांद का चेहरा. Thank you so much, Alan. As you see here on your screen, just everywhere where you can find all of those matches, so make sure you keep it open because there is a lot सबसे पहले हमें मिली है एक to watch on this beautiful Call of Duty Mobile की शर्ट जिसके पीठ में ये बना हुआ है. Flame 2 भाई होते वहाँ तो वो भी खोद देते. ये सारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का ही सामान है. और चेक करते हैं. The lion's share of the prize pool. Just getting ourselves closer towards this lobby remake as far as this Express Search and Destroy is concerned. So if you've been watching this entire time and you watch all of those rounds being played, forget about it. It's a completely remade lobby. भाई एड्रेस दो, कोरियर कर रहे हैं ये पोस्टर. एड्रेस दे दो, कोरियर कर देना पोस्टर, ठीक है? हुडी और टी-शर्ट मुझे कोरियर कर देना. ये टोपी कापा को दे देना. हाँ. टोपी कापे को पिला के मारो. डब्बा तुम रख लो, काम आएगा. इंडियन बीडी यूट्यूबर आपके जैसे सीरियल को सपोर्ट नहीं करते. You can. So whenever. Love you there. Begin this game up in just a minute. So do
not worry about भाई it. टोपी We पहन के are फ्लीट भाई के very ऊपर 4 साल So से you बोले love me, of the second and then you half. can. We've So seen whenever this and I'll be It's there. an interesting one You want because my if love, the cards you are want played my right, heart. it might be over. We could have like 3 rounds being over in the span of a लग तो minute. बढ़िया रहा हो यार मैं Like इसमें. no questions asked. That's how fast मेरे को it पिला दे एक बार. could go between these two. Will Wolves try second, to shake them off round after round? They're gonna be like, you know what? I can phase them off to their own game. They're constantly doing the same, so why don't I go ahead, play by the rules, and show them how it's done? Try करिए. Only time will tell. कुछ तो होने We वाला are getting नहीं ourselves वाह closer. ये. अरे बाबा लग रहे हो तुम तो यार. वाह लेकिन ये उसकी तरह ही लग रहा है एक बारी को. याद है वो मैड वाला रॉब जो हम बचपन में देखते थे कितना वैसे ही लग रहा है ना. What the heck? You are with our voices at this point. So, Espresso Destroy about to be kicking off yet again. चलो And इसको as we were already talking दो about, कुछ when बना we के assumed दिखाएगा that ये. this entire series was over, is that this is a big proving point for Kings. Look, either you're going to play map mode अरे वाह combinations तू तो that cool you लग रहा है didn't बहुत. look great on, especially for recency in the last season of SPS. भाई तू तो यो लग रहा है यो. Or all of that homework is going to accumulate into you taking down one of the best teams. Again, it's very tough to do when it comes down to facing a team from China in Search and Destroy यार कोई alone. चैट में let तुम्हें alone when गेमर it comes down फ्लूइड to बोल Wolves, रहा who है. on मैंने Express नहीं बोला यार, have चैट been में looking बोल रहा pretty है damn कोई. good. And as we got info from Ellen, I think it goes beyond just Kingsway, but also Europe as a whole. Just saying, Are no now offense. trying to prevent what happened last year, which is Europe just struggling against everybody. Bolt took it home, 2-0 against Exclusive. Now Kings have the opportunity to try to prevent that from happening, to try to change things up. And as you mentioned, try to take down arguably the best team in China, which is Wolves in here. But it's a tough mission when it's Search and Destroy. It would always be. But although it's difficult, it's just not impossible. They've taken quite a few rounds for them. ये गेमर फ्लिंट भी बोल रहे हैं यार. अरे चिट्ठी. भाई गेमर फ्लिंट बोल दिया यार. आज ही याद आ गई मैं ना तो तुम नहीं सबको. सहती यार. तुम्हें बहुत हो रहा होगा ना सहने का. अरे गेमर फकीरुम बोल दिया यार. अरे चिट्ठी. देखो वहाँ लिखा है मैं मन से सुना बोल रहा हूँ. Kings do lose. अरे एक ने तो गाजर फ्लिंट बोल दिया. ये तो मैंने भी देखा. Number 2 team out of Europe. Only time will यार tell. गाजर फ्लिंट बेस्ट है यार. ये गेमर फूड. ये रोनी है गेमर फूड वाला. देखो ऊपर चली गई. Again, we have shifted up as many times as we possibly could. गौरव है It is तो going गेमर to फ्लड. come down to this. Again, Crossroads Strike is the control map number 3. पता नहीं यार कभी कभार तो मन करता है कि इनके ऐसी पाद मार के उड़ा दूं. That map number 1 on अरे किसी ने तो जगत भैया बोल दिया यार. अरे यार. Without further ado, let's get underway inside of this Search and फिर से Destroy. चालू हो गया. अबे यार ये क्या मैं Not too कंफ्यूज sure हो what रहा the हूँ score बार-बार. on अरे top वो of उनके all that means. वो मैच रीसेट करा उन्होंने. Wolves have themselves a 2-round lead. कुछ glitch हुआ होगा ना. वही तो मैं बोलता रहा हूँ ऐसे किंग्स क्लैन जीतनी चाहिए थी भाई. किंग्स क्लैन के साथ कोई ग्लिच हुआ है. अरे कोई नहीं बुल्स फिर भी जीत Now जाएंगे. planting the bomb at a distance. शॉट नहीं चला क्या वो? Seems like नहीं वो Wolves साइड में लगी. get another kill. Kings specifically trying to अरे भाई solo भगता ही है वो तो. quite a few shots there. 35 seconds on the clock. मूवमेंट देखो स्लाइड Are going to be sufficient in here. और मोबाइल में खेल ले बेस्ट स्लाइड बात मार ये के भाग गया वो. Great job. बात ये है मोबाइल पे भी खेल ले. Marvel takes a kill before he bites the dust against his opponent, but it's going to be a really, really good scenario. Says in the break of a kill, takes that knock onto me and immediately goes for more. 50 seconds left, turns around, gets taken down. Grease alone. यार पता मैं ऐसे मारा हुआ एक बार पता है. ऐसे मैं खेल रहा था नीचे बंदा बैठा हुआ था. मैंने पूरा अंदर के ना वो कंसंट्रेट करके गोली मारी तो घूम के मार दिया. नो वे. डिफ्यूज कर दिया उसने. और निंजा डिफ्यूज हो गया भाई. हो गया. Teammate let him know where the bomb was with the smoke. He had no clue, and because of that, they lose that round. That's tough. Just when Kings have themselves a semblance of numbers, the trades coming across, it just Watching since you were Raj Mystery Lamu चमकता दिल मेढक का चेहरा चमकता दिल मेढक का चेहरा. Watching since you were Raj Mystery. जिसने वो देखा है उसने सब देखा है. जिसने वो देखा है उसने सब देखा है. देव अब्बा जब्बा कर रहा है. क्या होता है? देव को नहीं पता. It is a 2v5 across the map for the third time in the past hour.
are sitting up on series अबे point. देव तू उस टाइम बैले डांस करने में बिजी था। माइनक्राफ्ट डे 1 अच्छा समझ गया। वो स्किन लगा के आए थे तुम लोग राजमिस्त्री वाली। वो अजीब से गंदे से मुंह वाली सर पे पट्टा पहना हुआ था। अरे वो वाली वीडियो, वो वीडियो किसने देखी है? दिवाली धमाका वाली जो माइनक्राफ्ट। अरे भाई क्या वीडियो थी यार वो। Bravo once again. Seems like every time that we get to these sort of scenarios, Wolves tries to defend Bravo. Nia takes the key onto Marvel. Grace completely on his own, finds 2 enemies, drops a single bullet, and वाह फ्लाइट स्नाइप देखा, खत्म भाई, जीत गए, दोबारा जीत गए। Gorilla wanted to be done is how Wolves does it. All right. So I mean, it's settled at this point, right? Feels like it. Yeah. 7-3, the 3 different times. Wolves win. All right. But still, I mean, look. यार Wolves better है भाई. Retake again. The last time we went through the entire replay there, Gil, we clearly saw that Kings were on defense, so we needed to try to recreate the lobby, try to get Wolves back. ये क्या हो रहा है? ये गुलाब जामुन लेके आया भाई। उन्होंने लगे डोमिनेट किया, नहीं रे पानी लेके। प्रकाश भैया के छोटे पीनट शाह बलू। तो बोल रहे जल लीजिए। थक गए होंगे। 2-0. A very convincing side as far as that Express is concerned. Their defense is so good. Not to mention their opening engagements, their first blood ratio, their information for the kills and trades. But what they're able to do across the map, wonderfully. Yeah, it was amazing to see that although there was some things. यार वो 1v3 वाला बहुत क्रेजी था। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं यार मुझे लग रहा है मार खाने वाला फीलिंग से आ रही। That is the victory of match number 2 that I definitely enjoyed watching, and hope you fellas, you beautiful people at home, did enjoy that as well. बस कैमरा नहीं बंद हो। नहीं यार मत पीटो यार बेचारे। पीछे से कटाना ले लो। तेरी साले की ले 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 ये भी ले पड़ेगी मजा आ रहा है। एक चटकारा और दे दो भाई। एक और दे दो यार। मसाज तो अच्छी करते हैं। कैसे मसाज करता हूँ मैं? यार कोई चैट में बोल रहा है भाभी जी को मत मारो। अरे 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 भाई हेलो। 我觉得这是我该做的，然后我觉得这样的话能分担队友的压力。 स्लीप भैया शाउट दे दो चुंबन का चिन्ह 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 लामू। ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई? 还是比较激动的，因为我觉得这是我们的第一步嘛，然后开门红嘛，就毕竟是，然后我觉得我们之后会做得更好。 So I believe this is our first step of winning, and this is really extreme to me. And so I believe from here on, every day will be. वो ये मुजान की बहुत सुजी लग रहा था पूरा। कहाँ से? पूरी लुक्स वैसी है इसकी। कौन लंबे वाला है? हाँ हेयर स्टाइल जिसका बढ़िया है। अच्छा लग रहा है तुझे? यार मुजान की बहुत सुजी लग रहा था, बढ़िया लग रहा। Obviously, I am ready to take on the लग तो रहा है यार। That's what we love to see. Congratulations. Thank you so much. Appreciate your time. रोनी भाई की बात चलवा दूं। इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। नाम बताऊं नाम? The team by putting in that much work. I saw your face when you heard him say that, Gil. What's your reaction to the एक और गेम बचा है ना अभी। अच्छा नहीं दोनों जीत गए ना तो उनको तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। डोमिनेट करते हैं वो, पहले ही बता दिया था मैंने और देव ने। हाँ भैया इंडिया में सपोर्ट NHIKRT यूट्यूबर CODM को लाउडली क्राइंग। मैं इंडिया में सपोर्ट नहीं करते CODM यूट्यूबर को।
यार ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है ब्रो, तुम बहुत गलत हो इस चीज में। हर चीज में टाइम चलता है। रॉनी सुअर कहाँ है भाई? इसने अलग से वो चैट रुकवा के पढ़ाई है मुझे भाई। ये गंदा आदमी है भाई, ये चढ़ता है मेरे से फ्लीट भाई। नहीं मेरे को तो पसंद आया बहुत, ये बात इसकी। ये रात को बैठता है मेरी फोटो के ऊपर नींबू रख के पीने मारता उसमें। Yeah, I'd be feeling pretty darn good too. Yeah, that was only our first 2 matches of the day. If I'm not mistaken, we still have 7 more on the main stage alone. So much more Prakash action going Bhaiya, on naughty, in the naughty. pit. But before we continue on with any of it, oh my God, it's time for a short break. Don't go anywhere. You're watching the Call of Duty Mobile World Championship. Hello Fleet bro, एक बार नेम ले लो स्वयं प्लीज। स्वयं भाई लव यू। चलो थोड़ी देर ब्रेक पे जा रहे हैं, तब तक हम लोगों को ये दिखाएंगे, हम लोग आपस में बातें करते तब तक। लिमटुम्बो GTR का 2nd मंथ, अरे लव यू यार। सुदन वरज लव यू मेरे दोस्त, लव यू, आई लव यू। यार दिक्कत वही है विद GTR यार, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। Powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming. बस दिक्कत एक Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, बस दिक्कत एक DHL, पता and the United States Air Force. बस GTR की दिक्कत इतनी सी है कि ना GTR अगर कभी बिगड़ गई ना तो बहुत बीटी करती है यार, क्योंकि मैंने ओनर से बातचीत करी है सीधे, समझ रहे हो तुम लोग। मैंने सीधे ओनर से जाके बोला, तो मैंने उनसे पूछा कि GTR का क्या सीन होता है, क्या होता है, तो उन्होंने बोला ब्रो इफ यू आर GTR का 2nd मंथ। थैंक यू सुदन वराज। पता है क्या सीन क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको कि GTR में बस दिक्कत एक ही है कि उन्होंने मेरे को खुद ही बोला, उन्होंने बोला ब्रो फिल्म टिम जगत दीदी मास्ट नई फ्लीट भैया सा ऑक्स स्माइल विद हॉर्न्स। अमंग अस की लाइव स्ट्रीम करो ना यार एक बार, समय भाई लोग भी आएंगे ना तब करेंगे अमंग अस यार, बहुत मजा आता था यार। समय भाई, तन्मय भाई, कैरी, करण भाई, सबके सब साथ में मजा आता था यार अमंग अस में। तो यस, मैंने उनसे पूछा जिनके पास GTR एक्चुअल में थी, जो चला रहे थे, मैंने उनसे पूछा जाके कि भाई क्या सीन होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने बोला कि ब्रो अगर तुम्हें हाथी पालना है तो रख सकते हो। उसने बोला कि मेरी 3rd कार है GTR बेसिकली, उनके पास पहले से पड़ी हुई थी 2-3 गाड़ियाँ, उनके पास एक हुराकान ईवो थी, फिर उनके पास एक मैक्लेरन वो भी थी 720 स्पाइडर। की लाइव स्ट्रीम करो ना। हाँ किसकी, अच्छा मंगस की। तो वही मतलब मैंने उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बोला ब्रो इट शुड बी योर लव यू। ये लो इरिटेशन चुंबन का चिन्ह, 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 चुंबन का चिन्ह। अंगे लोग। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेसिकली उनके पास थी, तो उन्होंने ये बोला कि ये मेरी 3rd कार है बेसिकली, समझ रहे हो। अगर तुम पहली गाड़ी लेने जा रहे हो तो मत लेना GTR, बोल रहे थे हो कि पहली गाड़ी थोड़ा सा चिल मतलब अच्छी सी लो, और सुपर कार में मतलब थोड़ी अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी बोलो। उन्होंने बोला GTR में दिक्कत बस इतनी सी है कि अगर बाई चांस इंडिया में ख़राब होती है तो तुम थोड़ा सा पैदल हो जाते हो, क्या कहते हो उसे, उसको सही कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और पैसा ऑलमोस्ट डबल लगता है छोटे छोटे पार्ट्स में भी, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। तो वही दिक्कत हो रही थी उनको, तो बोले थे कि 2nd 3rd लोगे तो बेटर है। मैंने बोला अच्छा 2.5 करोड़ की गाड़ी 2nd 3rd गाड़ी लूँ मैं, 2.5 करोड़ की। अरे मेरे से ले लो यार, मेरी खड़ी हुई है। पता नहीं यार भाई, तुमने इसकी नेक्सॉन की हालत नहीं देखी है ना अभी। भाई मी APKO GTR गिफ्ट के यार, मतलब मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता इन सब चीजों के बारे में, बट मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कैन यू ऐड मी इन पर्सनल सर्वर एज इन पर्क्स। ना थोड़ा सा तो तमीज होना चाहिए मतलब। नहीं मैं खड़ी हुई है यार, झूला खिलाऊंगा थोड़ा सा बस। जगत भाई और दीदी मस्ती नहीं भैया सा स्माइल विद हॉर्न, स्माइल विद हॉर्न, स्माइल विद GTR हॉर्न, RS6 क्राइंग। यार ये मेरे को समझ में नहीं आया, जगत भाई और दीदी मस्ती नहीं भैया से, मैं समझा नहीं ये चीज। कैन यू ऐड मी इन पर्सनल सर्वर एज इन पर्क्स। ब्रदर आप अपने पहले डिस्कॉर्ड पे ना अपनी ये वाली आईडी जो सुदन वरज के वाली है,
इसको कनेक्शन में डाल दो और जब आप दिख जाओगे तो मैं पर्सनल सर्वर का लिंक दे दूंगा वहीं पे जो जगह है, तो तुम्हें वो दिखने लग जाएगा टेक्स्ट, तो वहां पर तुम फिर जाके पर्सनल सर्वर वाला लिंक क्लिक कर सकते हो सीधे। पोकेमॉन कार्ड की वीडियो कब और चुंबन का चिन्ह 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 चुंबन का चिन्ह। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। ब्रो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क डबल ए रहा 8 फरवरी 23 हाशिरा को ट्रेनिंग मेधक आर्क का आ रहा है, चेहरा मेधक 23 का फरवरी चेहरा को। मेधक का चेहरा मेधक बोल का रहे हो? चेहरा मेधक का चेहरा मेधक का तो भाई चेहरा। तुझे मेढक का चेहरा लगाने की क्या जरूरत थी इसमें? कान बजा रहे। फ्लीट भैया अमंग अस की लिव स्ट्रीम करो ना पीएलएस। अर्जी मैं ना तुम्हें अलग से मारूंगा भाई गुड। भाई मैं आपको जीटीआर गिफ्ट करूंगा, टेंशन मत लो। ये लो भैया मेरी तरफ मेरा से भाई। गिफ्ट चुंबन का चिन्ह लव- चुंबन का चिन्ह 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 भाई तुम्हें नहीं चुंबन का लगता कभी चिन्ह कभार तुम लोग चुंबन का 40 चिन्ह रुपए में मेरे से चुंबन थोड़ी का ज्यादा चिन्ह मस्ती ले चुंबन लेते का हो? चिन्ह चुंबन का चिन्ह हैं? चुंबन का चिन्ह चुंबन का चिन्ह नहीं। चुंबन का चिन्ह। नहीं तुम लोग सही बताओ, तुम्हें लगता नहीं कभी कभार कि तुम 40 रुपए में मेरे से कुछ ज्यादा ही मस्ती ले लेते हो? हेलो फ्लीट भैया, बिग फैन, लव यू। ब्रूम गॉड लाइक आउट हो गई है, शिट ब्रो। भैया लव यू जगत भैया, बेशरम आदमी भाई। भैया आपकी वीडियो गेमिंग पर ट्रेंडिंग 3 पर है, लव यू। आज वाली कल वाली अंशुबिस्ट या फिर नॉट गेमर फ्लीट, चेक करते हैं आज। अंशुबिस्ट वाली, हाँ यार नॉट गेमर फ्लीट की वीडियोस भी ट्रेंडिंग चले जाए, क्या मज़ा नहीं आ जाएगा? अबे यार डोंट टेल मी यार, नहीं यार। मेरा अकाउंट कनेक्टेड है एंड एमएसजी भी किया है ग्रिन। यार ये भी करने वाला था, यही सोचा था मैंने कल की वीडियो। अच्छा शिट यार। भाई आपका सीपीएस कितना हटा है भाई माइनक्राफ्ट में? बस साथ में बैठने में यही फन है कि मैं ऐसे जोक मार सकता हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे बट हम दोनों को कैसे हो समझ में राज आएंगे। मिस्त्री? एक दिन जरूर खेलूंगा आपके साथ, याद रखना बस मेरा नाम। भले Yes. हाय वाइवर लो सब पता है मुझे। हुए 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 मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा चुंबन का चिन्ह मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा। हुआ कितना अच्छा लग रहा था भाई, तुम बदतमीजी कर लो यार। ओ ये हर्षी को देखना है, वो देख। और अब ये कान में बजेगा मेरे आधे घंटे तक, पता तेरे को? मेंढक का चेहरा मेंढक का चेहरा मेंढक का चेहरा है क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। 40 रुपए में हो रहा है अभी। एक और देखती हूँ, एक और यार मेरे को कुछ सेटिंग देखनी पड़ेगी जिससे 40 रुपए वाली सुपर चैट ना पड़े। ये बंदी 40 रुपए वाली सुपर चैट ना पड़े भाई। करेक्ट क्या 40 कर दूंगा, 41 मेरी रुपीस। सुपर चैट मत पढ़ना बैंक, मजा आ जाएगा। ब्रो मेढक का चेहरा 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 यार मेढक हर्षी का यार, चेहरा भाई मेढक का गॉड कह चेहरा। रहा हूँ, तुम्हारे इतने डंडे पड़ने चाहिए ना भाई। यहाँ कैसे आई है वो? क्या तेरे को भी आई? मेढक का मेरे चेहरा को भी मेढक का कान चेहरा में। मेढक का चेहरा 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 भगवान कसम कह रहा हूँ, मेरे ना डांस कर सकते हैं। मेरे सारे दुश्मन ना मेरे ही साथ बैठे का हैं। चेहरा मेढक का चेहरा और सबसे मेढक बड़ा का बेटा चेहरा ये। मेढक का चेहरा 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 मेढक मेरा का पर्स चेहरा आ गया। मेढक का चेहरा। कुकरी चले साले। GTR दिला दूं। जीटीआर मैं दिला दूं तुम्हें होती है। ब्रो। सोलो लेवलिंग देखना 1 जनवरी को। अरे सोलो लेवलिंग पूरी मनहावा हाँ पड़ी है रहा मैंने, हूँ दीदी को मजाक बोलो से हट फ्लीट के। भाई सा मस्ती नहीं। वाह बहुत पसंद आ गई थी मेरे को, रात को लेटे लेटे वही करता रहता, पढ़ते रहता था भाई।
तो मैं सोलो लेवलिंग देखूंगा यार, एनीमे बिल्कुल देखूंगा। वो बहुत अच्छा है ना उसका यार। तूने स्टोरी पता है तेरे को उसकी? क्या क्रेजी स्टोरी है भाई, मतलब सोचा जाए तो। जिसमें बंदा वीक होता है और खुद को ट्रेन करता है ना, वो हाँ स्टोरी वो। हाँ, अरे बट उन लोगों ने जैसे दिखाई है ना वो बहुत कूल लगता है कि मतलब वो छुपा भी रहे उस चीज को कि मैं नहीं हूँ करके। यही तो कूल है। हाँ, सबसे कूल चीज हुई है। कभी यार बुरा भी लगता है उसके लिए कि लोग उसको ऐसे गाली गलौज करके चले जाते हैं। अरे हाँ यार, मेरे को कुछ जैसे बात साइतामा बतानी का थी है। भाई। देव कोई रोनी कुछ बता रहे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताना मत किसी को। यार बता दूंगा मैं तो। यार ये देख लो लो यार, भैया किसी को ऐप बताना हुए मत। है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हुए। वॉइस क्रैक होने लगा। लेकिन अगर ये तुम्हें पता चल गया तो उसके बाद तुम नो टर्निंग बैक है भाई। तेरे लिए बबली आप तेरू सबके लिए मोबाइल व भी तेरी स्माइल। मतलब भाई। देख लो, बताओगे किसी को नहीं ना, पहले बस प्रॉमिस भाई कर यार दो ट्रूथ पिंकी और वाली। डेयर मत बोल देना और उसके बाद पता चला नहीं कोई नहीं चुड़ैल नहीं हमारे नहीं पीछे पड़ गई। ट्रूथ और नहीं डेयर वो नहीं हंसने नहीं वाली। ट्रूथ और नहीं डेयर नहीं नहीं मत करना भाई। भाई, मेरे को नहीं पढ़ना उन सब चक्करों में भाई। वो भाई तूने मैं देखा है वो बैटमैन हॉरर? हूँ। वाईफाई डाल दो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। वो हॉरर मूवी देखी है नेट तूने खत्म वाली? हो गया। कौन सा वाली? यही ये वाली अच्छा जो भेजी थी वो। जिसमें वो हाँ हाँ अरे वो सब होता बोलती है कि इस हाँ। गेम से बाहर निकलने को कोई रास्ता है, वो भाई नहीं बोलती है नहीं नहीं नहीं। मौत। नहीं भाई, मुझे घर में अकेले नहीं 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 भाई। अरे हाँ, मैं बता रहा था ना फ्लीट भाई, सुनो, मैं बैटमैन हूँ। हॉरर से दूर यार। रुक जा, क्या बोल रहा है? मैं बैटमैन तूने हूँ क्या भाई, बोला? किसी को बताना मत। रुक जा, एक बार देव की भी आवाज आ जाए ना। देव लगाइयो कान में। देव ने सुना ही नहीं, तूने तो बोला। सुना नहीं क्या देव ने? अब सुनेगा देव, कान में लगा वो लो। मेरी एआई आ रही है जवाब आवाज? देगी। अभी भी लैग हो रहा है। आवाज आ रही है? बोलना कुछ रोनी। मैं बैटमैन हूँ भाई। सुन लिया? काट के। काट के ज्वाइन कर दोबारा। अब तो अच्छा नेट लगा दिया तेरा मैंने। तेरा फोन लग रहा है अच्छे नेट का आदी नहीं है। अब आवाज आ रही, बोलियो कुछ। व्यू 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 देव व्यू हेलो व्यू 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 व्यू। भाई। ये क्या मैं है ऐसी बैटमैन हूँ। यार? आ रही है आवाज? आ रही है। क्या बोला इसने? क्या बोल रहा है? मैं ब्रो बैटमैन हूँ भाई। अकाउंट लिंक है मजेदार ब्रो था ना। ने ब्रोम को अबे पता बोला। नहीं आधे घंटे से बोल रहा है मैं फैट मैन हूँ, मैं फैट मैन हूँ। अरे बैटमैन बोल रहा हूँ। अरे यार, भाई there is बैटमैन no बोल रहा हूँ going मैं। back मोए यार। मोए 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 मोए। क्या नाच रहे हैं। जी यार, क्या कर रहे हो? देव ऐसे लग रहा है। रोनी भाई यार प्लीज यार ऐसे जोक मत मारा करो यार। रोनी भाई तुम्हारे लिए तो है डांस। भाई लव यू भाई। जो जो वाली मीम देखी जब बैटमैन ने कुत्ते को बनाने कॉस्ट्यूम। चाहिए यार। रोनी भाई फनी तो है। ब्रो न्यू अरे यार। स्पोर्ट्स कार कब ले रहे हो और कौन सी ले रहे हो? ब्रो अभी तो पैसे नहीं है, तो लेट्स होप थोड़े पैसे वैसे जमा हो जाए तो ले लेंगे। और कौन सी लेंगे वो तुम्हें पता चलेगा। और स्पोर्ट्स नहीं, सुपर लेंगे। अरे देव भाई की जमीन बेच दो कोई सी। हैं? देव भाई की कोई सी अब जमीन खुद बेच दो। किराए में रह रहे हो। बट रोनी की तो है ना। भाई मजाक कर रहा हूँ बाबा। ब्रो न्यू इसका स्पोर्ट्स इसका कार एक कब ले एकड़ रहे का हो? कोटी वाला है भाई। हाँ, मैं तभी तो आता। एक एकड़ के खेत में बिल्कुल सेंटर में घर बना है ब्रो इसका, जैसे वो वेदरिंग करेज द विद यू काउंटली योर डॉग नेम में होता देखी है। क्या नीला दिल नीला दिल तो इसके नीला मम्मी दिल। पापा और ये कुत्ता है वो। निवरिया पत्थर लौटा दो। पत्थर आराम से भाई आराम से। बाबा ये स्प्रे से दर्द खत्म होता है तो ये अगर मैं डायरेक्ट गले में मार दूं तो। फ्रीड मैन लगता है सूर्यवंशी वाली खीर खा। अबे यार। भाई रोनी की टुस्सी में सुतली बम डाल दो। ये क्या है भाई? सुपर चैट करके क्यों बोल रहे हो भाई? लेकिन ये भाई रोनी के टुस्सी में सुतली बम डाली। अबे वो देख, वो बोल भी रही है, पढ़ के बता रही हो। ब्रोम अकाउंट लिंक है। ब्रोम रोनी ब्रोम को बोला। ओके डन डन डन। सुधनवरज मैं करता हूँ ब्रो इसका इंतजाम, ठीक है? अर्ची एक बार देख हाँ लेना। ठीक है ठीक है। ब्रो वेदरिंग विद यू
एंड योर नेम देखी क्या? वेदरिंग विद यू एंड योर नेम, नहीं 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 नहीं, ये नहीं देखी मैंने यार। गाइस तो जितने लोग ही देख रहे हैं, 1800 लोग देख रहे हैं, मुझे बस ये जानना है, ठीक है, कि एग्जैक्टली बताना मेरे को, ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो। यार मैंने एक बहुत पहले, आज से 4 या 5 साल पहले मैंने एक मूवी देखी, 5 साल भी नहीं, एक्चुअली 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, और अब मुझे वो मिल नहीं रही है। तेरे को भी पता होगा, तू भी बताना। तो आज से 6-7 साल पहले मैंने एक हॉरर मूवी देखी थी, और वो मुझे मिल नहीं रही है। तो मेरे को बताओ, अगर तुम लोगों को उसका नाम पता हो। मेरे को उसका नाम नहीं पता, मेरे को उसकी स्टोरी आज भी याद है दिमाग में। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ दोस्त लोग एक घर में जाते हैं, और वो घर हॉन्टेड होता है। उस घर में अजीबोगरीब भूत टाइप के होते हैं, वो उनको दिख रहे होते हैं, और वो डर रहे होते हैं उनसे, वो उनकी तरफ को आ रहे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और वो ऐसा होता है, उनके मुंह सिले होते हैं, कान सिले होते हैं, मतलब बहुत ही अजीब सा होता है, बिल्कुल पपेट जैसे लगते हैं वो, लेकिन भूत होते हैं। तो वो उनकी तरफ को आ रहे होते हैं पूरे टाइम, ठीक है, हु करके, और वो लोग भाग रहे होते हैं पूरे टाइम। फिर उनको लास्ट में एक भूत दिखता है, बट ठीक है, एक भूत बस, और वो इंसान जैसा होता है थोड़ा, लेकिन तो वो उनको एक जगह SMP के भगा भी के ले आएगा जाता है मेरी उस घर नेम से। आई 3 साल एस मेंबर एच बहुत मिस करते एच फ्लीट SMP। 30 साल से मेंबर है, फ्लीट एसएमपी बहुत मिस करते हैं। अनुपम जी, फ्लीट एसएमपी बहुत जल्दी आएगी, एक बार गला सही हो जान दो। तुम्हारा भाई लाइन लगा देगा तुम्हारे लिए फ्लीट एसएमपी की, हफ्ते का एक एपिसोड आएगा भाई। फिर ज़्यादा बोल दिया, बट ठीक है, ट्राई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और देव जो पैजामा पहनता है वो सलवार ही होती। सॉरी। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें भूत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उनको एक भूत दिखता है जो उनको बोलता है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। एक बंकर जैसा होता है, वो बोलता है अगर तुम्हें उन भूतों से बचना है तो यहाँ आओ, यहाँ आओ। और वो उसके अंदर चले जाते हैं, और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि क्या हो रहा है। हर जगह सामान पड़ा हुआ है, कैसा, डॉले बनी हुई है, मतलब समझ रहा है, जानवरों की, जानवरों को डॉल बना रखा है, जैसा होता नहीं वो डेड एनिमल्स, और उन सबको वो डॉल बना देते हैं डाल के, सामान भूसा वूसा भर के। तो वो और भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसी डॉल बनाया होता है। और लास्ट में पता चलता है कि वो जो भूत थे वो उनको बता रहे होते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वो बचा रहे होते हैं उनको, और जो बंदा उनको अंदर जाने के लिए बोलता है वो असली भूत होता है, जिसने उन सबको जिंदा पपेट बना दिया होता है। वो बंदे होते हैं एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 2 के भागे हुए बंदे, जिनको वो शेल्टर दे रहा होता है, बट वो एक्चुअल में शेल्टर में उनको मार देता है। तो वो इतने तो वो इतना इविल चीज होती है, समझ रहे हो, इतना इविल होता है वो बंदा। अभी जब देव, अभी रात को देखो 11 बज चुके हैं रात को, जब अभी देव 12-1 बजे जाएगा घर को अपने, तो आवाज आएगी। मैं तो अपने कमरे में ही हूँ, मैं तो सो जाऊंगा, मैं तो सो जाऊंगा। देव जब घर जाएगा फिर आवाज आएगी। नहीं भाई नहीं। तुमने वो नहीं बताई ना हॉरर स्टोरी किसी को? लोग बोले 13 घोस्ट है इसका नाम। भाई तुम लोगों ने देखी हुई है यार, बताओ। मेरे को तो लगा इतनी हॉरर मूवी देख कैसे लेते हैं? मैं तो नहीं यही है देख शायद पाती। 13 घोस्ट। को चेक करता हूँ मैं, मेरे को पता चल जाएगा। आज तक की सबसे हॉरर मूवी कौन सी देखी है? IMDb रेटिंग तो बहुत गंदी है इसकी। नहीं यार, बट एनाबेल तो हॉरर थोड़ी है। 87% पीपल लाइक दिस। मतलब मैं तो वो देखती थी, वो डिस्कवरी पे आता था ना, द हॉन्टेड करके। अरे अरे वो बड़ा भाई, खतरा, वो उससे डरावना कुछ नहीं है भाई। भाई तो इससे वही डरावना देखती थी कुछ रात नहीं को, है बोलने वालों के लिए। मैं बताता हूँ रात को 10 बजे। भाई, फिर कोई है देखो, वो सब देखो भाई। वो देखो एक ना भाई। उसमें एपिसोड आया तो किसी को याद है, टैटू वाला होता था बाबा बस। भैया कभी जलंधर माँ मीट अप रख लो चैट रहा है में तू? यार कोई बढ़िया बढ़िया हॉरर मूवी बताओ, देखेंगे अरे यार। किसी ने उसी का कोई फियर फाइल्स देखा किसी ने? ब्रो वी वांट फ्लीट यार SMP। उसमें एक मेढक का एपिसोड आया था चेहरा, बड़ा मेढक डरावना, का उसमें चेहरा, टैटू मेढक का होता चेहरा, है, टैटू मेढक का लड़की करा चेहरा, लेती है, मेढक का चेहरा, उसके मेढक पीछे का आत्मा पड़ चेहरा, जाती है उस मेढक का टैटू से। चेहरा, मेढक का चेहरा, भाई बंदर का पक्का चेहरा, 13 बंदर का घोस्ट ही है चेहरा, ना? बंदर का चेहरा, बंदर का चेहरा। वेरोनिका। वेरोनिका तो बहुत डरावनी है। एक सबरीना और एक वेरोनिका। 13 घोस्ट देखूंगी यार, सुनने में तो अच्छी लग रही है मूवी। यार नहीं ये बोल यार, तो ये रही नहीं है 13 यार। घोस्ट। गाइस 13 घोस्ट नहीं है, 13 घोस्ट नहीं है यार वो। मैंने स्टोरी बताई ना तुम्हें, इसकी स्टोरी बहुत अलग है। यार कोई बोल रहा है लाल इश्क देखो। कैस्पर हो गया यार, मूवी का नाम कैस्पर है। ये आया कैस्पर वाला।
वो भी तो हॉरर मूवी है। कैस्पर को देख के जो डर गया भाई, हो गया उसका। एक आहट भी तो आता था पहले। भाई चाचा जी ना को ना, गजे 13 का गोश पन नहीं है, खिला दो। 13 गोश नहीं है। भाई एक मेरे को याद है, मैंने देखा गुलमोहर के पेड़ के नीचे किसी की वो होती है। अबे तू चुप रहता भाई। ये बातें अभी अवॉइड करना। फ्लीट भाई को डर लग रहा है। मेरे को नहीं, इसको लग रहा है बगल में। ये बातें अवॉइड करते ना। ये इसको घर डाल। देख रहे हो यार तुम्हें। यार ये देख भाई, नहीं है यार। रात को ना अकेले गुलमोहर के पेड़ के नीचे से मत निकलना। हाँ वो क्या होता है? अरे गुलमोहर का पेड़ होता है। यही रास्ते में पड़ता है तुम्हारे। अभी तुम यहाँ से निकलोगे तो ऐसी यार रास्ते मत में जो करो पेड़ यार, तुम लोगों को पड़ेंगे। पता है ना मेरे को कितना डर लगता है इन सब चीजों से, क्यों कर रहे हो यार? शुरू किसने करा? मैं तो स्टोरी पूछ रहा था लोगों से यार। भाई मुझे तो घर जाना है अकेले। MITSURI enter the chat. भाई तू ध्यान से जाया कर घर। अबे ये वाला गद्दा उठा के नीचे सर्दियों का फेंक दूंगा तो टाइम इसमें है। सो जाना, मैं उसमें सो जाऊंगा। देख लो देव यार, सर्दियों का टाइम है, थोड़ा कोहरा हो रहा होता है वरना ना। यही सो जाइए। स्कूटी की डिक्की खोल के चेक कर लियो, कभी कुछ पड़ा ना हो डिक्की में। हाँ। अरे बाबा सोच रात को पूरा कोहरा हो रहा है, ठीक है, पूरा कोहरा हो रहा है रात को, और देव 10 की स्पीड में चला रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। हाँ। और सोच कोहरे से एकदम से ऐसे हाथ निकले और देव का गला पकड़ ले। ओ भाई नहीं नहीं, सोचो सोचो, देव ऐसे बैठा हुआ है, आराम से चला रहा है गाना गा रहा है। एक्सॉर्सिज्म भी नहीं है। और जो मेरे वहाँ का पूल है वो तो हॉन्टेड है ही। अरे बाबा जिसको पता और नहीं पीछे है, से जिस पुल के साइड में रहता है वो भैया एक्चुअली कल हॉन्टेड एग्जाम बोलते है, हैं। बेस्ट विशेस दे दो। भैया कभी जलंधर में मीटअप रख लो प्लीज, डन है। एक बार तबीयत ठीक होने दो, थोड़ा निकलूंगा ना लम्मू तब, भैया कैसे हो? खिल खास करके सुपर कार ले लेंगे तब। भाई देव और मैं भाई हर जगह, ये देव बैठेगा ना बगल में। अरे कपड़ा भी मारेगा, देव को प्यार से बोलो तो सही। वो ये ना, मैं ड्राइविंग क्या कह रहा है? एक मिनट, क्या कुछ बोल रहा देव? क्या बोला देव? चला ड्राइविंग चलाएगा? हाँ। तुम सुपर कार ले रहे हो ना? हाँ सुपर कार ले रहे हो। अरे है ना? मेरे लाइसेंस में लिखा है ओनली फॉर सुपर कार्स। हाँ मेरे में भी यही लिखा था भाई। अरे फ्लीट भाई मैं भूल ही रहा था लाइसेंस। मैं समझ रहा हूँ वो कौन सा वाला इमेजिनरी लाइसेंस ना? मेरा लाइसेंस तो सिर्फ सुपर कार पे अगर ही कोई भी होता है, और पुलिस वाला बंदा ये देख रहा है हल्द्वानी का, तो ये बंदा जब भी तुम्हें स्कूटी चलाते हुए दिख जाए, समझ जाना इसके पास ना लाइसेंस है, ना इसके पास LMB का लाइसेंस है भाई, ना इसके पास अपनी स्कूटी का लाइसेंस है, ना बाइक का लाइसेंस है। नहीं। जहाँ भी दिखे ये आदमी, रुक जाओ एक मिनट, अरे फोन करवा दियो भाई देव। हल्द्वानी में जिसको भी ये आदमी दिखे उसको पकड़ लेना, इसका 10,000 का चालान काटो तुम। अरे 10,000 क्यों कराना भाई, कंप्लेंट करो 20,000 का ऐसे होगा। पकड़ेंगे मुझे ऐसे करके। नहीं देव को बताएंगे असली CPM क्या होता है फिर। भाई पता पंचक्की में खड़े हैं। देव भाई कॉल कर रहा है, देव भाई कह रहा है फ्लीट भाई कुछ हो सकता है क्या? ऐसे हमने गुत्ती रखी है। फ्लीट भाई कुछ हो सकता है? फ्लीट भाई मुझे कैप्चर कर लिया फ्लीट भाई, कुछ हो सकता है क्या? अबे देव भाई सोचो, तुम घर पे जा रहे हो अकेले और तुम्हें पीछे से आवाज आती है, मेरे ढोलना नहीं भाई नहीं, मेरे प्यार, और नहीं भाई मैं घर में अकेला हूँ, समझो भाई बात को मेरी। अरे कोई नहीं, पीछे से नहीं भाई सोच देव स्कूटी से जा रहा है और इसके कान पे आवाज आती है, कोई पीछे से बैठ के बोल रहा है, और हवा फील होती है, कोई कान इसके पे स्कूटी बोलने के की। पीछे बैठ के ही बोल रहा है, अरे मैं समझो मेरे ढोलना। नहीं यार। और सुन देव, तेरे को पायल की आवाज भी आ रही है, लेकिन तेरी स्कूटी 50 की स्पीड पे है। हाँ और एकदम धीरे धीरे आवाज आ रही है, छन छन। सोच तेरे को हवा की आवाज ही नहीं आ रही है, और तेरे को आवाज कैसी आ रही है? ऐसी ये पहले अपना पेट चेक करेगा भाई, कहाँ से आवाज आ रही है। देखो भाई मेरा रूम सबसे बाहर है। वो टुम्बड़ हो सकती है, टुम्बड़ हो सकती नहीं, टुम्बड़ नहीं, तुम्बाड़ तो वो तो है। हाँ वो तो देखी है मैंने, बट वो अबे नहीं है। हॉरर यार मेरे को देखनी है, पता नहीं हट गई यार तुम्बाड़ जगह से तो वो वो। ग्रीट पे है ना। हाँ अच्छी मूवी यार, बहुत लो बजट में बनी है बट बहुत तगड़ी। यार फैज़्मोफोबिया खेल सकते हैं। यार मेरा मन बहुत करता है फैज़्मोफोबिया खेलने का। ब्रो SPYX फैमिली देखो। यार मेरे को अमंग अस VR खेलनी है यार। फैज़्मोफोबिया यार हाँ जी, VR में होता है फैज़्मोफोबिया भाई, लेकिन मैं एक बहुत तगड़ी क्लास ले रहा हूँ जिसमें मेरे को डर लगना बंद हो जाएगा बोल रहे हैं। हाँ उसके बाद में तुम्हें हॉरर गेम खेल के दिखाऊंगा स्ट्रेट फेस के साथ, ऐसे खेल लूंगा। गेम छोड़ो, मूवी देखना हॉरर। कौन सी क्लास ले रहे हो मुझे बताओ। कौन सी क्लास ले रहे हो? अब मेरे को एक बार काम करेगी तो बताऊंगा तेरे को, ठीक है? बताना पक्का यार, अगर काम करेगी तो।
भैया कल एग्जाम में बेस्ट विशेस दे दो. ऑल द बेस्ट गीतू. आई होप यू परफॉर्म द बेस्ट इन एग्जाम. देव भाई सोच, तू रात को टॉयलेट करने उठा तो अपनी खिड़की से बालकनी से बाहर देख रहा है और रॉनी खड़ा है नंगा. वो वाला, वो कौन सा है, वो कौन सी लेडी थी वो? साइबेरियन जंपिंग जैक कर रही है वहाँ. भाई अब कैसे मिटाऊं मन से इसको, मन से कैसे हटाऊं भाई. मैंने नंगा रॉनी जंपिंग जैक करते हुए सोच लिया भाई. शिट ब्रो. नहीं यार. बहुत ही गंदा. अफलीट भाई दिन रात वही सोचेंगे. इतना फालतू टाइम नहीं. चेक डेड साइलेंस वो चेक करता हूँ. अरुंधति क्या है? अरे मेरी मोमबत्ती याद नहीं है, वो बोलता था अरुंधति, वो एक जो महल में होती है, रानी होती है, वो एक, क्या समझाऊं यार मैं, उसकी समाधि बना देते हैं महल के अंदर. बड़ी मस्त मूवी है भाई. बॉर्डर ना का देख के डेड साइलेंस भी नहीं. उसका नाम, हाँ उसका नाम अरुंधति है मूवी का नाम. द कॉन्जरिंग भी मस्त है. फियर फाइल्स में कॉन्जरिंग देखो, तो अच्छी है. फियर फाइल्स में देखो तब 50 नहीं. ओह, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है यार. नहीं अभी नहीं. मत करो. वो पता है क्या होता है, तम पिशाच क्या होता है? Check dead रहने दो, silence. छोड़ो. वो एक सिद्धि होती है, उसको लेके ना. चुप हो जा भाई. छोड़ो. अबे भाई फ्लीट मैंने सर्च कर दी भाई. करो दिखाओ. मत करो यार. भैया, मेरी अरे हेल्प नहीं, कर ये दो. देखते नहीं है PLZ फ्लीट भाई, सेट. देखते हाँ, नहीं है. मत करो. कान में आके फूकेगी ना जब वो. जेन्युइनली मत करो, मतलब साले मत. नहीं इमेजेस देख रहा हूँ मैं तो. मत करो, कुछ भाई, नहीं, मत करो, ये सर्च मत भाई करो. तुम तो रूम में हो, मन ने तो जाना है. ये इसने जो डराया है ना देव ने, यार मत अभी करो. मैं Horror बोल story सकता देव था यार, की. मेरे पास इतनी तगड़ी स्टोरीज है. देव की हॉरर स्टोरीज स्ट्रेंजर थिंग्स तो पूरा देखा हमने. हाँ, क्या स्ट्रेंजर मैं सुनाऊं क्या डरावनी स्टोरी रियल वाली? द नन 2 देखो. हाँ देखी गेम. यार चैट में सबको एक इतना ज्यादा रिंगटोन कैसे बना पसंद दो. बाय द वे आई एम हो गया लविंग है. माइनक्राफ्ट बट वाले वीडियो. यू कैन ट्राई माइनक्राफ्ट मैनहंट बट विद चैलेंज. ओह गुड वन ब्रो. सुदन वरज वी कैन एक्चुअली डू दैट. एक रिंगटोन बना दो, काफी टाइम हो गया है. ठीक है. अनुपम अग्रवाल अपना फोन उठाओ भाई. कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अनुपम अग्रवाल अपना फोन उठाओ भाई. कहाँ हो? By the way, I am loving Minecraft. तुमने But कालो one देखी है? video, you can try कौन सी? Minecraft Manhunt कालो, but with कालो. Cholon. हाँ सुना है सुना मैंने. बहुत है. क्या कालो. देखी है मैंने. हाँ देखी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत वो ये वैसे. अटलांटा से लाइव हो रहा है. हाँ ड्रीम हैक हो रहा है वहाँ. भाई वाओ. और वहां पर हो रहा है मैच भाई यार. रानीखेत भी ऐसा ही है. हाँ बहुत बढ़िया. ऐसी बिल्डिंग है वहाँ. इससे कोई रानी ये के थोड़ा छूट इंसाइडर गया हो जोक यार. है. बाबा देव तुम्हें, रॉनी भाई तुम्हें रानीखेत की स्टोरी नहीं बताओगी ना इसकी. अरे पता मेरे को भाई, इसकी बाबा वो इसकी थी बंदी ना है अभी. वहाँ. है इसकी बंदी है रानीखेत में भाई. तेरी ये दादी इसको की बस दत्नी थी अभी रानीखेत में. इसको बस रानीखेत. अबे तू क्या बातें करता है भाई स्ट्रीम पे. दीपांकर भाई इसने बताया था. तो क्यों बोल रहा है? दीपांकर. ओ अच्छा, बताया नहीं था क्या? कर, तेरे को ही जाना है घर. भाई सही में तेरी गर्लफ्रेंड रहती थी देव? नहीं भाई, मैं भी तो पहली बार सुन रहा हूँ. मिलने भी नहीं हुए यार. अरे ये जितना डेस्परेट रहता है ना रानीखेत के लिए, भाई मुझे तो बस कहता लगता है मुझे है इसकी रानीखेत छोड़ दो गर्लफ्रेंड है. बस. हाँ, बस रानीखेत छोड़ दो भाई. हाँ. नहीं ये इसको कुछ बता भी दे. भेजो, कोई भी बता दे रील भाई, बता भेजो, दे. ये ऐसे भाई, बोलता है रानीखेत ऐसा ही है. देखो रानीखेत का पानी पीती नहीं होता. तू भागता क्यों है उधर फिर? वाइटलिटी का मैच हो रहा है. ओ लेट्स वाइटलिटी का मैच हो रहा है. I mean, look, realistically, भाई मुझे चैट में इंडिया का फ्लैग चाहिए जल्दी से, फटाफट इंडिया के फ्लैग चढ़ा दो. चलो. और कोई सुपर चैट भी करो इंडिया का फ्लैग बना के, ताकि वो एआई वाली इंडिया का फ्लैग बोले. चलो. if you find yourself down 0-1, realistically, this is
is it. Like you almost have to win out just to find yourself in a little bit of a closer situation to be in that single elimination bracket. वो ऐसे बोलती है, मेंढक का चेहरा, मेंढक का चेहरा, मेंढक का चेहरा, मेंढक का चेहरा, सुअर का चेहरा, रोनी का चेहरा, मेंढक का चेहरा. Definitely suffered some difficulties to get here, but not necessarily when he came down to stage 4. ये monster भी है. ओ भाई इंडिया का फ्लैग नहीं आ रहा चैट में. वाओ. इंडिया 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 लिख तो रहे लोग. नहीं फ्लैग अगर वो बना रहे हैं ना तो IN लिखा जा रहा है. गंजा फ्लीट. गलत बात है भाई. गंजा फ्लीट हो. वाला बेस्ट था जो मैंने बताया. भाई सोचो लास्ट में गॉड लाइक वर्सेस वाइटैलिटी हो गया. फिर गॉड लाइक बाहर हो गई. अरे यार वो लोअर ब्रैकेट में थी ना तो बाहर हो गई. लोअर ब्रैकेट के मैच अलग से चल रहे थे. वो बोल रहे कि जो मेन स्टेज है उस पे अलग मैच चल रहे हैं और लोअर ब्रैकेट के अलग मैच चल रहे हैं. तो अब खाली वाइटैलिटी है गेम में. तो लेट्स गो गाइस. वाइटैलिटी बड़े वाले पे ना. वाइटैलिटी लेट्स गो भाई. जीतेगी इंडिया की टीम जीतेगी गाइस. लेट्स गो इंडिया 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 इंडिया. यार दिखाओ ना इंडियन प्लेयर्स भी दिखाओ भाई. भाई बंदे भयंकर इमोजी से बना दे रहे इंडिया के फ्लैग. एक बार इंडिया का फ्लैग बनाओ फिर स्पेस देख के बनाओ. मुझे तो इमोजीज में फ्लैग ही नहीं दिख रहा. हाँ और वो इन लिखा जा रहा है. Region letter I, region letter N, 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 region letter I, region letter देखो लोग कितने क्रिएटिव तरीके से लिख रहे हैं. देख रहे हो. हाँ. दिस इज इंडिया. तेरा वीक हो पड़ी. यार कहीं भी मतलब किसी भी कंट्री का फ्लैग नहीं दिख रहा है मुझे इमोजीज में. Region letter I, region letter N, 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 region letter I, region letter N. यार ये बंदे की जो भी कमेंट्री कर रहा है इसकी शर्ट कितनी प्यारी लग रही है. और टी-शर्ट ब्लैक वाला ब्लैक वाली. PvP God defeated PvP level VORNS region letter I, region letter N, 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 region letter I, region letter N. ओ भाई ये देखो मीनो जोकोस बर्न्स वीगस और Region letter I, region letter N, 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 region letter. अरे ठीक है भाई यार रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाई. Letter N, region letter I, region letter N, region letter I, region letter N, region letter I, region letter N, region letter I. On the screen, as a lot of them are looking pretty locked in, getting themselves set up and ready to go for match number 3 on the main stage. बहुत ही आरामी लोग हैं भाई. Quite a few other matches. जब इनको दिख जाता है ना कि हो रहा है ये और करते हैं. वो भाई वो इंडिया का फ्लैग नहीं आ रहा वो बार बार रीजन लेटर आए रीजन लेटर है बोले जा रही हो. भाई ब्रो कल फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है मैथ्स का भाई. ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त ऑल द बेस्ट. ये सारे सेम ही डिवाइस से खेल रहे हैं ना. कोड दिखा दो वेट नहीं हो रहा है. चलो ठीक है वाइटैलिटी और इसके गेम के बाद कोड दिखा दूंगा. ठीक है डन अनाउंस्ड. वाइटैलिटी वर्सेस एलटी हो रहा है. नहीं रुक जाओ कौन सा हो रहा है वाइटैलिटी और locked and loaded and prepared for match number 3 because
I mean, sometimes या you need a कोई little तकिया bit of a लेके cool नहीं down आया क्या? after a match, whether आया that's a आया mental आया। reset from a loss or whatever it is, right, Proper? Yeah, I ये mean, फ्लाइट you में also तकिए kind लेके of आऊंगे, किसी ने बोला नहीं होगा? two different अरे sides, फ्लाइट right? में It's क्या a आएंगे, यहीं very से मिली difficult होगी ना one भाई? to look. You want to be able to अरे just नहीं pull नहीं, कुछ things ऐसे भी off, होता है ना कि try अपना to जो go जिस back पे रख के and खेलते हैं वही लेके जाते all हैं। the VOD in the world, but होता try है to ऐसा? understand तुझे what कैसे went पता? wrong, अपडेट because I होता mean, है। TLE, they lost to Standpoint. Vitality, they ended up losing to Q9. देखो Those सबके are two पिलो कवर very जुड़े tough हैं। Region matchups, letter no I, matter the way region you letter spin N, it, region regardless of letter the I, match, there region has to letter be N, immediate region lessons letter that can I, be taken region away, letter N, whether that region is letter going to I, be the region lessons letter for N, a region Pikmin letter Beetle I, process region or letter just N, overall region letter gameplay I, and region teamwork. letter We'll N, never know. region letter I, region Yeah, I letter think N, we're region starting to see letter some I, of region those letter N, region TLE letter players I, starting to region filter letter out onto N, the region stage. We letter wait for I, them region to letter get N, region themselves letter I, region letter N, situated region up here letter on I, stage. region letter N. Obviously, more pillows. मैं कह रहा हूँ भाई हम भी This चलते is हैं like my यार। favorite thing. I have never seen so much comfort involved in a LAN. Yeah, you can see them all just walking to the stage with a भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हमें ले जाओ चारों को। भैया कैसा लगा? बाय द वे एआई खराब हो जीत के गया, वो आएंगे। बोल नहीं कितने पा का रहा। है इवेंट? हाँ कितने का उधर इवेंट है? उधर अभी बोलिए। Alright. नहीं मतलब बुला लो, खाली देखने के लिए बुला लो। वहाँ हाँ हमें चलेगा। चलेगा चलेगा। भाई ये तो रॉनी हंस रहा है, इसको ले जाना। भाई मैं देव- खेलने और के देव लिए के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, मेरे पास है मैंने अभी बनवाया। और हर्षी को ले जा नहीं सकता मैं, तो मेरे को ही बुला लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। I'd be rolling up with like a snuggie, maybe some joggers on or some sweatpants. चल I'm ready ठीक to go. Make myself feel at home. ये बना लेगा बोल रहा है पासपोर्ट, तो अगर अरे मेरे पास पड़ा है। मेरे पास भी है। हाँ 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 रॉनी को मतलब लंबी काल में फ्लाइट बनवा से डर। लूंगा। अच्छा देखो सबको S23 अल्ट्रा दे रखा है। हाँ मुझे भी दे देना एक But everybody पिंक at home as पिंक well. We're वाइट waiting for team ब्लैक इंडिया 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 मेरे इंडिया को भी विल black विन, color इंडिया का। इंडिया Black हरा वाला दे। पीछे से। हाँ I've been वही asking वाला। you for every other match. You might as well ask me तुम्हारा now. तो टूट गया Tell us ना। your thoughts on how you think this one's going to क्यों go. टूट गया? सही है। Both teams now having to bounce back from their performances. Which team will take home match number 3? Keep on moving through. उसके बाद आज तक कवर नहीं निकला है भाई। निकालिए एक बार, दिखाइए। A little bit more evenly matched. What are your thoughts on this matchup? I still think that मस्त TLE है यार have वो। the edge over Vitality. Obviously, there is a very small sample. भाई बाइक चला रहा था तो मैं। बताओ। What these individuals, what these teams do look Hello, like on Handi, the buddy. main stage here as far as और international रॉनी की is भाग गई concerned, but गर्लफ्रेंड TLE गर्लफ्रेंड। did play Standpoint considerably भाई गलत close बात है। as far as their opening matchup is concerned. भाई my Vitality search girlfriend is destroyed, my they lost girlfriend by भाई। 3, but they got absolutely भैया worked देव as far भाई as के यार मुंह ये पे वाला काट भी के 2 दिखा दिन दो। तो चलेगा वैसे So कोई if the दिक्कत नहीं veto है। process मैं कवर would लगा lean के रख more towards लूंगी। comfort for TLE, this will बट probably क्या be a 2-0 फोन है victory. ब्रो, लिटरली Okay, भाई। Gil. I think I'd have to agree with that, although on paper बहुत ही we ज़्यादा have मस्त है। not seen necessarily what happened. That's so cute. That's so cute. It seems like the pillow is not the only मजेदार। thing that can be missing, right? Look at that little fella, the little guy over there. That's okay, but so do you know what that is, Gil? That मैं is- जाऊंगा, it's a पासपोर्ट है दो। reversible bullshit, ये so देख that रहे हो? he's happy right now. Yeah. It could be mad later or sad. I'd absolutely love to see that swap at any point भाई whatsoever. एन कार्ड है मेरे पास, चलेगा? Absolutely. इंडिया हैं? इंडिया भारत आर्मी दे। अरे मेरे पास पासपोर्ट है यार मेरे को। भाई ये पहला बंदा है जिसके आधार कार्ड में फोटो एकदम सही आई है। Yeah, I'd love to see something like that. सुअर का चेहरा फिंगर ब्राउन ब्राउन इसका तो देखा था मैंने भी शायद आधार कार्ड। सुअर का चेहरा सुअर का चेहरा सुअर का चेहरा मैं इतना ही बोलूंगा। सुअर का चेहरा ये पहला बंदा है सुअर का चेहरा सुअर जिसके का आधार चेहरा कार्ड में सुअर फोटो का बिल्कुल सही चेहरा आई सुअर का है। चेहरा सुअर का चेहरा फेस किया है That Vitality versus Q9, I'm not too sure if maybe बस it was समझ just the जाओ। fact that Q9 was really good, but the अबे तो Vitality नया showed बनवा some लेना। sort of, light for themselves, like we saw for example with Inco, who lost, yes, but they did not do bad. भाई कब शुरू whatsoever on the होगा? search and destroy, and had some अरे भाई bright तकिया रख देना, moments होने on वाला the hard point and control. प्रैक्टिस यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सबके तकिए सेम ही है। अरे मैं बोल रहा हूँ यार। है ना इनके सेम लग रहे अबे हैं। भाई एक बात बताओ, सुनो 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 हाँ। भाई तुम एक बात बताओ, वो वहाँ पे ले जाने थोड़ा देंगे यार तकिए। सही बात है। तुम क्या डाल के लेके आ रहे हो? तो क्या उन्हें क्या पता, गोली डाल के लेके आए हो तुम, साइड से स्टेरॉइड ले रहे हो। तो वो ले जाने थोड़ा देंगे, तो प्रोटोकॉल है यार। अबे तू साले मार खाएगा अलग। अरे हम लेके जाएंगे फ्लीट भाई, हम मामू टीम से जाएंगे जब हम लेके जाएंगे अपने अपना बाउंड गैंग ऐसे लिखा होगा। अबे तू रहने दे, तू मत ले जाइए, अपना तकिया सो जाएगा तू जाके। ये बेकार बंदा है भाई, ये बिल्कुल ही भैया बेकार हर्षिता बंदा है। दीदी रोनी भैया की मेरे को फ्लैशबैक आ जाते हैं भाई, ये बेकार बंदा है। And we were talking about this during the break हर्षिता too. दीदी It रोनी all भैया की depends सिस on है the क्या? type of player or सभी की players है। that you हाँ have भाई। on your squad, because some of these teams, these players will thrive. They need that added pressure.
you know, they can clutch when it रोनी की भी है, matters. देव And की other भी है. people
who might not have the same level of ये क्या कर रहा? हाँ बोला। बहुत बड़ा फील हो रहा है, बुड्ढा फील हो रहा है यार। बड़ी दीदी बड़ी दीदी है भाई हमारी। This is going to be a really big moment for one of these teams to at least go now 1-1, give themselves a little bit of breathing room, and continue on in the competition. I mean, and this is a story that we will see coming out of the pit. रोनी भैया सुहर पे उड़ट के चले जाएंगे, सुअर का चेहरा top type situation, and we'll really nail down where the storylines are going, which teams are starting. I love you too, funny gamer bro. What other results we get. It's something that we haven't shown too frequently. That bracket when we do I'm excited to check in with everyone before we there's so much action going on here in the FPS booth. Lots for people to keep up with. क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाई इंडिया करना कुछ भी हो जाए. We are with vitality guys, vitality. Alone, we have an entire team of people. Fleet भाई, I'm your biggest fan. Please नाम लेके shout out दे दो. Shout out to your money भाई, love you. रोनी भैया सुअर पे उड़ के चले जाएंगे. इंडिया भारत आर्मी, लेट्स गो. Is obviously shift, so it's time Nitin to go R bhai, back thank you so and check in with much. him. Lamo. Thank you there, friends. Yeah, hey, again, we're through round 1, and already we're having a lot of storylines kind of breathe. The one that I'm really circling on my calendar, which is the calendar date is just for today. Volt looking really, really solid in their first matchup. They were able to take down Exclusive in 2-0 fashion, and it did require a little bit of ice. And I always say you can't just show up. अबे ये क्या स्कोर है? 228-224. You have to be able to clutch up when it matters most. And even though it is just a best of 3 and it's the first match of the day for both those two teams, Volt provided, able to do really nicely in their opening hard point, and then a couple of really icy moments in the search and destroy on Meltdown. A couple of 1v1s, a couple of great sniper moments, definitely some power. Fleet bhai, I am your biggest fan. Please nam leke shout out de do. For you guys at home, because last year Scars was the team from Japan, and they were able to make it into the top 8 through groups, upsetting teams like Q9 back in the day. So there's definitely a lot relying on what they can do moving into the रोनी को ये बंदा ही बहुत अच्छा लग रहा था. They start off really high. Speaking of 1-0 teams, and if you just saw me open है? the lobby stream a second ago, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई इस चीज से. भाई मैंने कब बोला? मेरे को बहुत अच्छा लगा. Yes, LG won their matchup. Yes, बोल रहा था यार, रोनी बोल रहा था, मैंने सुना. यार मेरे को उस बंदे की चेन बढ़िया लग रही है बस. And wouldn't you know it, they are playing each other in this next overall matchup. That you can find that over on the stream, which I believe Infinity is going to be covering. चेन You're खींच not के going to आते हैं miss that इसकी. one. It's a repeat kind Please of. दे दो फ्लिंट भाई. अरे अम्बानी भाई, love you यार. Shout out to you भाई. और अम्बानी भाई को भी shout out. नंगा हो जाऊं मैं. भाई ये मेढक का चेहरा, 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 मेढक का चेहरा वाला बहुत बेकार था नहीं. भाई तुझे शर्म भगवान से डर ले थोड़ा भाई. सब छोड़. क्या सब कर रहे हैं ये लोग? I feel left out. Absolutely. यार मेरे पास वो भी नहीं बची ना यार. वो बची है क्या? We'll have to remedy that because it's not fair that shift विकास थी मेरी विकास. Please DEMDO Fleet ये भाई. देव खा गया होगा. देखो इसकी जेब में वो मिलेगा कचरा विक्स का. Be checking it out as well. There's action that continues on even when we have breaks here on the main stream, whether you're watching that virtually on any of our side streams or just here in person, and it is getting loud over there because we've had some really strong performances. So I would recommend just taking a peek, swinging on by, see what's going on over there. While we are also getting all of our action ready inside of here, you can see a little bit of like pre-game team discussion and hype. I love that you can kind of catch that bonding moment right before the start हो रहा है. team huddle. That is सब हाथ मिला के बैठ चुके हैं भाई. when it comes to ये इटली की टीम है क्या? good vibe overall for the team heading into the next level. कहाँ की टीम है? मैक्सिको की है शायद. मैक्सिकन टीम है. मैक्सिकन है ना? ग्रीन व्हाइट और रेड मैक्सिको ही है ना? हाँ मैक्सिकन है शायद. हाँ मैक्सिको. Hey, no problema, señor. Amigo. At his best possible. Gameplay is something that's so important, and it is even more important as we begin to. जब मैं फ्री फायर मैक्सिको बोलता हूँ, तो बाद में सबसे पहली चीज क्या आती है? Not repeat the map. That's right. This time around, as we see the one and only Apocalypse Arsenal, Hacienda, and Summit.
You why more, you are weak, Anyadeshia. Le Plata और प्लोमो। भाई मेरे पता क्या आता है? टोटल ओवरडोज। ले प्लाता और प्लोमो। कोलंबियन है। ले प्लाता और प्लोमो। Oh, it's actually a raid. मतलब we got baited. Silver I was या so lead? ready for the crossroads and for me to like to push the narrative, just like, well, looking like we're gonna have a crossroads Friday here, but nonetheless, yeah, I'm not surprised to see the firing. भाई टोटल ओवरडोज इतनी बार खेली है ना, इतनी बार कंप्लीट करी है ना, ये गेम की टक्कर नहीं है। There's a lot of questions up in the air. Obviously, for Vitality, your biggest question mark is how do you want to approach an international competition? As you've mostly just been facing and scrimming godlike for the past calendar year. On the other side for TLE, it's pretty much almost like the same boat. What are you going to feel most comfortable on? Look, at this point, if you're playing Call of Duty Mobile since its inception, come on यार, समझाना पड़ता है रोक रोक के. Better hope to see the best out of these two teams once we do get to that map number 2. But the takeoff should be interesting. Again, that was the map 1 for Vitality that they got absolutely bodied on versus Q9. So has to surely be a comfort. भाई मैच स्टार्ट करो भाई. हाँ ना यार भाई, मुझे वाइटैलिटी को जीतते हुए देखना है भाई. मेरे को लग रहा है वार्म अप चल रहा है इनका. उसने UI mo, you are weak. Type combos are about UI done. I think everyone should also be ready भाई to किस्मत go. इतनी खराब हो ना, मैंने पूरा भर के रखा था मेंढक के चेहरे वाला. मेंढक का चेहरा, गॉन. यार कुछ ऐसा होता है कि एक इमोजी को पढ़ने में TTS को 10 मिनट लग जाए. नहीं. हाँ तेरा इमोजी बनाया तो लग सकते. ये बेस्ट था, मजा आ गया यार. एक काप पे चुप हो जाए, इतने बेस्ट पे जोक नहीं था. सॉरी भाई. रोनी भाई तुम जोक की डेप्थ नहीं समझ पाए यार. Yes, I do. That I would absolutely watch, whether it's in lane. अरे अपने पे पड़े जोक की डेप्थ कौन समझता है मेरे भाई. समझा हुआ आदमी भूल जाता है. It's gonna happen eventually. We'll stop the whole show for it and make sure that we can get somebody over there with a camera to witness it. I'm not sure. देख ज्योति पर्चा भी खुश हो गई भाई बिल्कुल. Give like everybody like the perspective. I'll be like the in-game observer for Laser Tag IRL. मुझे वो डॉगी याद. अबे यार वाला. Next match is taking place. So I'll get back to you with an answer on when that occurs. I want chat to tell me who wins that as well. Not only do I want them to tell me who wins this next match, but I want to know if they had to pick, would it be you or Shift that would win? अरे यार ये हेडफोन में बिल्कुल आवाज नहीं जाती होगी. दे दो कोड ब्रदर, कोड आएगा जब ये मैच खत्म हो जाएगा. वाइटैलिटी वर्सेस कौन सी टीम है? मेरे को एक तो टीम का नाम ही नहीं बताया गया. हाँ TLE. तो TLE वर्सेस वाइटैलिटी जब खत्म हो जाएगा ना, जब रिजल्ट आ जाएंगे तब कोड दूंगा. या तो खुशी में दूंगा या फिर साइड होके दूंगा. अरे खुशी में देना यार, क्या बात कर रहे हो. वाइटैलिटी. कम ऑन गाइस, एक टीम बाहर हो चुकी है, दूसरी नहीं होनी चाहिए यार. भाई जेन्युइन यार, मेरे को तो पता ही नहीं था वाइटैलिटी में इंडियन प्लेयर थे पूरे. मजा आ गया. Lammu from Jammu or Kashmir, the live first super chat. Lammu to those. Aryan Khajuriya bhai, thank you so much. Lammu. If you've never played it before, come on by. Test it. You never know. यार ये हेडफोन चाहिए मेरे को, कहाँ से मिलेंगे? अब ये तू ना वही करना, दुबई जा. 1 लाख की एक वो होती है, फ्लाइट होती है जो तेरे को उसके पास ले जाती है. किसके पास? बुर्ज खलीफा के पास से निकालती है बिल्कुल. तो उनके चुरा लेना. अच्छा यही होते हैं. कौन से हेडफोन कह रहा है जो इतने बड़े? हाँ ये बड़े वाले मस्त लग रहे हैं भाई. माइक भी होता है उसमें, पूरे बंद होता है, आवाज ही नहीं आती बाहर की. भाई मैंने लेजेंड ऐसा हटाई और भाई मेरे को लगा मेरे कान फट जाएंगे. ये हेडफोन बहुत तेज आवाज. इनका वो होता है. हाँ. Before we get into match number 3 of the day, any final thoughts before it kicks अच्छा ऐसा off? होता है. अच्छा इनका भी नहीं. हाँ सब ये बेसिकली बाहर के लोग नहीं खरीद सकते. हाँ ये खाली टूर्नामेंट में यूज होंगे. और ऐसी इनके पास वो भी होते हैं, ईयरबड्स वो सब भी होते हैं जो ये खाली टूर्नामेंट में दिखाते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं बोलते लोग. अच्छा हाँ. फिर जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे मान ले BMW की वो होती है M4 GT3 होती है, ठीक है, GT4
GT M4 GTS होती है शायद, नॉट श्योर, याद नहीं आ रहा। GT3 है ना यार? GT3 होती है। हाँ M4 GT3, हाँ M4 GT3 होती है। I'm a car तो जैसे guy. वो होती है ना, तो जैसे वो होती है ना, यू आर अ काई गैर। तो जैसे वो होती है, वो सेल के लिए अपनी होती है बेसिकली, तो खरीदने मतलब होती है, बट वो बेचते नहीं है वैसे नॉर्मली किसी को भी। तो ये वैसे ही होते हैं कि फिर इनके वर्जन बिकते हैं, लेकिन दूसरे जो कॉमर्शियल होते हैं। मतलब ये बेसिकली सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही है। हाँ यार मैं भी तो ले ही सकता हूँ, मैं बोल के। स्टार्ट हो गया गाइस, चलो गाइस एक बार सारे वाइटैलिटी ओपी कर दो, टीवी ओपी कर दो, टीवी ओपी भाई जीत रहे, भाई जीत रहे। प्लीज भाई प्लीज, पहला किल वाइटैलिटी, और 3 किल भाई, पहला भी नहीं 3 किल खोल दिए भाई। और 3 3 कहाँ, लेफ्ट में देख खाली उन्हीं का नाम आ रहा है भाई। अबे यार 5 डायरेक्ट 6 वाला है। लेट्स गो इंडिया, कम ऑन ब्रो। कौन चीज रहा है इतना खतरनाक भाई, 4 किल हो गए उधर उसके बर्न्स के। No path sound. ओ ले गए भाई, 2 नो पाद साउंड। Successful on that interaction. कम ऑन, बहुत बढ़िया। जोकोस भी अच्छा खेल रहा है भाई, जोकोस भी अच्छा खेल रहा है। अच्छा भी स्टार्ट नहीं हुआ यार, स्टार्ट नहीं हो हुआ। गया स्टार्ट तो है टारगेट 250 है भाई। फिर उसके नीचे तो 17 सेकंड मार रहे बोला, वार्म अप हो रहा है। नहीं रे, और भाई नहीं वो कोई शायद कैप्चर कर रहा है क्या? नहीं, हाँ कुछ है मार दिया, देखो वो हट गया उसके ऊपर। You can still see Vitality also getting the rotation over towards you. Those close spawns over on the left side of the minimap are very important and integral if you want to try to get you to be a money hill. अरे कान में बजा दी भाई यार, ये तो जीतने लग गए। व्हाट? आ रही विटालिटी आ रही है, बढ़िया 99 नाइस आ रही है भाई, ऊपर भाई, कम ऑन वाइटैलिटी, Gets inside, finds that kill, and just like that in the Come on, bro, come on. TLH break through the opponent, turns अबे around, यार, finds another kill. Great job down there for Cyrex, who now throws a nade and gets the comfort of the hill. Thanks to his allies who continue to Come on, Vitality. अब एकदम अब उठेगा वाइटैलिटी का, देखना। ओए देव तू नाम मत लेना तुमका। Cyrex trying to push through with his allies. बढ़िया One of बढ़िया। them is down, he pushes forward, takes that kill, goes for the double. हाँ gets तू taken इनका ले। down. TLE स्पोर्ट Vitality still fighting जीतेगी। inside हाँ, of तो that. ये देखो कैसा बंदा है बताओ। अरे वो भाई वो जब भी बोलता है तो दूसरी टीम जीतती, तुम्हें पता नहीं लगेगा। Job with that break. I mean, obviously, he has that big tug of war when it comes down to hard points, अरे specifically वो है for वो, P2 here on काफी takeoff. शगुनी है With वो। those close spawns, you might find yourself in a काली spawn जुबान। trap, but the break percentage is मतलब everything वो for से भाई वो तो TLE. और बुरा That's हुआ। exactly what they did. अरे काली जुबान है, तू बोल रहा है टीएलई जीतेगी तो हार जाएगी ना। Right side of the mini. हाँ TLE अरे ऊपर हो गया, बोल ये देखा, ये बोल रहा है तो हार रहे हैं। You saw previously that Mino टेलिंग यू ब्रो, to watch for that टेलिंग यू भाई, बहुत ही अपशगुनी आदमी है भाई। मैंने बगल में क्यों बैठा रखा है मुझे भी नहीं पता। inside of the current hill. जीतने It लगी means you यार। can start investing some of these TLE operations. हारेगी। Gets answered back with the तूने claw हारेगी of बोल दिया ना। TLE's own. यार उल्टा तो नहीं हो रहा भाई है। होट थोड़े संभाल अपने भाई, Trying to भाई वो keep तो Vitality at bay. 50 पे पहुंच गई भाई, क्या कर रहे हो यार? नेवर गिव अप, नेवर व्हाट। भाई आवाज पहुंचाओ इन पे यार, मारो भाई। वाइटैलिटी कम ऑन ब्रो। यार एक इंडिया की टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है भाई, प्लीज। वाइटैलिटी भाई तो एक किल ले लो बस, एक किल ले लो बस एक किल ले लो भाई, बस एक। यार ले तो रहे, किल काउंटर में आके ना उसमें। नहीं यार नहीं ले, एक किल ले लो बस। अब लिए, अब होगा 40। अबे हाँ बे किल ले रहे बट बढ़ नहीं रहे बे। वो तो आ नहीं रहा भाई, किल हाँ लेफ्ट में देख, लेफ्ट में लिखा आएगा अभी वाइटैलिटी। वो आ रहा है, उनका बढ़ रहा है, इनका बढ़ ही नहीं रहा। वो देख 2 किल ले लिया वाइटैलिटी ने अभी। हाँ 40 हुआ देखा, और जबकि वो देख लेफ्ट में देख किल ही किल है। बड़े जा रहे हैं भाई, बड़े जा रहे हैं। वो बंदे ने तो भाई वो देखो मीनो ने पूरा वो बना दिया, लगा दी भाई। अरे ये राइट में देखो उसके किल जोड़ो एक बार। 15 12 27 27 8 35 35 45 48 58 हो रखे उनके। भाई गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ। कम ऑन, क्या हो रहा है? उनके किल काउंट ज्यादा है बट कम दिखा रहे हैं। कम ऑन वाइटैलिटी ब्रो, वाइटैलिटी 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 का चेहरा, वाइटैलिटी का चेहरा। वाइटैलिटी
वाइटैलिटी वाइटैलिटी वाइटैलिटी भाई देव को चुप कराओ। अबे देव चुप रहा यार तू भाई। वाह दिया पूरा यार उनके किल नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ देखना। ये क्या है ये? वो देखो मारे जा रहे 20-45 भाई कहाँ उनके किल पहुंचे में 45 30 75 तो एटलीस्ट है। अब बढ़ रहे लाइन से जाए क्या हो रहा है? क्राइटेरिया कुछ और तो नहीं किल देखने का चाहिए। अरे भाई अब बढ़ रहे देखो। 20-20-60-70-80 अबे इनके तो 160 किल है ही नहीं। टीएलई क्या है टोटल भी? ये क्या फिर? अरे मेरे ख्याल से किल से डिपेंड नहीं होता, जो आ रहा है नीचे कैप्चर करना ओ होता है। हम लोग गधे हैं भाई, हम लोग गधे हैं। हम सोच रहे वो किल्स है, नहीं वो जिसने जितनी देर तक कैप्चर करेगा उतने जो हाँ वो पॉइंट्स मिल रहे हैं। माय बैड ब्रो, इतना खेलने के बाद भी नहीं पता भाई गधे हैं हम। मुझे तो पता था। कैसा कोड भैया? ब्रो मैं दूंगा तुम्हें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का कोड जिससे तुम्हें मिलेंगे 5000 COD पॉइंट्स। 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम स्किन्स और सब कुछ खरीद सकते हो। तो यस उस कोड से तुम्हें वो मिलेगा जो कि हम लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। चलो भाई पहुंच रहे भाई देव को चुप कराना बस। हो रहा है देव तू 2 मिनट के लिए उधर को चले जा। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार करके देख बस, ठीक है? हाँ तू उधर को चले जा, देख ही मत। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले एक बार। आंखें बंद कर ना मत देख मत देख मत एक बार आंखें बंद कर ले तू। भाई इसने आंखें बंद कर ली। बाय गॉड इस बंदे ने आंखें बंद करी है। अबे देख मत अबे यार क्या देख यार भगवान क्यों देख रहा है यार? यार इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो यार, चॉपर वाला टोपा उल्टा करके बना दो इसको। भाई जीत रही भाई। इसके आंखों में चप्पल मार देता हूँ दोनों में। हटाना यूज देखो भाई डबल। भाई इसकी आंखें बंद करते ही देखो वहाँ पे 132 हो गए, वो लोग जीतने लग गए। लेट्स गो बॉयज 132 कम ऑन यार। फर्स्ट टू 250 वाइटैलिटी कम ऑन भाई। यू कैन डू दिस भाई। क्या पेल ले भाई, लेकिन वाइटैलिटी वाले देख रहे हो? देख उनके पॉइंट लगे जैसे आया स्क्रीन। वो देख जीतने लगे टीएलई। हट जा यहाँ से, हट जा यहाँ से। के अंदर बंद कर दो यार इसको अलमारी में डाल के बंद कर दो भाई। मैं ना तेरे को अपना मोजा सुंघा दूंगा बाय गॉड। वो जीतने लग गई देखो देखो। ये देख तेरे जाते पॉइंट लग गए। अरे ओ यार देखो फिर वो उसके बड़े झूठ बोल लो। कापा कुलक्षणी साला भाई आधी 15 कितने भाई 30 पॉइंट बढ़वा दिए इसने। अरे भगाओ ना वहां से। देख इसके जाते बढ़ने लगे, इसके जाते वाइटैलिटी के पॉइंट बढ़ गए। अरे यार मत चले जा भाई, रुक गए यार। तू चले जा यार भाई, चले जा तू उधर को। वो देखो उनके बढ़ने लगे, देखो उनके बढ़ने लग गए। ऐसे भगाओ यार भाई से घर से बाहर करो भाई। मैं ना तेरी स्कूटी का टायर में मार दूंगा चक्कू अब जाके। देखो वही रहना। आंखें बंद रख, आंखें बंद रख, आंखें बंद रख। बाय गॉड इसने आंखें बंद रखी थी। 150 हो रहा है वाइटैलिटी। कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रदर, कम ऑन ब्रदर। बेचारी वाइटैलिटी को क्या खबर होगी कि यहाँ पापा की आंख बंद करने से वो जीत जाएंगे। मत करे मत खोल, मैं बता रहा हूँ तेरे को। बाय गॉड इस बंदे ने स्क्रीन देखी थोड़ी देर पहले, और वैसे ही उनके बड़े 3 पॉइंट। 168 160। ना अभी जीती नहीं है, अभी जीती ऐसी रहे। ना मत देख साले। हटाओ से भाई ये क्या आदमी है भाई।
Back with it, tranquility. No, to the chaos. To the Boy, 166, 173. by everyone. क्या स्कोर हो रहा है? There's gonna be यार इसको हटा यार. जीत तो रही है यार. जीत तो रही है. Not gonna be possible. Hisala's gonna help him through it all. Vitality once again. भाई आप लोग गए स्कोर बढ़ने लग गया. मैं नहीं था. आप जाओ. Vitality, one of them is going to be used as the annihilator. किसका स्कोर बढ़ रहा? Your host. किसका स्कोर बढ़ रहा? इसे हटाओ यार. हट जा ऐसे. 30 plus now 40 for उनका स्कोर बढ़ा रहा है यहाँ बैठ बैठ के. ये देखो मेरे हाथ में वाइटैलिटी का बढ़ने लग गया. But although they were getting kills, they're still मत आना इधर को. वाइटैलिटी जीत रही है. मत आना बिल्कुल भी. मत आना इधर. आंखें बंद कर. भाई 185 ले भाई जीतने लग गई. 185 जीत रही है. बता कहाँ पर प्लीज बता. मत भाई 192 वाइटैलिटी. लेट्स गो. 93, 94, Let's go. 95. लेट्स गो बॉयज. 96 देख मत. 97. Come on. 96. Come on. 96. Yes. बढ़ाओ 200. 200. ये अबे जीती कहाँ है? झूठ क्यों बोल रहा है? पड़ेगी इसके मेरे को लगा. 206 207 जीत रही है वाइटैलिटी. कम ऑन वाइटैलिटी. 8 9 10 11 12 13 14 रुक गई. बस 30 seconds और 30 seconds और. भाई यार 30 seconds, 20 seconds. शिट यार. 16 17 18 19 15 seconds और है बस. 22 23 24 25 हो गई. 5 सेकंड और 5 सेकंड और बस. 29 3 31 34 पे रुक गया. 34 अरे भगाओ इसको भाई. 34 बढ़ जा भाई. फिर से अब तो भाई इसे भगाओ यार इसे. भाई यार रुके 200 लेके. नहीं भाई प्लीज नहीं. प्लीज नहीं. अबे नहीं भाई बड़ी मुश्किल से आए थे ऊपर. भाई वाइटैलिटी मत करो ऐसा. अबे भाई यार. भाई 16 पॉइंट चाहिए खाली. यार 35 36. हो गया बस. कम ऑन. नहीं. ओ नहीं हाँ ओए हार रहे. आंख बंद कर. नहीं यार तू नहीं कर रहा ना. बंद कर. आंख बंद रख. नहीं अबे नहीं भाई कम बैक हो रहा है भाई. नहीं यस एक बड़ा. नहीं Come on, Vitality, you can do this. Vitality, you can do this. Vitality. नहीं, मत. नहीं यार. 10 points यार. 12 points. Oh, look at their faces. They're so happy. And हाँ, they should बुलाना be. जरा. What a win for TLE, ladies and gentlemen. ये तेरे की रह गया पैसे. हाँ मेरे. Vitality bringing in their best effort. It was so close. But when it mattered the most, TLE started rotating super. You can see it on Marcelo's face now here with Shisui. मारो भाई मारो और मारो साले. यार बस इसको 1 मिनट और आंखें बंद कर लो यार. And they were always getting the majority of the time. And we were starting to ask ourselves towards the end of the piece or भाई जीता हुआ ये मार गए भाई. that TLE Esports, their break percentage was so high. भाई देखता हूँ
themselves a slight lead over Team Vitality, and that was all from the break percentage and walking away with the majority of time on P3. Take off hardpoint in a nutshell. If you can get the majority of time in between 3 and 4, you will always feel like you are in possession of the lead, and that's exactly what happened for TLE. Team Vitality, much like you were talking about and pointed out wonderfully, Gil. कोई नहीं भाई, better luck next time भाई. नहीं कोई बात नहीं, अभी भी चांस है, 3 गेम होते हैं. Never give up, never what? Vitality. They completely put Vitality on the back burner, taking this map number 1 in a very, very good fashion. Might I add you that Burns dropped 50 kills. 53 and 38. For the L, have to feel punishing. It almost looks like just the quick maths on our screen. Realistically had more kills, but it doesn't always matter. It has to be the right kills that need to be found. That's exactly what TLE did at the end of that final few hard points. Put themselves in a position to be able to close that map number 1. Yeah, the kills were close, and so was the score. Unfortunately, the kills and score was not in the same favor. Kills for Vitality points. खत्म हो गया क्या वो जो तुम खा रहे थे तुम लोग? Now we begin to think क्या ड्रीम गन? हाँ ड्रीम गन. Search and destroy. Proper. I want to tell you something. That's the weakest game mode for TLE. They have historically struggled like crazy. I have no idea. I really do hope that they did their homework because if they didn't, again, 12 points यार. Going to be an easy fight of that, I'm sure. Vitality टक्कर की टीम है ना, If they have managed to improve this game mode, Vitality की टक्कर की टीम जीत सकती है आगे. like a weakling. जीतेगी. Vitality जीतेगी. लेकिन यार उनकी साइड से देखो क्या कमबैक किया कोड दे दो ब्रो, अब पेपर कल नहीं ब्रो. जब ये खत्म होगा, वाइटैलिटी का गेम खत्म होगा तब देंगे ब्रो. ये तो एक मैच है. And that is terrifying for such an integral game mode. Search and destroy will win you matches, win you championships, and you really do feel like that for TLE it's the time that they're able to showcase just that. For a fighting range, मैं 5 मिनट में आया, मैं भी आ गया. देख के जाना हाँ, दोनों देख के जाना. You can only put some vamos in the chat. Look at the numbers and really get scared on how close Search and Destroy is for TLE. Vitality, they need this. I mean, it's either you come out and you have a breakout performance on firing range Search and Destroy, or you're 0-2, and the likelihood of you making it to that championship bracket, it's not looking चलो too भाई good. पनौती को निकाल दिया मैंने बाहर. ऐसे तो जा नहीं रहा था. अब जीतेगी वाइटैलिटी बॉयज. 1st to 7th वाइटैलिटी जीतेगी इस बार. जीत रही है वाइटैलिटी. 2-for-1 trade going in favor of TLE as Vegas tries to do something, manages to somehow get that kill onto 3v3 there. हाँ 3v2 with yet another kill for the Brazilian player of TLE. That's right, TLE from 3 to that's going to be Mexico, Brazil. Come on, Vitality. Hi, Patanjali Store से स्वाश्री प्रवाही ले लो लैम्बो. Versus 2. Joko's at a distance here with स्वाश्री प्रवाही ठीक है डू. डन है वर्मा जी, थैंक यू. Players over there misses that first shot. हाँ ये बहुत अच्छी है. His spot saucy. Oh my goodness, with a fraction of a second he knew where he had to be. भाई 3v1 है, मुश्किल है. Now it's a 1v3 that he himself will close out. It has to almost feel like a form of miscommunication for all of Vitality, really. You're in a 2v3. You have all of the mid-map being looked at past 10. If the bomb gets put at A, at least you're close. But the moment you see one player over by the B bomb site, you know that's where the hit is going to be coming from. So TLE, at least they पेड़ पे देखो, पेड़ पे check करो, पेड़ पे ऊपर. At least defensively this time to shut down this push. It is coming over towards A. First one is going to be found by Pabzera. Has a massive kill over towards the pistol. The damage. Are you kidding me? Immediately leaves Mino in a 1v5. And just before I can even say good luck, have fun, he is put in the dirt. TLE दो गेम 2 राउंड हार गए. Okay, not a single loss of players over there on TLE. वाह बढ़ गई मेरी. Quite honest with you. हाँ. मतलब भाग यार. मेरा पूरा ध्यान था गेम में. कुत्ते के बच्चे तेरे को बताता हूँ मैं. But it was just too difficult for them to find that kill. Saucy with the first one, going in favor of TLE, doing a great job at the beginning of these rounds. We questioned if they were ready for search and destroy. Seems probably देखो यार तुम्हें अंकल बोल रहा है यार. Yes, in here. Joko's gonna answer back at a distance with a sniper shot. यार अंकल बोल दिया यार तुम्हें, मैं तो नहीं सकती यार. किसने? ये देव ने अभी अंकल बोला. जैसे तुम चेयर से उठे ना, तुम ऐसे बोला अंकल उठ गए, अंकल ऐसे कर. मैं तो उठा ही नहीं, लेकिन
किया। 3v4. जब मैंने डराया आपको ऐसे Never हुआ। want to count anybody हाँ, out. ऐसे They are at the top of Latin यार बहुत America गलत and बात है यार, sitting मैं here तो नहीं at चाहती यार। Worlds for a अब भाई पापा का अंकल बोल रहा है also being carried though. अब इससे ज्यादा क्या देखो ऐसे होता है धीरे धीरे बढ़ता है आदमी हाँ वैसे सही अब मैं बात है। दोस्त से अंकल हो गया हूँ कल को पापा हो जाऊंगा Towards this B bomb site. एक्सेप्टेंस देव यार मैं तो नहीं चाहती यार। थोड़ा एक्सेप्टेंस जो है ना वो अभी पार्ट है हमारा पूरा Mostly just coming down with the ये who's in a 1-for-1 ये डायलॉग आ रहा है दिमाग में। Somebody has slipped the net. Cyrax could be playing for a timing. तुझे जीतिया चाहिए ये ले जीतिया यार। Highlights do manage to find that bomb, but gotta be careful. There's the defense from the side of Vitality Vegas. The headshot to Sauce is gonna hurt. बा मैं मत करो यार मत करो भाई ऐसी रात का टाइम और जो पेड़ है भाई 4v2 है मत करो मैं बता रहा हूँ ऐसी पेड़ है जो 45 seconds on the clock. Cyrax still in a great spot, but if Shisui falls, tremendously hurt. अभी जाएगा घर जाएगा TLE as we get to the last. बाबा तुम छोड़ दे आ रहा ना मुझे, तुमने तो बोला अभी। अबे अपनी गाड़ी का तेल फूकूंगा इतने से के लिए महंगा ना बाबा अरे छोड़ना छोड़ना होगा यार, तभी तो कर रहा हूँ ये सब, मुझे भी तो घर जाना है, समझो ना यार थोड़ा। भाई 2v1 बच गया क्या कर रहे हो तुम लोग नहीं यार 1v1 भाई 1v1 होगा उसकी एचपी लो उसकी एचपी लो है। ले भाई यार मार दिया यार। The 2v on situation. Never say never. It's a 3-0 lead. 3v1 से हार गए भाई क्या चल रहा है यार ये क्या कर रहे हो वाइटैलिटी प्लीज भाई He had one kill prior to Come back, never give up, never what? Never back down. Watching it out for the squad. Team India, 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 India. राइट चैट में भी इंडिया इंडिया स्पैम करो हो रहा है जीत रहा Do something to shake things up, or else they are going to be in a tremendously bad spot if you are losing 3-0 against a team that historically has Come been on, Vitality, super come on, you can close do when it this. comes out to search and destroy. 5v3 First blood 5v3 Team Vitality against हो the रहा है members. 5v2 5v2 लेट्स गो Do you remember what happened last time we said that? ये वाला तो हो रहा Didn't है। go too well. Burns though is able to take भाई out पिछला वाला Sauces. भी Second 1v3 round था is बस now इतना ही a बोलूंगा 2v5. अरे ये तो Surely हो the जाएगा। numbers advantage is that हम much जो better. टॉप ट्रैकर ही है That's how math works. इसको पता है Interesting position here for Sam. Just playing around the test dummy Patience, area. patience is the key. Let's go Easy kill. Oh, yeah. कोई बात नहीं, दो है डैमेज छोड़ा उस पे। हां एक्चुअली तो कर दिया Take कम down से Sam's, but so much left to do. He has बढ़िया, the bomb in his बढ़िया। back. उसका स्नाइपर है ना, मैं नहीं दे रहा हूँ। ओह मुझे मार दिए यार। Take down one shoulder thrown. Hold on a second. मर जाएगा No मर way. जाएगा। Turns around. उसके पीछे आ गया। ओए बढ़ गया। एक राउंड ऐसे ही निकलेंगे 7 राउंड होगा गाइस होगा Will get on the board, still trailing by 2. ऐसा ही टीममेट चेक लिस्ट कर देगा। Chaotic ending, but मैं हूं तो तेरे पास Vitality nonetheless, they are now with two back-to-back really good starting off a round. Let's see if they can repeat that यार action. पुरानी I was तुमने questioning how many क्लीन first भाई की bloods पुरानी गेमिंग वीडियो TLE नहीं देखी यार was तुमने। getting now. Vitality trying to change अरे मैंने भी तो नहीं देखी है, मैं भी तो ये बता रहा हूँ सबको, मैंने भी नहीं देखी है यार। Well, that worked out once perfectly in their favor. So what's next? Round number 5. मैंने भी नहीं देखी है, कोई मत देखना, कोई मत देखना। ओ इसका एंगल कितना सही है यार। It's quite interesting to see. It seems like both लग रहा है यार। भाई स्नाइपर की स्किन क्या है trying to do something बहुत different. क्रेजी है। अंडर TLE caught slipping on their aggression, where Team Vitality are more playing in standardized positions. अगर वाइटैलिटी को खुल लिया तो मजा आ Out जाएगा in the gunfight comes to them, and they'd be right. That is on the last round and a half, almost win. यार ये लोग बस ये पीक ना करे अगर इसने इसमें पीक कर दिया ना हो उसको जाएगी बंदा ओए मिस कर गया पीछे। पीछे बढ़ गया वहाँ से इसको कवर दे रहा है, वो पीछे से रश कर गया। Turns वो बंदा बहुत अलग Banana, खेल that's रहा a media call. Smoke's going to be blasting out. They're going to start यार इनका swarming over by this टीम B bomb बहुत site. अच्छा है। And you can see because of the minimap, nobody from Team Vitality is in an immediate position to try to stop this. So Tyre's control is वाइटैलिटी कम already ऑन here. अच्छा सारे ए पे है ये साइड पे ये बी पे चले गए Continuously have an angle on that B bomb site, but the Come numbers on, are नहीं far यार, better. come But on, TLE is नहीं Kilo. We'll take down नहीं Kilo. यार। Can't be planted, not quite yet. This one वो might एक just be the वो kill. एक एचपी बचाया वो पीछे देख For क्या था Cyrax, यार। and you got Jokos completely अरे on यार। his own. Yet ये लोग बहुत स्प्रेड होके खेल रहे हैं और ये लोग साथ में खेल रहे हैं। did not drop a हाँ। single player. यार वो डिफेंडर्स है ना यार उनके पास ए और बी है तो उनको खेलना पड़ेगा ना अलग अलग नहीं साइड अटैकर भी तो लर्क करते हैं। Their वो search देखो ना and उनके इसमें कोई नहीं कर रहा destroy, which you लर्क। talked about earlier, their हाँ game of डिफेंस search and वाले में destroy एक ने that तो they लर्क lost. करना They चाहिए lost by the वो minimum. मर गया वो। 2 rounds, they went into extra times, and in here, अबे कैसे मर गया वो सीधा उसने स्नाइप कर दिया वहाँ से, वो भागता हुआ मर गया। Relayed the information to his allies. 4v3 भाई और उसमें भी हाफ एचपी एक बंदे की अबे फुल उसकी एचपी कैसे बढ़ रही है हाँ कुछ रीजन होता होगा। नहीं यार Shot. आराम What से is आराम going से on, ladies and gentlemen? TLE. You got The this. great start of Come yet on. Never another give up, round. never what?
सपोर्ट never back down. पाइपलाइन कर दिया उन्होंने इनको रिक्वेस्ट करना भी This is a ओ भाई मर 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 यार ये भाग रहा है भाई 4-3 as far as the round is concerned. Bomb planted. अच्छा कुछ टाइम बाद एचपी बढ़ जाती है Mostly just coming through from the back. I mean, you saw that Vegas on the mini map previously was thinking about maybe pushing through, trying to get inside of wood. इसमें नहीं बढ़ना चाहिए Matter much at anything. I mean, this positional advantage, the numbers advantage, the round advantage, it's just so massive for TLE. Team Vitality were finding themselves on numbers on the defensive side was because TLE were being the aggressors. That's how Team Vitality were trying to at least push forward to get further information. TLE were expecting to flip it on its head. It's a 5-1 differential heading into the half. That's right. We're going to flip spawns. We're going to change sides. We are going to get to see if Vitality has something else to show to us tonight because they lost 2-0 in the first time they were here today. देखिए टीएलई वाला जस्ट नीचे बैठा है नीचे बैठा है उनकी पूरी भाई देखो ना बहुत सही खेल रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार Thanks to the hands up to me. अरे नहीं यार वो अटक किया गया वो क्राउच हो गया ना एकदम क्राउच ने नीड कुक कर लिया है भाई भाई इसको निकाल दे यार अरे यार Because let me tell you, I think that the first 3 or 4 rounds, Tio had no kills whatsoever. Now he's got 4. Yeah, that's massive. यार ये तो डोमिनेट कर रहे It's a हैं really good call coming through from TLE Esports. I mean, Team Vitality forced their way through the training dummies. never give up, never what? And that's in the TLE's handbook. They wanted to play the retake. So what's the response going to be here, respectfully, for both sides? Vitality looking to push through Banana. They're leaving one player behind to at least look through top wood to see if anybody's going to be pushing through the middle of the map. They'd be wrong, and you're walking into an absolute blender, and that's Map Zero to find 3 in the round. Mino at least answers back with 1. It's all up to Jokos. Dropped 50 kills in the first map, trying to keep his team in it, but it simply is not meant to be. 7-1 is the final score here on firing range. 2-up going to TLE, proving the point. They are the #1 team out of Latin. Right, they worked really great on this to destroy. They managed to come back on the very end for Hardpoint as well. They've earned this victory, and as such, will now be tied on the overall standings. We're gonna see there some good sportsmanship, you know, just shaking your opponent's hands, because at the end of the day, अभी तो एक और मैच होगा ना all is about. Now the only thing बेस्ट ऑफ 3 होता है ना तीसरे तक जा ही नहीं पाए वो लोग What's really terrifying about all this, too, again, talking about the matchup versus standpoint. I know I talked about it ever so slightly. You even talked about it as well through the middle of that map #2. They only lost by 2. It was a 9-7 on firing range. And of all maps, again, for as long as Call of Duty Mobile has been in its existence, you have to have a pocket firing range. That much is for certain. As we take a look at the replays from that map #2, really good back and forth. I'll be completely candid with you through the opening 4 rounds. Realistically, you felt like that Team Vitality should at least have 2 rounds, whether it was 7-2 or at least going in towards the side switch. You just can't allow those 2 players to be able to wrap back over towards the B-bomb site and finesse you like that. That was crazy to see that TLE was able to do that back to back, but even more impressive that Vitality was allowing that to happen so often. It should have changed in some sort of way, but they could not adapt quickly enough. And with that, we are going to be moving into the interview with one of the players over there on the stand from TLE. Take it away, Dad. Thanks so much. Thanks so much. Yeah. We are chilling, and you guys certainly doing well with the big मोए win. मोए हो गया भैया Seem to be ले भाई तू कोड ले ले यार वो भयंकर उसका कोड खा ले भाई इसको victorias más grandes que tuvieron ahorita. ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad sí, ya que es nuestra primera victoria en el torneo, más aparte de que es nuestro primer torneo presencial. Creo que no empezamos de la mejor manera, de la manera deseada, pero lo estamos haciendo bien y ahorita el equipo está con todas las ganas de querer superarse, sin importar lo que haya pasado, cómo empieza, lo importante es cómo uno termina. Yeah, definitely. It was much needed. This is our very first. गाइस मैं स्क्रीन पे कोड ला रहा हूँ, ठीक है? मैं स्क्रीन पे कोड डाल रहा हूँ. जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं इसको फटाक से रिडीम कर लेना. जो भी पहले रिडीम करेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है? जो भी पहले रिडीम करेगा उसको मिल जाएगा. There we go. ये कोड. ये रख देता हूँ, साफ दिख रहा है. ये कोड जाके ये कोड डाल लो, तुम्हें 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पॉइंट्स मिलेंगे. तो
इस पे क्लिक करो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस कोड्स ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पॉइंट्स थैंक यू सो मच कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लव यू दोस्त lograr lo mejor, querer representar de la mejor manera a LATAM es lo que nos incentiva y motiva a dar literalmente el 100%. So as in life we have to cope with सही कॉपी defeat. पेस्ट किया ना We need to learn how to deal with losses. B But T B our G mentality has to C stay T strong. We N need to keep that Z mindset that we W want to B showcase P the 4 abilities that LATAM has, and that gives us the thrive to get those to win. Well, I mean, the victory and the style certainly showed through. I think that will provide. He's you the good speaking mental. Spanish. So thank you so much for your time. Español. Congratulations. Ayo, problema, señor, Saludos a todos los fans de Tele. Gracias. Back to you. Gracias. Gracias, All right, señor. that was a fantastic interview. I love when we get chatty players, Gil, that will actually give us some really fleshed out answers. I mean, he was right. They made a massive change, really kind of picked up the pace, and they look really solid now. क्या बोलता Yeah, है? it took just a lot of effort for them to get that victory. ये तो नहीं They है show भाई it in their Spanish faces, right? They are happy. They know that it was not What was necessarily that the code, start, brother? but वो they कोड know था that Call they of Duty can मोबाइल fix, पॉइंट्स का they उससे have तुम्हें done 5000 so Call of Duty मोबाइल in पॉइंट्स this मिलते हैं game number 2. Once again, congratulations for that win for TL. किसको मिला थोड़ा जिसने लेट हो गई मैं मैंने स्क्रीन में डाल हो रखा गया था वो ये है पॉज कर लेना इसको देख लो इसको लिख लो There, obviously, कोई भी that कर was just सकता one of था our main stage matches. We have बस so शर्म कर many ले more भाई थोड़ी things going on. I think I have a little bit of a surprise treat in store for the two Never of give up, never you, what, कल फिर से because we आऊंगा got some मैं। action going कल on. वाले I वीडियो think होगा never give we're up, going never to check what. in with Shift and see what he has to say first, and then we'll get to it. Hey guys, so yeah, it's a lot of action going on right now. I think the biggest nose point is, hey, LG and Tribe squaring up on the D stream, and I will say, just to kick off this ये series, क्या पीछे लोअर ब्रैकेट खेल Tribe लेगा had to win map number अभी 1. ये Husky लोअर and the ब्रैकेट नहीं था Hard ना Points were अपर the है best ना ले overall, अपर है and तो they came हारेगी up तो दोबारा आएंगे Fatality. clutch. Absolutely जीतेगी भाई। thriller to finish things off, but it was Tribe able to take फिर से मैच है ना फैटेलिटी का भी अभी लोअर नहीं होगा ब्रैकेट थोड़ा में टाइम बाद Here is होगा the शायद interesting thing about this series. The rest of it is a meltdown बाद में search गुड़ what खा they're लिया क्या currently हो? in and a crossroads control. Both maps were played when those two squads met up when they played in season 4 अरे वाला in गुड़ the कौन group सा होता है stage, चॉकलेट जैसा and होता है वो both मस्त those लगता है went to LG. So खाया तुमने? really tight matchup going over. वाह उसको गुड़ नहीं बोलते Meanwhile, गुड़ ही other होता है results that are डार्क coming कलर through, होता है बस Q9 playing standpoint over on the C जब stream. गुड़ खराब हो जाता है ना तो डार्क कलर का हो जाता है तेरे को पता है नहीं यार तुम When समझ they नहीं रहे हो तुमने played खाया नहीं है SPG in the past, मस्त होता है 4 वो। total यार भाई मैंने चॉकलेट सॉफ्ट वाला फ्लेवर गुड़ गुड़ तो खाया नहीं है खाया कभी मैंने डार्क होता है मतलब समझ लो भाई ब्लैक मैंने होता है, सॉफ्ट ब्लैक वाला होता गुड़ खाया हुआ जिसके अंदर सॉफ्ट डाली होती है उसके अलावा नहीं खाया जो कोई पहले कालू से मंदिर में मिलता था 197. Wolves currently down, but तो ऐसा बोलो things are चॉकलेट looking वाला like गुड़ a भी durable बोल रहे may हैं मतलब go कलर the में other वही way. आ गया Very, very back and forth. And then the only other thing here is just what's going to happen with the other teams that are 0-1. यार कभी फ्लेडा तुमने कभी कोई प्रो गेमिंग इवेंट में खेला हुआ है These matches right now live. खेला नहीं है गया हूँ लेकिन मैं देखने और तो पीएमसीओ गए थे ना देखने नहीं उसके बाद हाँ उसी में गया था इधर currently in the middle of their map number भाई मैंने एक बार खेला था अपने स्कूल में भाई ये गेम भी बड़ा बहुत टफ होता है मतलब बहुत ज्यादा भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वाले प्लेयर्स भाई इतने वो है ना भाई बहुत टफ होता है भाई इनके साथ तो भाई वो ग्राइंड भी तो करते हैं ना यार हाँ वही बात है ग्राइंड भी उनका वैसा ही है open up multiple browsers because it's going to get really lightning hot down here. That lightning, I don't even know if it is hot, but it feels like it would be. So that's what we got. Back to you guys at the desk. All right, fantastic job as always. Shift coming through with the lore Price for खाएगा? LG and Tribe. मंगा दो He's कोई भी talking अपने about that matchup, but here's the Price treat that I मत was देना talking यार। about, okay? We're actually going to be jumping in खाली on पिज्जा मंगा that रहा D हूँ फिर। stream LGV Tribe भाई फ्लीट भाई खिला रहे हो ना फिर यहाँ पे भी now, so we can take a look at that मंगा instead ले। of going to a break, see how that match is going. You guys, इसने बर्थडे पार्टी भी दी यार And like, I mean, he was वाह, talking बहुत about ही it was हरामी like आदमी है 3-2 when he भाई immediately मिला ही नहीं कोई मेरे को बर्थडे पार्टी पे भाई इतना अच्छे से बोला हमने इससे हैप्पी बर्थडे सब बोला It इससे is हमने as even कि Stevens कुछ as you खिला देगा possibly करके asked for, like Alan अबे O'Rourke भाई alluded कोई to. आएगा These are भाई performance आओ और matches. बर्थडे So पार्टी ले both teams face off ओ देखो देखो against each other. ट्राइब और यार, लुमिनोसिटी का मैच हो रहा है Lead. अपने अपने ब्रैकेट में लुमिनोसिटी जीत गई थी हाँ नहीं जीती थी हाँ तो ये अपर है फिर Here, witnessing the side of LG अरे finding the बाबा। bomb by the hands ये of Ken. रिहान, It's gonna be now. Tribe 40 X रिहान। seconds on the clock. Tribe trying to go for the retake. अरे Tribe. भाई। Rihan takes that यार ये knock कौन onto सा मैच होता है ये वाला जो स्टेडियम वाला मतलब ये जो पूरा खुली जगह है ये ये वो है ना डिफ्यूजर प्लांट वाला अच्छा डिफ्यूजर प्लांट में अच्छा तीन अलग अलग मैच होंगे वो एक तो ये वाला हो गया 250 वाला एक टीम डेथ मैच हो गया एक ये हो गया Really surprising. Okay. तीसरा पता नहीं कौन सा होगा Victory तीसरे for तक गए Tribe could translate onto pain
for the side of LG, who right now are trying. अच्छा जो दूसरा जीतता होगा वही 30 तक जाता होगा। अरे बाबा भाई वो जैसे उसने उठा वैसे स्नाइप खा गया वो शिट भाई, इससे कहते कवरिंग प्लेट भाई। हाँ सीख ले थोड़ी, बहुत डांस कर रहा हूँ। I'll be honest, this almost feels like it's a grand finals appearance in a best of 3 format. Most of the teams are just भाई इतनी रात में लाइव, हाँ ब्रो हम लोग ये देख रहे हैं ना कॉल ऑफ ड्यूटी, ये बेसिकली अटलांटा में हो रहा है यार, तो वहाँ के टाइम के हिसाब से हो रहा है ना ये, तो हम लोग उसकी स्ट्रीम कर रहे हैं। भाई यार मेरा बहुत मन कर रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का। ब्रो अंशु वर्ष का व्लॉग कब आएगा? कल 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 अंशु वर्ष की वीडियो आ रही है। वो कल आ रही है? हाँ कल आ रही है वाली, कल आ रही है? हाँ सब्सक्राइबर वाली कल आ रही है। अरे बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, पागल हो जाएंगे लोग। जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं एक हिंट देता हूँ, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने एक सब्सक्राइबर की ड्रीम लाइव कंप्लीट कर दी, उसने जो बोला हम लोगों ने करा है 24 घंटे में, और तुम देखना तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। तुम लोग सोचोगे भाई हम क्यों नहीं थे, क्योंकि जितने लोगों ने मेरे को वीडियोस भेजी थी हम लोगों ने उनमें से बहुत सारे लोगों को देख के फिर सेलेक्ट करा है बंदा। भाई अगली बार फ्लीट भाई हम में से किसी को रखेंगे सब्सक्राइबर, मैं बनूंगा लकी। भाई मैं होता ना अगर लकी सब्सक्राइबर, मतलब क्या क्या करवाता भाई, मजा आ जाता। जीटीआर दिला दो। लेकिन यार बढ़िया चीज तो मिल ही गई यार फिर भी। हाँ ये तो है, बात तो है। अरे बहुत भाई देखो भाई कितने मजा आएंगे, मजा आ जाएगा यार। बात तो है, बहुत मजेदार वीडियो बनी होगी। अरे क्या एंगल है भाई, क्या एंगल है ये? वो बंदा एंगल देखता रह गया भाई, उसने जंप शॉट मार दिया हेड पे। भाई ये मैं भी ऐसी स्नाइपिंग मारता हूँ। हाँ देखिए Slug is a player that is relatively close towards the safe bomb site, but he's just waiting for the audio cue. Bomb's getting get भाई ड्रैगन बहुत यूनिवर्सिटी वाले बंदे हैं तो बहुत तगड़े यार। push for the trade. कौन सा कॉन्टिनेंट है यूनिवर्सिटी वाला? क्या कौन सा कॉन्टिनेंट है ये यूनिवर्सिटी, कहाँ की टीम है? NAS है। वो देखो फिर से वही जगह पे अरे लेटा हुआ अरे भाई 4-4 भाई ट्रेड मेरे ख्याल से नहीं कर सकता बंदा, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है। यार मैप कितना मुश्किल होगा भाई, दोनों अकेले घूम रहे ना, ले ही जाएगा वो। अभी एचपी बढ़ाने का स्कोप नहीं। अबे तब भी फाइट करने जा रहे हो, हाइट बढ़ गई। क्लच भाई क्लच जीन है भाई पे। भाई कौन सी टीम की तरफ हो? Showman kind of University, players, right? you know, love Any it day, to see day it. from Last day one. year, his waves at the opponents was always something magnificent to see, questioned. लिम्नोसिटी लास्ट ईयर के विनर्स है। हाँ 2022 में लिम्नोसिटी Showing what जीती he थी। does best, which is just dominate. भाई 8 करोड़ रुपए है प्राइस पूल, 8 करोड़ रुपए समझ रहे हो तुम? The legend will begin to push. जिंदगी बदल जाती है भाई। मतलब बाहर में तो $1 मिलियन वो होगा बंदा ना। घर ले सकता है, GTR ले सकता है उसके जस्ट बाद, Ladies and gentlemen, that's another bomb. घर और GTR दोनों आ जाएगा। भाई मैं होता भाई मैं तो सबकी गाड़ी ले लेता, सबकी गाड़ी मतलब मैं ले आता कोनी से लगता है मुझे भी वीडियो भेजनी पड़ेगी अगली बार। लाउड 8 करोड़ में कौन कौन एक्सेक दे रहा है तेरे को? भाई कॉपी तो आई जाती फर्स्ट कॉपी? कॉपी। अबे तू भाई क्या जूते खरीदने जा रहा है, क्या खरीद फोन खरीदने जा रहा है, क्या खरीदने जा रहा है तू? ये गाड़ी की कुछ तो कॉपी आई आती जाती है भाई, वो तुमने देखी नहीं क्या भाई, बुगाटी बना देते भाई अगले कॉपी। यार बाबा यार गेम में फोकस कर ले यार तू भाई, फालतू की बहस तो मत ही कर यार भाई। मेरे को ऐसे बंदों से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। ये वो बंदे जिनको गाड़ी का ऑन नहीं पता होता, बॉ नहीं पता होता इनको भाई। कॉनिक सेक की कॉपी खरीद दूंगा भाई मैं। यार 8 करोड़ में कौन सी गाड़ी आएगी, बथेरी आ जाएगी यार। हाँ तो भाई तुम कौन सी लेते अगर 8 करोड़ तुम्हारे पास होते तो? भाई पहले लेता एक GTR, देखो घर तो है ही अपने पास, तो मैं लेता एक GTR, एक G वैगन, अरे भाई एक GTR, एक G63 और G63 कौन से वाली? अच्छा G63 वही ना, और एक Carrera S। तीनों गाड़ियां आ जाती। 2.7 करोड़ की Carrera S हो गई, 4 करोड़ के आसपास की G वैगन हो गई, G63। अबे नहीं यार भाई ज्यादा की है G63। ये 7 तो यही हो गए, फिर एक सेकंड हैंड GTR ले लेता 1.5 के आसपास में, अगर मिल जाती तो। इंडिया में वैसे सेकंड हैंड GTR भी नहीं मिलती भाई, बहुत सैड है।
And now if you're Tribe, भाई 8 करोड़ की गाड़ियां भाई क्या लगती गैराज में खड़ी हुई। I mean, Tech is essentially inside the spawn, so he's just waiting for the confirmation that somebody is pinching and waiting for the audio to use itself. Still दो शॉट भाई। That's both vague and washy. The सिंगल ले गया भाई। has to try to defend this in a 1v2, trying to hop अरे बाबा, अरे बाबा, भाई ये क्या खेल रहे हैं ये लुमिनोसिटी वाले? भाई क्या क्लच कर रहे हैं? वो बंदा डिफ्यूज ही करते रहे, मतलब प्लांट ही करते रह गया, कवर ही नहीं दे पाया भाई, और जबकि हाफ एचपी से भी कम में था। डेंजरस लुमिनोसिटी वाले तो भाई देख लो ऐसे जीते ये लोग पिछले ईयर का, तुम समझ रहे हो भाई? लेवल है भाई टीम का, ये ऐसे जीते पिछले ईयर का बेसिकली चैंपियंस है, टाइटल डिफेंस है भाई। हाँ कायदे से लोग अपना टाइटल डिफेंस कर रहे हैं। हाँ सही बात। No, I'm not surprised personally, because again, like Shift was already talking about, last time that these two teams did face off against each other, it did go the distance, but LG did take both search and destroys into control. If there's a backload combination, और सोचना यार बैंक प्रॉपर ड्रीम हैक में हो रहा है। अच्छा प्रॉपर ड्रीम हैक में ही हो रही है। भैया आपका गेम प्ले दिखाओ। Yeah, we get to see a few of the हैंडल नहीं कर पाओगे यार तुम of this game. We obviously only got to see the second. यार सीधा वो इनवाइट ही ना दे देना फिर वो गोल्डन स्लिप पे। हाँ फिर वो कहेंगे अरे बाबा ये स्ट्रीम कहाँ करवा दी हमने, इनको तो बुलाना चाहिए था यार। फिर मेरे को कल गॉडेल का मैसेज आ रहा है वहाँ कि भाई हमारी टीम से खेल लो। ये वो वाइटैलिटी वाले बोल रहे हैं अरे भाई आपने बताया नहीं आप ये खेलते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, आ जाओ। इसलिए मैं दिखा नहीं रहा अपना गेम प्ले थोड़ा। To have a better understanding on who will remain undefeated, and that will be happening soon. I'm so glad that $1 million. That's what I'm talking about when I say that there's lots of action going down at the pit. Okay, we've got games up on our main stage, but there's so many लुमिनोसिटी में लास्ट ईयर के प्लेयर्स हैं जो ट्राइब की टीम से जीते थे। अच्छा ट्राइब वर्सेस लुमिनोसिटी ही था पिछले ईयर फाइनल। डैम ब्रो, एक तरह से रीमेक हो गया और फिर से लुमिनोसिटी जीत गई भयंकर। लो आई just get ready to jump back in with the third and final map for LG versus Tribe. Is this a little bit of a preview what we might get later on in the competition? It's likely. I mean, considering that it is a Swiss stage, a Swiss bracket, if you will. I mean, you very much so could see these two teams battling up against each other. Obviously, when it comes down to single elimination, what round is it going to come in? It very much so could be grand finals. That's just the beauty of Swiss in general. They could end up on two different sides of the bracket. We very much so might get a गेमरवर्स का, अरे preview गेमरवर्स नहीं अंशुवर्स है भाई वो। Which is also और अंशुवर्स की वीडियो कल दिन में आएगी 1 बजे। 2 बजे 2 बजे आएगी या 3 बजे डालूंगा, 3 या 4 बजे डालता हूँ। है ना? कल स्कूल है, सैटरडे तो है, सैटरडे है कल छुट्टी होती है, पर सैटरडे को छुट्टी होती है, बहुत लोग एग्जाम भी होते हैं यार। बट 4 बजे छुट्टी नहीं होगी, 4 बजे तो वापस आ चुके होंगे सब। हाँ देखते हैं 2 से 4 के बीच में डाल दूंगा। अच्छा लुमिनोसिटी वाले प्लेयर ट्राइब में थे उस टाइम पे। ओ भाई तो मतलब उन्होंने वहां से वहां कर दिए ट्रांसफर। I mean, we've barely scratched the surface of day one. We still have 5 matches. I am from Pakistan. Okay. What we've got coming up next, match number 4 for the main stage. I mean, that's just तुमने लिखा था अंशु भैया from पाकिस्तान। मैंने बोला है। You guys need to be checking out the BC and D streams, checking out the pay if you're here लुमिनोसिटी वाले प्लेयर ट्राइब में ही थे। अच्छा sitting down, taking a rest from all of the walking. तो लुमिनोसिटी की जो अभी टीम है वो एक्चुअली ट्राइब की टीम थी, तो अब उन्होंने लुमिनोसिटी में आके फिर से ट्राइब को हरा दिया। वो बोले देखो हमारी गलती नहीं थी। देख ले भाई। ओ ये वही वाला हो गया दोबारा से। जिसके पहले रिस्पॉन खत्म हुए वो हार जाएगा। अच्छा मतलब वो टीम डेथमैच जीती थी ये ना 30-30 है जैसे देख ट्राइब के 27 रिस्पॉन बचे हैं बस। ओके तो हो गए तो हार जाएंगे भाई। ऐसे तो भाई लीड भाई हमारी टीम में सबसे पहले कौन खाली करता नहीं भाई। अगर हम खेलते सबसे पहले सबसे रिस्पॉन कौन लेके जाता। हर्षी भाई नहीं मजाक करो, मोबाइल में तो हर्षी देव से तो अच्छी खेल रही है। हाँ भाई देव ले जाता भाई, देव क्रेडिट देव का मैंने गेम प्ले देखा है भाई। आज जो लोग
इस केस में 2 और 2 4 भी नहीं हो पाता, तुम समझ रहे हो? इसमें 2 और 2 3 होता है। ओह क्या मारा है भाई। भाई वो देखो ना 15 रिस्पॉन बचे हैं। ओ 14 भाई, व्हाट भाई 10 रिस्पॉन का फर्क हो रहा है, 10 रिस्पॉन। अबे ये तो शॉटगन से लिए जा रहा है भाई। इसने कब ले लिया ना, एरिया कैप्चर कर लिया। अच्छा कैप्चरिंग कर रहे हैं क्या, कुछ कर रहे हैं? ना कैप्चर देखो देखो ऐसा 3 बार मैच होंगे ऐसे, और जो पहले 2 कर ले 3 कर लेगा बेसिकली पहले। बढ़िया बढ़िया 15-7 थोड़ा तो कवर किया देख, एटलीस्ट 10 का फर्क तो नहीं रहा ना। और नीचे ये टाइम क्या हो रहा है, 16 सेकंड। और देख रहे हो जो ए पे है वो सर्कल फिल हो रहा है, कुछ कैप्चर हो रहा है क्या? लग रहा है मेरे को। अरे बाबा नहीं यार, 4 बचे हैं बस। अब तो बहुत खराब है। 12-11 नहीं भाई, ये क्या हो रहा है? 2 अब वो बंदे ही 2 बचे, एक ही बंदा बचा है। अब वो एक बंदा क्या ही कर लेगा। हार गया। लुमिनोसिटी को पहला पॉइंट मिल चुका है, लुमिनोसिटी को 2 और पॉइंट चाहिए बस। पहली बार हम ये तीसरा वो देख रहे हैं ना क्या? नहीं उसमें देखा था ना हमने, लुमिनोसिटी वर्सेस क्या था, लुमिनोसिटी वर्सेस कुछ था ना, भूल गया। अच्छा हाँ जो पहला देखा था हमने जो। Fight back in that Ore first bhai. round. Now, it was not great. 2 kills immediately going in favor of space. Now Rivallo with a war machine Oi. will try to defend. Solo gets knocked out. Ore bhai, lead bhai. Taking a double. Band pushing deep into enemy's territory. Double kill for ये वाला तो जीत रहे ट्राइब, देख लेके स्टार्टिंग में। from LG side now going in favor of अरे भाई 23-29 ये वाला ट्राइब ले जा रहे भाई। ये होती है बात भाई, टक्कर का मैच होता है ना, मजा आता है। Still up there slaying with the same Augusto that Luminosity did have in the round previous to this one. So 28 plays up against 20. Again, Control is a fickle beast when it comes down to opening breaks. You really do need to make sure that yours are that much better. अरे नहीं यार, बराबरी करती थी 20-25 हो गया। 25 now plays up against 20. I am Trying to at least tiptoe Welcome around these back. 2 different zones. Ban was on कौन जीता? B for the वही small Luminosity amount जीत of गई वाला time, तो। trying to stall out that clock. But ट्रॉफी लेके जाएगी ये। क्या दोबारा Luminosity? Over by that A हाँ। control zone, but where's the assistance through the upper halls? Space is going to pull out a वो भी claw सकता है। and try to keep everybody at bay all the way towards the back. Try It's भी just अच्छा खेल लिया exhausting लेकिन। so much time off this clock. ओ भाई 10 की लीड कर दी। for space. Had a great ये start round of लेके round लगता now. है। Getting quite a few kills there with the operator. Runs out of time, doesn't matter too much. There's an 11-12 now. 11-21 भाई, 10 का फर्क आ गया दोबारा से। बट इस बार जीत रही है ट्राइब। Double kill for him. NB with another knock onto ओए space. भाई, Something जीत गई। from S-Dog. S-Dog also being quite a valuable player for the team. लेकिन वही है, मतलब अभी के 5 के 5 बंदे जिंदा है ना, Problem not only the तब last तक also हो the सकता है time, कुछ। everything against नहीं, the अब खाली 5 side ही of रहेगा। LG Gaming. Only अब जो भी 5 मारेगा वो remain. खत्म, No रिस्पॉन नहीं more होगा। spawns, and as Tech gets taken down. That is likely वो going time का to wait be कर a रहा है। round Nice. going in favor of Tribe as we see that अरे triple भाई from क्या MB. मार रहे, देख रहा है It's not LG enough, वाले। man. It is not enough. Tribe with a great हाँ, job. टाइम से आ रहे हैं। नाइस This नाइस। is the most like crossroad strike I've ever seen in my life. Like everything's about ending the kills. It's always about the opening breakoffs. You have a segment being captured on both sides for both Luminosity and Tribe in their opening offense. Now, what have you learned? If you are Tribe, this opening breakoff, the majority is actually coming through their warehouse side, but nobody was watching this flank लुमिनोसिटी तो that सीधे Big's ए already पॉइंट put पे together, चली जा pulls रही out है, the फिर वहीं से equalizer, खेलने लोग। knows that there's going to be थोड़ा players रश around खेल A. ले लोग। Is it अरे going to be the भाई first मार set है। of prey? भाई माइन 24 hours वाली stream 12 बार देखिए। Love you bro, Wammu get well soon bro. Dil fire, 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 dil fire. थैंक यू सो मच अक्षत भाई, लव यू यार, लव यू। गेमिंग रेंज क्या बोल रहा है? लगता है मुझे भी वीडियो भेजनी पड़ेगी अगली बार। हर्षी गेमिंग रेंज ही है ना अपना एडिटर? हाँ है ना? हाँ अरे यार भाई, तुम और मैं साथ में काम कर रहे हैं ना, बस टाइम आन दो। इतना याद रखना कि अगर मेरा अच्छा टाइम चलेगा ना ब्रो, तो तुम्हें वीडियो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वीडियो भेजने की जरूरत पड़ेगी एडिटिंग करके, बट समझ जाओ। They are doing a great job of
sort of keeping it even on the side of Tribe, but time could also be an issue here as there's only 25 seconds left and Ben goes behind them, takes one, takes भाई वो बंदा two. साइड से आके सबको ले गया दो ले गया not there for him. 20 seconds left. It could be difficult for Tribe to break through. Yeah, it really can be. Down to 14 seconds, you feel like that this is where desperation is going to start to ensue for Tribe. Have to try to get themselves on the zone. Hunter Killer Drone investing. Will take down that Sub, who is trying to saw out the clock. Still looking for that. अगर ये बंदा ले जाता ना मजा आता है. Able to at least find another that his second in his life. Also have operators being invested. Thank you so much, Akshat bhai. Love you, yaar. Love you. All things should be the final grenade in the conflict. This Tribe are still struggling to try to get over towards one of these two zones, and the clock will be exhausted. एक और जो जीता वो It's just, I mean, this crossroads एक right, और right? You're in a यूनिवर्सिटी जीत के तो ले 1v6 almost. गई It feels like you're going up against the 5 players of LG, and that 6 players the clock. It is so difficult to try to stall the clock and try to love keep you bro, these kills please and give me momentum shout going out. on your side. Sunilam Patel, thank you so much. Love you yaar. Getting won by Kiel, so now 1-4 time. Hello Will we Manisha. see 1 for objectives? I highly doubt it, but that's never. भैया क्या कर रहे हो भाई? हम लोग देख रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियंस 2023. भाई मेरे को क्यों फील हो रहा है कि हर चीज सही बोल रही है भाई. लुमिनोसिटी ले जाएगी लास्ट में. हाँ लग रहा है. पर ये क्या हो रहा है भाई? एक राउंड जैसे लुमिनोसिटी जीती है, ट्राइब को एकदम आग लग जा रही है. देख रहा है और फिर फेल ना हो. वो देखो एक और पुराना रिश्ता है ना. Not been easy so far, and that's what you love की टीम का to मैच हो see रहा है among the arguably 2 best teams from what we've seen देखो on the side 19-20 of North America. Luminosity are looking to close it here, by the way. They've already confirmed that they're going to have round 5 defense by already capturing a single segment of aggression with the full hold that they had on the previous round. 17 points up against 18, 2 segments of aggression already been captured today, and they keep poking the bear over at me as well, halfway towards completed on that second segment. But look at how much time is left. 16 lives even across the board. तू क्या चाहता है कौन जीते? For Luminosity Gaming, working up that third segment not only on A but also over at B. Tribe. Now you have to try to go and try to whittle your way back inside. अरे बाबा गेम पलट दिया उन लोगों ने. 14-11, 14-10, 14-9. और मुश्किल है भाई. क्या बंदे हैं ये? मुश्किल है 8. ये लुमिनोसिटी के क्या बंदे हैं भाई? चीर दे रहे हैं. The Sparrow has to be invested. Space is also investing the claw just to try to keep these players at bay. He's able to find 2. Tectonic though. क्या डिफेंड किया इनने? Able to answer back with 1. The kills you feel like Gil might just be the final nail in the coffin. Space has to get off the high ground just to find more kills. It's 9 plays up against 4. Oh my god, 4-9. There's 2 operators on the hands of LG. That's a double kill for the side of Tribe, but 2 of them are gonna die. That's another kill to Revolve. Espa completely on his own. 1v6, ladies and gentlemen. Tries to survive that bait. Let's say no to that. 20 kills for him. And that's a dub in favor of LG. 3-1 on control. तो ट्राइब वर्सेस हम लोगों को वाइटैलिटी देखने को मिलेगा. LG will remain undefeated so far today. I mean, not too shabby, right? History's doomed to repeat itself. Just saying. 2-3-5. LG? A little bit. भाई लग रहा है एलजी दोबारा जाएगी भाई फाइनल. एलजी दोबारा फाइनल जाएगी. फील आ रही है मेरे को भाई. फाइनल नहीं, ट्रॉफी लाएगी. ट्रॉफी. अबे भाई तुम यार थोड़े इंडिया के दुश्मन हो क्या कुछ? अच्छा पिछला ट्राइब जीती थी. लुमिनोसिटी रनर अप थी. नहीं ब्रो पिछले साल लुमिनोसिटी जीती थी ना. इनने भी तो बोला. नहीं वो बोल रहे कि पिछले साल ट्राइब जीती थी. लुमिनोसिटी रनर अप थी. CODM वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 विनर. अबे नहीं ट्राइब जीती थी भाई. सेकंड आई थी लुमिनोसिटी. नो वे भाई. अच्छा ट्राइब की टीम थी. लुमिनोसिटी आ गई. अब लुमिनोसिटी जीती. अच्छा ट्राइब के प्लेयर्स अब लुमिनोसिटी में है लेकिन. ओह ओके ट्राइब जीती थी पिछली बार. ओके 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 भाई. That's not. That was tremendous to see. That was part of the side stream. इस बार भी ट्राइब जीतेगी देख लेना. क्या? बेशरम लोग भाई. एक आदमी होता है उसको थोड़ी शर्म होती है. लाज होती है थोड़ी. Of the streams, because in here today, you got enough games to be entertained the whole day. I mean, speaking of those other streams, it's time for us to do yet another check-in back on over at the pit with Shift. So let's see what's going on.
We got drama, baby. I'm all about it. And I will say, just for the record, I've been crushing predictions हार गए थे so ना? far नहीं today, जीते थे, so sorry. I'm just going to go ahead and say King I kind of King got हार गए थे ना? a little bit of a profit. Updates on other games that are Kingsman नहीं थे currently साले. going on or have finished. हाँ. And most importantly, Wolves are playing up against Kagendra, and there was a really scary moment on the opening Apocalypse Hardpoint. Kagendra was 1 point away. आप सॉरी एमटी बोला क्रो जेबी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती आवाज की वजह से आप वीडियो हाई बी ना हो एंटरटेन किया राय हो हमारे लिए बहुत अच्छा है लेमू लेस देन 3 Thank you so much crazy भाई love you यार lazy भाई lazy creeper love you मेरे दोस्त thank you so much और मेरे को बुरा लगता है थोड़ा कि मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं लो क्वालिटी कंटेंट डालूं असल में तब मेरे से हो ही जाता है मेरे को थोड़ा बुरा लगता है तो मैं सॉरी बोल देता हूं. But on top of that, little fun thing, not just about the matches that are going on individually, we also have a lot of the drama going on about which region is better, the East region or the ब्रो West अपने region. पाकिस्तान के फैंस के लिए क्या बोलोगे? लव यू. Series that we've had so far, up 3-2 in East versus West matchups. There's a couple more still to come in that next block. Following in particular on the main काफी लोग देखते हैं यार पाकिस्तान से भी. Team Mayhem go up against मैं भूख लगी है कि हाँ खाना आ रहा है मतलब खाना तो क्या ही आ रहा है पिज़्ज़ा आ रहा है. Really do not want to start 0-2 facing a potential early elimination matchup. So that's everything going on at least in this block down here. Back to you guys up the desk. Fantastic job as always, Chip. That was a very thorough report on what's going on in the pit, but I also need to know if that cough was real for the choke joke or not. सही में भी could have been both, honestly. थोड़े बाल ऐसे करवा ले और मूंछें बड़ी कर दे. Like he committed to it too hard because it sounded very genuine. It was अब किसका मैच है? It was believable. I'm going to ask him in just a moment here because it's time for a short break before we get into match number 4 on the day, so don't go anywhere. You're watching the Snapdragon Pro Series. भाई 20,000 लाइक तो हो गए ऑलमोस्ट 500 और बचे पूरे हो जाएंगे भाई. अरे वाह पोर्तुगस डीएस. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23 Ultra, Monster Energy, सुपर कार प्लीज. अरे यार आज की वीडियो कैसी चल रही है वैसे मैंने देखी नहीं. and the United States Air Force. चार्जर कहाँ है पीछे? वो पीछे होगा ब्रो सी टाइम हेलो सॉरी. कहाँ गया वो? नॉट GamerFleet चल रही है यहाँ पे मजे. कुछ खास नहीं चली यार. फोर्जा होराइजन देखना नहीं लग रहा लोगों को. बट क्या लग रही थी यार. मेरा लेजिट पता है फोर्जा होराइजन से हटने का मन नहीं कर रहा था. ये कौन सी गाड़ी है? Carreras. ओ भाई भाई ये तो एकदम वो लग रही है रियल जैसी. हाँ स्पॉइलर कुछ जैसी दिखती है. हैं? कुछ जैसी दिखती है Carreras. हाँ भाई क्या लग रही है ये? वही तो कह रहा हूँ. टॉप एंगल व्यू से क्या लग रही है? मजा आ गया था भाई. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था गेम काटने का. झूठ भी नहीं बोलूंगा भाई. मेरा मन करता है बस खेलते जाओ भाई. इतनी प्यारी लग रही थी यार ये गाड़ी. $24 आवर स्ट्रीम कर दूंगा मैं एक दिन दोबारा से. कोई टेंशन नहीं है. लास्ट 24 आवर में मैंने माइनक्राफ्ट सीखा था. हाँ डन. मजे लेता हूँ मैं तुम लोगों से. मजे करता हूँ. थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो बस.
भैया आपके पास हैकर वाली पोस्ट खाली है क्या है? ये बैठा है मेरा हैकर। इसके लिए तुमको मुझे निपटान नहीं समझने में कोई पहुंच जाएगा। हाँ भाई क्या कह रहा था? गोजो जादुरु गंबरे मस्त था यार वो। अरे आपके वो आ गए थे ना वन पीस। थोड़ा खोल सकते हैं तब तक का। जब तक बैठे हुए ना, क्यों बैठे हो? खाली बजाओ ताली भाई। अरे भाई बहुत भारी है यार। बाबा ये देखो, एक बात मैं होल्ड करना पड़ेगा करूँगा। अरे यार तुमको पता नहीं है, जिम जाता हूँ मैं। अच्छा कैमरे के लिए क्या? All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series live here from DreamHack Atlanta with our Call of Duty Mobile World Championship. And things are already going. Okay, we talked about match number 4 coming up right around the corner. Team Mayhem versus Exclusive. We brought Shift up here to get some casting done after the phenomenal. तुम समझ रहे हो ये बहुत डीप है, इसके अंदर हाथ चले जाएगा, बहुत गहरा है ये। 1-0 in this best of 3. Give me everything you got right now. ये क्या है भाई? कार्ड्स पूरे पूरे अभी सील पैक्ड है इतने सारे। LG कितना गहरा है ये गड्ढा? Tribe did not look convincing at all in their first matchup. बाहर जाना पड़ेगा, वो आ Not गया। having a great of a time as I think they were hoping for. मेरी पहली सुपरचैट का बुरा मत मानना भाई, लव यू एंड सॉरी। एक बात दो यार हम लोग को। मैं बोलने वाला था। हाँ यार। आज दिया वन पीस खोल के। है वन पीस भी तुम्हारे पास। Definitely something to be concerned about for these two particular teams. LG just या फिर दो बांट दो यार। It's not been as clean as you may have anticipated in the past, right? Which is something क्या चल रहा है out for sure. अब गेम स्टार्ट हो रहा है, Mayhem versus Although expected, it's still something that I'm sure Mayhem is just not too happy about as we get to see that beautiful entrance of them into the ball. We see Jesus in here and across. अरे डायमंड गिर रहे भाई। Ready, but not as ready as you may have thought. You said it yourself. They have already dropped one map against Europe. Hold on. Yeah, Did you see saw that? Yeah. He's literally doing elevated push-ups on us, right? Stacks of cash. Stacks of cash. What a baller! That was impressive. I need that on the stage. If they get a win, I want to see that in here competition. Yes. That's Blur for you, baby. That guy's different, man. And that's the thing is, like, look, the thing about this Team Mayhem squad is we weren't sure what really we were going to expect. I think a lot of early anticipations when we were in Poland for Season 4 was it was all focused on Tribe LG. And through the group stage, that was what we got. But then these guys on land in Seattle were looking unbelievable. They smoked Tribe in 2 different 3-0s, and then they put up a really good fight versus LG. So Mayhem have to play better because this exclusive team, I'm not going to give them any discredit, but you would assume that the NA region would be stronger than the EU's second best team. So coming out and losing the first map shows that this exclusive team definitely is cooking, even though they find themselves 0-1 at the moment. That's right, and in here, as we get to be introduced to these beautiful faces on the side of exclusive, it was just a tremendous map 1 victory, and look at them all. They are convinced that they can move on to day 2. This could be the first step here. Caesar Neil Creed alongside with Shark will be in here tonight. They already won the first map like we mentioned, and Search to Destroy, although on paper should be in favor of one of these teams being the side of Mayhem. That's not written on stone, right? Yeah. Anything goes. And I think the cool thing about this exclusive team is I think most people looking at their squad would say they got a natural upgrade bringing Shark into the mix. He was by far one of the most top-off players of Season 4, let alone in Europe. So it was surprising to lose in 2 matches to Volt. एक कॉल करके गायब हो गया वहां से। Volt did a really good job in the veto process. और मैंने बोला कहाँ हो, कह रहा वहीं तो हूँ बस। And अभी पता नहीं आगे दिखा रही उसको लोकेशन। Coming off the stage, they were like, we kind of threw both the 2 maps that we lost to Volt, and both of them were close. So you know, early land jitters type things. Maybe they're starting to shrug that off, and maybe that could be a reason why they're up 1-0 in this series right now. मेरी पहली सुपर चैट का बुरा मत मानना भाई, लव यू एंड सॉरी। कोई बात नहीं फ्रेंड। हरी किरण, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ प्यामरे दोम्स। From exclusive on social media. If we find these productions typically good about digging them up. अच्छा EX What is this?
Not only is this EU team hungry for the title, they took all the snacks. What? अच्छा exclusive sir. Thievery. Bruh. That's bad manners. Okay, well now they know where all the food went. They took it back to the hotel for Like, some extra energy, Gil. You just have to. You never know what goes in. अच्छा Go वाले Why the wings guy? You never know that. Right now, I don't see no confidence of a pillow. Maybe it's this But India में नहीं होती है क्योंकि इंडिया के ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना खाली पैसे के हिसाब से लेते हैं समझ रहे मतलब कि तू कमा पाएगा Superstitions maybe they have to do. वैसा गलत कर Yeah, दिया exactly. You never know. You never know what it is. Oh man, you know that could be part of it, but I think the other important thing to note here is that there's only two regions who really didn't get a lot of LAN experience this year. One of them being Europe, the other being India. And to be fair, India, I think they did play their Season 4 Masters in LAN. They just weren't at CDFI. I don't recall. But we know for a fact Europe didn't play any of their matches in person. So when you talk about exclusive having a quote-unquote slow start, losing to the Japanese team, and that's impressive. I think there are elements in a best-of-breed very quick series. एक आ रहा है Paradox Rift you get shaken up a little bit. और दो आ रहे हैं Exclusive look a little bit more comfortable just based on Shiny kind of करके how Shiny they EX transition करके from एक the आ रहा side है pit into the main उसका stage here. And I would expect Japanese this is set going to be Pokémon a banger map too. पता नहीं And यार I मैंने check नहीं have करा it going उसका 3. full So. What about you, Gil? I gotta say, I agree. I think we are definitely moving on to that game of control. ये गेम खत्म होने के बाद थोड़े कार्ड well, अनबॉक्स that करेंगे hard मेरा point was quite close. और दिखाऊं तुम्हें एक और बार 223, yeah. 223 is something not too bad, absolutely, for the side of Mayhem. That was not a victory as they wanted, but ये सब खोल के Search रख and दिया Destroy, हमने we हम लोग ये should, अनबॉक्स करेंगे वन at पीस least from what we've seen so इसमें थोड़ी far, बहुत और पैकेट see बचे हुए them तो हम लोग वन tie पीस वाले things का up and take us to a game One 3, Piece take us to a वाले game unbox. of control, and as क्या पता हमारा such, Gear prolong 5 a little लूफी bit निकल longer जाए the action set here क्रेजी for हो the जाएगा भाई Mates. बाल खींचना Okay, वाली but चीज we're है moments away from getting into the game. Before we do that, I want to find out just how accurate you've been on your prediction shift. You said coming lights in, out. like 100%? I don't know if I've been 100%, but I've been really close. I know that Twitter's going to kind of flame me a little bit because COD Mobile Esports News posted like, who do you like see winning? And I had Wolves losing to Kings, but Kings absolutely trolled the maps. Like, you don't just give Wolves their best map mode combinations. Like, That's Kings threw. questionable at best. Like, they absolutely threw in the map selection process. So if I would have seen the map set, I would have said Wolves would have won that. And I think so far, I've been pretty close. I mean, it's just really interesting, I think, to look at which teams have done their homework on their opponents and which have just gone and said, hey, उसमें क्या है पता है क्राउन ज़ीनित में ऐसे पुल आते हैं ना works out in your favor, other times it doesn't. पागल हो जाएगा बात We talked about the prize pool a lot too, Gil. क्राउन ज़ीनित Obviously, बहुत महंगा that's what सेट भी they're है fighting for in ऑलमोस्ट terms of डबल है money, इसका but it's पैसा that trophy on the stage. We got a chance to talk about how cool that trophy looks. I love it. I love it. I ऑलमोस्ट gotta say डबल that पैसा है trophy is just ऑलमोस्ट के थोड़ा ज्यादा ही है डबल अब बता दो बहुत तगड़ा निकला कार्ड बट ऐसे कार्ड निकल जाते हैं ना भाई मजा आ जाता है बता दो तगड़ा कार्ड निकला सीने से निकला One only in their way. We're gonna move on to Search and Destroy. Few kills are gonna be traded, and through the smoke, we're gonna see cartels pushing towards लेट्स गो बता पहले बता दे एक्सक्लूसिव की में हम Jesus saving his ally. That was really close. ठीक है मेरा That was safe. एक्सक्लूसिव Caesar was in a position there for a moment where I thought he was going to blow up the entire play, but fortunately he doesn't get traded out. Mayhem now with the plant, and just for reference sake, Mayhem should feel pretty comfortable on this map mode combo. They've been a good search team. थोड़ा Neil, does he get an angle here? No, not quite the wall bang. Veer also working with the scope, so two snipers taking on the two subs and AR of Team Mayhem's post plant. And this, But यार if he मोबाइल can में take him स्नाइप out to करना my इतनी boys, जल्दी does कितना not हार्ड होता feel है very ना hopeful. Nate does at least push one player out, but time is starting to tick. You got to go. You got to find your way on, and it's just not going to happen with sniper rifles. Here comes the push through. Team Mayhem get their first offense. There it is, doing a great job, and a huge part of it was Jesus. You said it. Caesar ये could have सारी done टीमों को so डे 1 से सपोर्ट much करता है भाई damage, but thanks to Jesus in there, Jesus saves, कितने doing a पैकेट great पे job था? to keep his teammates alive. He thought that someone might have been there. He was absolutely right. Takes that kill, and eventually takes that round now. Carrying the bomb is going to be cartels pushing towards B. No one is looking that way, and that is going to hurt like a truck. On the side of ये बाय द वे मेरे को जिसको पता नहीं है ये मेरे को एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करे थे उसमें ड्रीम हैक में ओटाकू संस्कृति चैनल चेक करना उसका वो पोकेमॉन कार्ड्स का ही चीजें डालता है देखना पड़ता है बहुत सही बंदा है मतलब इसलिए नहीं कि उसने मेरे को दिया बट उसलिए नहीं
उसको मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ You expect him to be the vanguard of this next approach. Neil hits a shot onto Jesus saves. That opens up the tires play. Creed will toggle the bomb. See if anyone will check this. Of course, you will have to and all. Perfectly played by Exclusive. Creed will get two. No worries, only dropping one in the process. We're going to go 1-1. Okay. That looks good on the side of Exclusive. I thought that they were going to struggle a lot more, but that was clearly not the case. One for each सबको डे 1 से सपोर्ट करने वाला आदमी है लाओ यार पिज्जा लाओ पिज्जा खाते Boom. Struggle in round number 2, and look at that evenly distributed kills on the side of Mayhem. Only Jesus above them all with 2. That's right, 1 for each else. 2 for Jesus through the smoke. Gonna find kill number 3 onto Creed. Raph gets surprised by सबसे प्यारा कौन है? always being that key player. सबसे मस्त कौन लगता है? ये. And if you're familiar with watching Shark during stage 4 with EU, they played a lot of firing range, and a lot of their defensive plays were all about smoking out mid, get Shark forward. Shark, man. That's got to be it. So it took him a little bit to kind of reestablish that, but here in round 3, major success off of just getting Shark forward in towards Wood. 2v4 situation, tough situation to be sure here for Mayhem, not only because of the numbers, but you've got Kings who will have to be trusted and pretty much relied on to open up a pick somewhere with the sniper rifle if Mayhem were to have a chance to bring these numbers back. Let's see. Right now it's going to be a 2v4. They do got control of the bomb, मुश्किल है Mayhem के लिए और ऊपर से एक स्नाइपर है. How they want to approach this interaction is going to be super important. बहुत Kings here मुश्किल. with a sniper, and so is Cartels. That's right, out of distance they got a fighting chance, and up close I think Cartels may have picked yeah, it looks like he picked one up. I think he started with a Fennec, and I think he picked up a scope. Okay, that would make sense. Either way, he's rocking both weapons. It's really just which tool is better for the job at this point. Absolutely. And well, in here, I was talking about a minute ago. Now it's only 30 seconds left. They gotta choose something, and I'm not too sure if that's the right one. If I'm being honest with you, they are all moving in there at the same time. Veer completely set onto the opponent, takes that kill, and Caesar does as well. LILYVILLE की next video कब आएगी? Sunday को. All you search and destroy nerds out there, I love that in a 4v2 exclusive, don't say we're going to split our resources and go 2 on one site, 2 on the other. Let's just 4-man stack B, and if they end up planning at A, so what? We'll just retake. So I love that, just not throwing any advantage away. And again, like I kind of mentioned in the past, like exclusive really didn't feel like they threw away their series versus Volt. So it looks like they're coming back with some major composure here. And with Shark, once again, look where he finds first blood. Front wood. I swear to you, if these teams did their homework, they would be saying, watch out for Shark playing through mid. Now Caesar, next one up. Easy peasy, no problems. Plant is on to Mayhem, struggling with numbers. नहीं यार मैं मंगाने लगा था पापा ने रेड मार दी गोभी सब्जी पकड़ा के Exclusive. Wow, crucial round right here. Mayhem have to have an answer for this play from Shark up mid. And the best response, you can do it in one or two ways. Either number one, you throw a lot more utility early to flood the middle of the map, or you bring up a second scope and you try to find him before he can get to the front of wood. There's that smoke that I'm talking about. Every single time, expect Shark to do just this. A little bit more patience this time. Shark not quite committing to get forward in towards wood, but you know as soon as he gets some sort of contact from his teammates, he'll be quick to try to follow up and see if he can find first blood. I mean, that's exactly what you expect from a Shark, right? टेप लगा के बिना रखो इसको अंशु भैया एपी बहुत मस्त वीडियो बनाते हो, हमें हंसते हो, दिन बनाते हो, बस एपी अपना ध्यान रखा करो, लव यू भैया, एक दिन जरूर एप्स मिलूंगा. ये रोटी है It's still complicated. It's not even easy for the side of Mayhem. They are trying to find an opening, but you said it yourself. They are super well organized. भाई आवाज कर करके खा रहे हैं फ्लीट भाई बढ़िया करके. Actually find an opening. And the thing about it is, that changes things. I was about to say, Neil dropping for first next blood stream doesn't really give Mayhem a green light to go anywhere because Neil's next just stream होगी floating कल with को the bro. sniper rifle. But now that Same Caesar's time. down, this is where all of a sudden 9 बजे के आसपास होगी next stream कल को. this is the right call. Go over towards कल को रात को 9 बजे हम लोग दोबारा देखेंगे इसका डे 2. Just stay away from सारे आ जाना टाइम पे. Veer has to pick up a मजे scope करेंगे. and find a way to connect. Sees one crossover towards Scar. Quick snipe not going to land. Little flick shot also going to come up a bit astray. यार फ्लीट भाई डबल क्लच क्या होता है कुछ पता है? The bomb now coming forward. Shark trying to keep them at bay. With a Fennec at this range, mostly tickling, and Raph will be able to punch Shark will finish him off, and that will be a plant with Mayhem in a 5v2.
समझ नहीं आ रहा डबल क्लच का डबल क्लच बोलते थोड़ा हार्ड होता है चलाना बस समझ नहीं आ रहा डबल क्लच का कांसेप्ट होता क्या है लैम्बोर्गिनी और इन सब में होता है ज्यादातर Missing your old streams with Chalky. Jesus, close it up. Another round of fire going in Mayhem's way. That's exactly what they were aiming for. But it's still concerning that the beginning of the round. Missing your old streams with Chalky. Me too, bro. Me too, I think, you know, if you're Mayhem and you're sitting here saying we don't have anything up our sleeves in terms of dealing with Shark, just don't challenge. But वही है यार, फिर अब देखो ना करण भाई छोड़ चुके हैं YouTube. This every single round, I promise. सामे भाई छोड़ चुके हैं. Pink slips are out. और सुहानी जी का पता नहीं. Might be smelling something. He's thinking about it, questioning, do I not? It's all about do I not? Yeah. Oh my god, the grenade kill is huge for Beer. Still not everything. So the thing about this is Shark doesn't have to make a play any further than where he is if he doesn't want to, because he's got, I was going to say Caesar's watching over the top of him, but Snipe from Blur does connect, so now you're going to rotate Creed over to assist his defense, and Shark now has to feel like he needs to make a play. So he's going to try to sneak into wood. He sees two different players cross, but his position is now made a no. 3v4 है बाबा. So it's all about can he get out of this spot and keep his life a little while longer. Mayhem giving him a lot of credit. Will this back off? Trades do come through, but numbers stay with Mayhem on the offense. Gotta love it, gotta love it. 3v2 right now. Two snipers on the side of Exclusive. Creed and Beer both alive, up and running. There's bomb control by the side of Cartels, who is yet to find a second kill so far this game. They are all going through A-long. And through the smoke, look at that, there's Creed finds one, goes for the second, tries to run away. Not going to be fast enough. Cartel takes that kill and immediately capitalizes on it by planting the bomb at a distance. Beer with a sniper in hand, misses the first shot, goes for the second, misses again, goes for the third. Oh my god, pure chaos on the hands of Beer, who is losing his mind. Only 35 seconds remain, but I don't even think that's necessary. Beer continues to push forward, but I'm not too sure how much he can do. Tries to bait them out of the hiding spot over there on trailer. Tries to commit onto the fusing. I think he's gonna do it. No way. अब वो सही में कर रहा है. Oh my god. हो गया. What? पूरे कड़े डिफ्यूज कर रहे हैं भाई. Definition of ninja defuse. There is no way Team Mayhem just lose track Pros of the ball. don't They did fake. everything right. Literally everything right, except for the 5 seconds of diffuse that comes through. What a meltdown. And so now, swap the sides मेरे को समझ में नहीं आया. don't expect एक कवर था, नहीं एक कवर था, उसको तुमने इस साइड क्यों प्लांट दी? वो तो है. कि बंदा छुप के डिफ्यूज कर दे. या तो तुम उस साइड खड़े हो. On offense, he would try to get in towards trailer. This is a more labored approach here for Exclusive, trying to feel out what Mayhem want to do on defense, and I'm sure there was some post-round celebrations to be had over the मेरे को लगा इसमें वो है. Expect this to be kind of one of those clinical breakdown rounds here where Exclusive is going to try to feel out where Mayhem are, and then use Shark as kind of the tip of the steer. Steer? Tip of the steer is a totally different thing. Cattle ranchers in Texas would be happy about that, but nowhere else. Oh my god, and I'm not too sure. Okay, I see you. बंदे ने नीचे गिरते मार दिया उसको. I'm not too quite sure, but there was one North American team that tended to struggle with getting into the defuse. I'm not too sure if it was Mayhem, may have been some other, but really questionable here for Mayhem to allow that to happen. Now, the shotgun, take that. First kill goes for the double. Caesar not going to allow that to happen. The trade is there. So हो रहा है, मेरे को वही लग रहा है, ये exclusive ही जीतेगा. Forward, the bomb is going to be in the hands of Shark. From day one, Mayhem. I thought for sure it'd been someone like Caesar trying to play for bomb, but it's fine either way. Bomb gets blinded, trade comes on the backside, so Neil cannot watch this flank. How do you set up your post plant here if you're Exclusive? Oh, shot towards America, but Caesar gets caught. So now it's just down to Shark for the 1v2. Fennec, no utility, slides out. Cartels, hops, Kings, caught with a pistol out. What has happened here? Shark for the 1v2. नहीं निकाल दिया उसने सही करा टाइम पे उठ गया. वो लास्ट वाले राउंड जैसा हो जाता ना, सर लेटा हुआ था, उसने दोनों को ले गया. वैसे वाला नहीं होता. फिर से सेम चीज करी उनने. प्लांट उस साइड कर दिया, अपना इस साइड छुप रहे हो तो बंदा करेगा ही डिफ्यूज. हाँ, अच्छा ऐसा हो सकता है. हो सकता है, अभी सब उस साइड ही कर रहे हैं. ये भी हो सकता है. वही छोटा सा बॉक्स होता है उसके वहाँ पर. क्या पता Mayhem, ladies and gentlemen, this is not over till it's over, and वरना इतना बेवकूफ तो कोई नहीं है.
makes a lot more sense than Shark, which is the historically hyper-aggressive player that likes to be in your face. Kings. Oh my God, तुझे पानी पीना है? a triple onto Caesar. Answers back, not going to be enough, and all of a sudden Neil is completely on his own chip. Well, you know, I was just about to say, I like this exclusive. You're hitting something a little bit unorthodox. You're throwing fake nades mid, which we talked a lot about. Shark is going to want to live in the middle of the map. भैया बहुत मस्त वीडियो बनाते हो, हमें हंसाते हो, दिन बनाते हो, बस आप अपना ध्यान भैया मेरा सुपर चैट मिस हो गया ऐप. लव यू भैया, एक दिन जरूर आपसे मिलूंगा. थैंक यू सो मच सैम भाई, लव यू यार, लव यू दोस्त, पक्का मिलेंगे एक दिन, जरूर से मिलेंगे भाई. Now even, ladies and gentlemen, that's right. 4 in favor of Mayhem, 4 in favor of exclusive. Raph here defending with the shotgun on the trailer through the smoke. Shark tries to go forward, feed with the bomb. Will have the opening, tries to plant the bomb as I speak. बहुत close हो गया है, That's right, no one has died, but the bomb is down. 45 seconds on the clock. So far, Creed, 8 kills, wants to go for more, tries to push forward onto the opponent. And Beer will open up the floodgates here. This is freaking brilliant from exclusive. You're running a 3 SMG close quarters battle up front, and both your snipers are watching the flank. Compositionally, this is a masterpiece. And the post plant is not being threatened at all. नहीं है क्या, बंदा बैठा हुआ पता है उन्हें. Jesus is going all the way back through red lockers. Does find one, but again, he just doesn't have the long range weapon until. Time नहीं है, 13 सेकंड बचे हैं बस. Left on the ground. Time to complete issue, 10 seconds. Got to go quick. नहीं हो पाएगा. हाँ देख deep plant वही होता है. Nice opening shot. Okay, GG bro, GG. Didn't make a difference. Shark was able to clean things up. But I love that post. सब मर भी जाते तब भी diffuse नहीं हो Throw all पाता. 5 members over towards the backside of trailer. Toss all your utility. Get your SMGs up. भैया आपकी GF नहीं है. Snipers go back. Everything's peachy keen. No worries. 5-4 up. Go exclusive. Such a clean round for exclusive. There was a single second where they were shaken by Mayhem, but like you said, they were so well organized and coordinated that it was pretty easily to adapt. Wall bang होता है कैसे? We'll find the first blood. Beer. We'll find a double. In exclusive with the opportunity भैया to ग्राफिक है यार इस गेम की, पता नहीं ना भाई. again, and this time in comparison to last round, they are not 5-5. It's 5-3. जितनी बार भी देखो महंगा लगी, next level दिखता है And एकदम. that is just a bad. Was that a chopper? Jesus, hello? Going to the chop. मेरे को distract कर रहे हो यार. The whole thing about this is फिर क्या है वहाँ से पैर लटका हुआ है भाई. जी भाई. ये क्या स्किन है ये? Now that that's off the table, how do you retake with this? I got no idea. Here comes the defensive smoke. We're about to find out, brother. Everyone's got to push through this, and Jesus just needs to be a bullet hose. Not going to work out. Easy post plant again. An exclusive, I love this. Comparing their Season 4 stats to Search and Destroy to what we're going to get this weekend, these guys may not be fair, because Shark changes everything. It does. And Animus loved this map. Flat out when he was playing in Season 4 because of the ability for Shark to take over. That is occurring in front of our faces. 9 kills for Shark. And now Mayhem are going to try to change the tone up a little bit by getting aggressive on their defense. Neil doesn't quite see anything, but Mayhem also draw the line in the sand, so we need to get first blood. Let's back off, make sure we get the defense set up. Yeah, it makes sense. It all makes sense. They were preventing the side of exclusive from doing the exact same thing, and once they realized they were not doing it, okay, let's back down. Let's go try to just form a different strategy. In here, Kings, with the opportunity to take that kill to Shark, who was a bit confused by his presence. That is a huge kill for the side of Mayhem, who now know that the opponents are over there. Kings finds a double, gets taken down. Creed with the opportunities. Jesus with the knock onto Neil. Jesus 4v1. Creed, and now being completely on his own, is away from his allies. 1v3, and they know where the bomb is at. There's nothing that they want or should do. Just don't leak him. Right. Flat out. I mean, Veer's got a ton of time, so there is a chance that he can finesse the clock a little bit here for a possible 1v3. But like you mentioned, Mayhem having the awareness to bomb is down. You just don't peek anything. Play good trade positions. That should be it. So happy birthday, Samir. Everything should be fine. Okay, so good stuff there for Mayhem. I like the idea too. Again, just to kind of give a little bit of sauce and some credit over to the side of Mayhem. Change the tempo up. Try something new. What's been going on so far hasn't looked all that good, so you play with a little bit of aggression through A. They don't find what they wanted necessarily, but hey, I still like the idea of it, and I wouldn't be surprised if they do it again. Just because it didn't get tested the last round, and yeah, they're again gonna try to get back forward, see if he can shut down a play early. Once more, exclusive back off, Beer gets first blood, and now Mayhem are in big trouble. पहले अंदर आना होता है ना, फिर बाहर जाना होता है. That was a completely different story, and मार लाते इसको.
the side of Mayhem loses one by a sniper shot of who I think was Neil, and then a nade kill also drops down another player on the side of Mayhem. And ladies and gentlemen, this could be the breaking point for Mayhem exclusive. We're not happy about losing against Ball. You said it yourself, they were unhappy about their results, and right now, right here, right now, they're trying to close it up as they begin to plant the bomb once again by the hands of Creed. He's planting the bomb, he's taking the kills, he's just carrying like crazy alongside with his teammates. And Raph had to he had to contest with a shotgun in hand. He has to be enabled to move. And well, with Blur dropping both top barrels, it feels like this one's going to be much better range. Play from Cartels at mid-map. He does catch Neil by surprise, but again, he needs to find more for Raph to even be a threat here. So they're going to work this together. Shark in the back. He does well to get a 1-for-1, and Raph had not picked up the SMG. He's still sticking with the shotgun. And again, जितने भी फैन हैं ना मेरे भगवान ऐसा मत देना एक बस bad with exclusive taking a 7-5 and sending Mayhem to an early elimination कोई भी ऐसा ना हो बस फ्लीट आर्मी में भाई I'll tell you this much, I believe I saw आज यहाँ कल को day one उधर day one सबकी वीडियो देख रहा हूँ एक बार the opponents as they won the match. I turned around, he was like doing that band thing, you know, like he likes to do unto his opponents. He was like, I gotta do it myself. And then right after, of course, you gotta be saying that it was a GG, because it was great. It was great to see the side of Mayhem constantly try to adapt, but the same way that we witnessed on what not witnessed but knew about the hard भैया कि जी Minecraft में bottle वाली मतलब just kind of speaking to that, we didn't get to see it, but that was a great map for exclusive. I thought they did another. Was looking at how the veto process went. I think exclusive came back together and said, okay, let's take a breath here. We got our first series out of the way. Let's play to our strengths and also consider who we're playing up against. Take away some of theirs. So it was a very even map pool. But I love the fact that exclusive get the takeoff that they want, and then more importantly, I think firing range, no matter how long exclusive lasts through today or into tomorrow, I think firing range is going to be an issue for a lot of teams simply because Shark plays the map so vastly different than anybody else I think that's out here. Yeah, you could have said that more perfect in there. It's just crazy to see it. He does not show a single piece of fear. He's got a plan and he sticks to it. Does not matter what. I bet that more than one time there's been people screaming at him just to do something else. He's like, I got this. I know what I'm doing. Don't worry about it. And most of the time he takes it. Again, there's the way. I told you all. There's the way. My man Beer was pretty happy about what happened in here. Look at those numbers. 14 kills for play. And it's just, again, you look at let's just say it what it is. That's 24 kills out of SMG. which है मेरी girlfriend चुड़ैल from day one. 12 rounds. That's a really good point. And then of course, you know, you have Veer and Neil that are locking up scopes, and they're going to provide you a first blood every now and again. So I think firing range will be a staple for this exclusive team, and hopefully the other teams are at least paying somewhat attention to the voice coming over the loud view, because I think that that's going to be something that teams need to keep in mind as they go through. All right, well, I'm glad we got to catch that reaction there, but if I'm not mistaken, it is FDOT's time yet again, standing by with an interview with one of our winners. You are not mistaken. I'm standing here with Veer. Congratulations on the win, first and foremost. Taking down America, is that a big deal? Yep. वहाँ थोड़ा awkward moment हो गया था ना? Kinda, yeah, because like we have a lot of. America, is that a big deal? I'm standing here with Veer. Congratulations on the win, first and foremost. Taking down America. देखा तूने क्या हुआ? नहीं आवाज कम है नहीं समझ में आया नहीं आवाज तो चाहिए भी नहीं अच्छा हाथ मिलाया उसने ऐसे कहा कि I'm here with ऐसे करके तो उसको लगा हाथ मिला रहा तो ना ऑलमोस्ट उठा दिया था फिर ऐसे डाल दिया अरे हाँ ये भाई देखना ये देख अरे भाई अरे हम बिना ऐसे करके करा लो Congratulations on the win, first and foremost. हाथ पीछे क्यों करा बट उन्होंने पटाख से हाथ निकाला और फिर ऐसे कर दिया भाई देख उसको देख भी रहा साला कुत्ता मेरी बेइज्जती करा रहा है यहाँ पे हराम खोर गया देखना देखना फिर से देखना रुक जा इसको स्लो मोशन में देखते एक बार मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि यार ये देखो वो देखो ने डांस दिलाने का और नो पटाख से ऐसे कर दिया पीछे क्यों किया भगवान ने वो देखो ने पीछे कर दिया भाई 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 ये कर रहा था भाई ऑकवर्ड मोमेंट ही बना रहा था उसके लिए मेरे से लिख के ले दो भाई ट्रॉफी कितनी कूल लग रही है बहुत ज्यादा Down America, is that a big deal? Yep.
We have Shift up here on the desk with us, hanging out, and somehow he has managed to multitask while casting. Yes. बुरा मोमेंट हो गया भाई के साथ मैं तो नहीं भाई के कहती साथ यार। मोए हो गया on stage. Lauren, a magic man. How about this? Not only is that a very impressive 2-0. अंशु भैया प्लीज 24 घंटे आज लाइव स्ट्रीम करो। डन है ब्रो, कर दे एक बार तबीयत ठीक हो जाए बस। 129 ऐसे बोलने लायक हो जाए 24 घंटे। real. अभी बोलने लायक भी नहीं है यार। 2-0. Also, Inco beat Powerhouse in their first map, and Godlike smoked Kings in their first map. So Oh, that's casual. Bolt is the story. Godlike versus Powerhouse होने वाला है शायद। I'm just really as surprised as Let's go, a boys. lot of you guys are. Godlike. That's not Godlike only the बाहर victory, नहीं। but like you mentioned the numbers that they dropped. I hope now you हो भाई। टॉप ब्रैकेट चल रहा है ऊपर It मजा आ shakes a जाएगा। lot of things सब up. लोग जीत के टॉप ब्रैकेट We've seen now Loops defeat Mayhem. Yep. We've seen Mayhem drop to exclusive. We've seen Bolt defeat Loops 2-0. There's definitely opening a lot of room for all these teammates to just show themselves today. I'm at a loss of words. I feel like I'm at a loss of words. Yeah. Bolt haven't lost a map. Not only today, but also when they were playing their Season 4 playoff, they 3-0'd everybody. Is there anyone else? Oh. Bolt is undefeated in Snapdragon Pro See, Series. this is why we love the Snapdragon Pro Series. Okay, we thought we knew what was going to happen heading into it, and we're getting some expected results across the board, sprinkled in here and there. But those underdog stories, that is what will create an epic day 2, potentially change some things heading up now into the championship as well. भाई बोल दो भाई, Godlike आ रही है, बता दो यार। To take down आ Bolt. जाएगी तो मजा आ जाएंगे यार, एक और मैच देखने मिल जाएगा अपने को। At this point, that's the only option, because I mean, do we know जोर anyone से else is दिल लगी 2-0 तरफ to this No, no, point? no. I don't think anyone else is. I feel like most of them have been Q9's 2-0. Godlike. आ रही है Just क्या? 2-0. All right, well, you know. लगी है भाई। Well, we don't even need a bracket because Shift has all the दिखाइयो कहाँ हो रहा information है? on his cards and in his brain. But we still have so many more matches still left to go. कार्ड खोलो, On चलो our आज। side, it's time for another short break. चलो, Match number 5 One set up. Piece is Right real. now, One players Piece is are real. ready to get into it. So And don't go we anywhere. are the One We'll be right back Piece. with more Call of Duty Mobile. Wealth, आ जाओ। fame, power. I have it all. Now I want my grandson. ला मेरा बच्चा दे। नहीं, गार्प का है, गार्प का वो है ना वो तो। ना गार्प का ग्रैंडसन कौन, लूफी है? और गार्प का बेटा वो है, गोल्डी रॉजर। नहीं है? गोल्डी रॉजर एस का बाप है। हाँ, सॉरी माय। और फिस्टिस गोल्डी रॉजर तो गोल्ड रॉजर ही है ना? उसका डी नाम से हटा दिया। Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming. उसकी मोम भी। Samsung Galaxy S23 आ जाओ Ultra. गाइस। चलो। Monster Energy. It is One Piece time. इनकार्ड्स की वैल्यू होती है। वो हटा नहीं रहा। ये वो है And क्या? the United States Air Force. अब सही कर रहा देख। ये 1080 भी है ना? 720। ये? हाँ, बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना। भाई इन कार्ड्स की वैल्यू होती है। हाँ अच्छा निकल गया तो। मैंने सब हाथ निकाल दिया, सब में अच्छा निकलेगा। From day one. छी यार, पनौती लगा दी कुत्ते ने भाई। छी यार। From day one. अब सोचो सब में वो निकल आए लूफी। ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। वो यार, लो हेड पहनो। भाई लूफी, गोल्ड रॉजर, वो शैंक्स, लेकिन मेरे को वो उनके तो निकल ही रहे। शैंक्स। अच्छा। मैं तो कहती हूँ चॉपर निकल आए। वो कहाँ है? मजा आ जाएगा। चॉपर निकला तो मेरा। तो ना काई, let's have some party. ओए बोकू आडोक्ता, टोनी चॉपर। ओ मचीरो तो ना काई, give me some party. बोलना कोई कुछ? हेलो। आ रही। चलो सभी लोग थोड़ा सा प्यार बरसा दो चैट में, हमें कुछ अच्छा मिले। चलो ये वाला, और फिर हमने मारा ये वाला। बहुत ही गंदा आदमी हूँ। चलो एक एक चारों का करते हैं, फिर देखते हैं कौन बेस्ट निकलता है। हाँ ठीक है, डन। ये वाला सबसे पहले मैं खोल लो हर्षी वाला, ठीक है? ये हर्षी वाला है।
सही है सही है। रेडी? हंस क्यों रहे हो? अबे ये क्या ब्लर हो रहा है? हैं? अबे ब्लर ऑटोमेटिक। ये सही है यार। भाई गोल्ड रोज निकल गया तो शिट ब्लर हो गया यार, सही हो गया। ओए कुछ अच्छा है जस्ट नीचे। इसको तो मैं भी नहीं जानना। भाई ने डबल फ्रूट पकड़ा हुआ है बट बिग फैन अंशु भैया, बिग फैन एवीएम रोनी भैया, बिग फैन। नहीं नहीं लॉ, उसका लॉ का डबल फ्रूट है। देखा इसके पास क्या सर्जन कर ऑफ- रहा है? सर्जन अरे ऑफ आर्ट। अच्छा नहीं है, ठीक है। ओ भाई लोकेशन मिली है कुछ। ये देखा कौन सा फाइट की वन लोकेशन? पीस मिलेगा यहाँ पर। अरे वो तो नहीं है जो वो बनाता है, डो फ्लामिंगो बनाता है अपने हाँ thread ये से। वही है वही केज ना? है केज है हाँ, हाँ बहुत बर्ड cool केज। लगता है। देयर वी गो, इसको नहीं जानता मैं। ये इसको जोरो पेलता है। अरे ये तो भाई यार तो अपना छोड़। गॉड डिड यू सब। अरे बाबा ओ अरे भाई क्या लग रहा है ये कार्ड? लीडर भाई, लीडर लूपी कार्ड है, लीडर लूपी कार्ड। वो क्या होता है? भाई क्या अच्छा लग रहा कार्ड है? है, लीडर लग कार्ड रहा है है ना। यार। लूफी इज लाइक स्ट्रॉ हेड का लीडर। ओ पीठ की चमक रहा है। ओ ये वो है फुजिदोरा एडमिरल से। वो एडमिरल है। हाँ ये ब्लाइंड है। शिट ब्रो, ओके ब्लाइंड वाला एडमिरल है जो ग्रेविटी मारता है। मैं वो नहीं लेके आया। एक बार देखें क्या मैच कितनी देर में शुरू हो रहा है पहले? 3 मिनट में 4 मिनट में नहीं, मैच में टाइम लगेगा तो फिर वो जो स्ट्रीम का टाइम है ना। चोपा ये काइडो की फाइट का है, क्या लग रहा है? ओ दिल कर रहा जवाब। चलो सबसे पहले तो स्लीव्स और डेक निकाल देते हैं। टॉप लोडर सबसे पहले तो लीडर भैया को डाल देते हैं, ठीक है। इवन दो ये कार्ड चाहे महंगा ना हो बट मेरे को कार्ड बहुत अच्छा लगा। बहुत कूल है वो। और फिर हम लोग एडमिरल साहब को तो डाल ही देते हैं। तो फुजिदोरा सान वो है रिवर्स नहीं हॉलो ही है, नहीं रिवर्स हॉलो है माय बैड। ये लूफी को जानबूझ के छोड़ता है। हाँ बहुत दरअसल बढ़िया। आर्क में क्योंकि वो पूरा उसको बचाता है ना जगह को। वो उसको डाल देते हैं। अब बताओ किसका? मेरा कौन सा बताओ? अब मेरा। हमारा तो खुल गया। नहीं तो ये देव का हो गया मेरा थर्ड वाला। ये वाला, ये सेंटर वाला मेरा। ये वाला हाँ सेंटर वाला। हाँ तो बीच वाले तो निकालो। ठीक है अब एक काम करते हैं ना, मैं तुम लोगों के साथ पता है नहीं फिर तुम आवाज नहीं आएगी ना उसकी इवेंट की। सेंटर वाला तेरा हो गया, ये साइड रख दे तेरा, ठीक है। ठीक है। ये वाला तेरे को तू बता दे तेरा कौन सा। मेरे को ऐसे वो डिले में दिखेगा, मेरा सबसे लेफ्ट वाला। ठीक है ये देव का, ये रोनी का। पहले रोनी का खोल दे तो। चलो बताओ रोनी की किस्मत अच्छी है क्या? भाई मेरी तो बेस्ट है भाई, देखना भी शर्त लगा लो। इसमें से निकलेगा बिग मॉम निकलने वाली है। इसमें से निकलेगा उस सब देखना पक्की बात। गॉड डिड यू सब। अबे वो सोगे किंग निकल गया, अच्छा है वो। सोगे किंग निकल गया तो अलग बात है। सोगे किंग उस सब तो सेम ही है। वाह कुछ है, गोल्डन है कुछ। वो जिम्बे, वो जिम्बे आ गया भाई, जिम्बे सन ऑफ द सी। जिम्बे मालिक साहब। ओ हॉक नहीं नाम बोल रहा हूँ उसका मैं। पपेट वाला है ये तो गाड़ी वाला है। ये स्काई पीआर का है। वो सेलेस्टियल ड्रैगन रोनी। ये सेलेस्टियल ड्रैगन। हाँ इसके तो मारता लूबी पंच। ये देख ओ ये देख भाई अरे भाई पीछे भाई मैं कह रहा भाई बस एचपी कम लग रही है, दिखाओ यार। बट कुछ तगड़ा है पीछे। अरे भाई दिखाओ यार। क्या है रेडी? मेड है उसकी दो फ्लामिंगो की। एचपी अच्छी लग रही थी तो मेरे को, मतलब एचपी कम लग रही है तो मेरे को लग रहा था, बट मुझे लगा क्या पता टोनी चॉपर निकल जाए एचपी कम में। चलो कोई बात नहीं। बट कार्ड नहीं, बट कार्ड अच्छा है, कार्ड अच्छा है। हॉलो रिवर्स है ना? हाँ नहीं ये फुल हुआ है, फुल आर्ट है, देखना पूरे में बना हुआ है। जैसे अच्छा, हाँ। ये वाला था, ये हॉलो था, बट बाहर से कवर है, ये कटा हुआ है। इसमें देख रहा है जैसे ये वाला, ये भी नहीं, जैसे ये वाला देख, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कटा नहीं है, तो ये फुल आर्ट है। वो फुल आर्ट्स अच्छी होती है वो। लग रहा है यार, मेरे को लगा कुछ तगड़ा आ गया।
इसमें यार लूफी निकल आता, सोचो फुल आर्ट। ये कौन सा है? ये मार खाता है वहाँ साउंडी आर्क में। हाँ, इसकी वजह से लूफी वो हो जाता पूरा। खोल अपना खोल, इनका पूरा क्रू डिस्ट्रॉय यहाँ खोल, यहाँ वहाँ चलो घर ले जाके खोल रहा था। अरे ये इसी का मेट का दोस्त है। आराम से ला, मैं खोलूं यार इसके कार्ड। जी यार ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अबे साले यार भाई कुछ तो चमकते दिख रहा है मुझे। ये क्या है? ये रिलीफ है क्या? नहीं ये अरे वो है वो बर्ड वाला जो एनएल। अबे ये वही है, फर्स्ट आर्क में आता नहीं है जो उसका बेटा। ये ड्रेस वगैरह का नहीं, उसके पहले का है, रिवरी का। ओ गोल्डन। ये कैरेक्टर कार्ड है कुछ या फिर प्लेस कार्ड है? कैरेक्टर है इवेंट। फायर फिस्टेस रिपोर्ट है। नहीं ये रेड हॉक है क्या? दिखाना एक बार। ठीक है, रेड हॉक है उसने बेचे। तो अभी तक का सबसे बढ़िया कार्ड कायदे से रोनी निकाल दिया है। मेरी बात है। अरे अभी तेरा भाई जिंदा है, रुक जा जरा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरी बात नहीं है। अभी अब आएगा बेस्ट। बुरा लगा यार, मैं तो नहीं चाहती। अरे तुम मार लड़वा नहीं चाह रही मेरे भाइयों को। देख रहा हूँ मैंने तो अभी तक सबसे गंदा देव का डेक था राइट? ये क्या कार्ड होता है? ये क्या कार्ड था? खाली आग बनी हुई है इसमें लिटरली। देव सारा कार्ड में भी मौजूद है। रोनी का कार्ड भाई क्या चमक रहा है। अबे लास्ट कार्ड बचा है यार। ये तो ठीक है, यही है मेरा कार्ड यार। मेरे ख्याल से खोल दूंगा मैं अपना तब तक का। हाँ इनको अभी बात में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ सस्पेंस बना रहे हो यार, दिखाओ यार क्या है। चलो लास्ट खोलते हैं, ठीक है भाई? ये गलत चस्का लगवा रहे हो फ्रीड भाई, मेरा बड़ा मन कर रहा है पत्ते लेके आने को। ना भाई, जब तक बहुत पैसा ना हो तब तक मत लेना ये सब भाई। मतलब क्या कहना चाहते हो? गलत मत समझना इसको। चलो भाई फाइनल डेक। भैया मैंने जीटीआर किलर चंदा क्रीड़ा मछली पहले लूपी मार खाते हुए निकल गया भाई। ये तो मैं रखूंगा। ये फिर से आ गया नीचे बस। अबे यार कुछ नहीं है इसमें, मेरा सबसे बेस्ट था। चुप साले चुप। अबे ये 150,000 का। ये वो निकला है। अच्छा ये भी। अच्छा यही है लास्ट। यही लास्ट। हाँ अरे मैं बोल सबसे बेस्ट मेरा ही है भाई। आई एम द लक। और खोलने पड़ेंगे यार अब। हाँ लग रहा है भाई। एक मेरा भी होगा ना उसमें, तभी बोल रहा हूँ मैं। मेरा तो लगेगा इसका भाई यार थोड़ा मजे से नहीं आए यार। थोड़ा मजे से नहीं आया यार। पता लगा थोड़ी देर में पूरे कार्ड खुले पड़े। फिर बोल रहा हूँ मैं प्लेट भाई थोड़े मजे से नहीं आए यार। लात मार के बगा रहे प्लेट में। मजे। अरे यार to work on. We've been talking about this in esports. This is a day-to-day esport. Well, you might just be a little screwed as far as your bracket is concerned. वाह बटी हाइट बहुत गर्म है यार। Because we've talked about this a lot throughout the day उसका as पता well. नहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, सर में ऐसा लग रहा है। Individual case, but are there any players that we need to be keeping पैन में जाती भाई, खुजली वजन लग जाती है। For Q9 in particular, you mean? I think it's one of those things that I don't look at anyone in like specifically they have to be like carrying the team. I think all five need to be big, but I will say looking through the scoreboards, Yang has not had a particularly great day today to this point, so I think kind of going off the mantra of all five players when they come together, I am kind of looking at the guy that has not really been there to this point, and it has largely been Yang. Again, hard to really say that because Q9 technically are still 2-0, but the thing about it is they were tested just a moment ago versus Standpoint, which they should not have been. And I think that's kind of the biggest question mark here is, will they be able to keep up in the respawn against a very solid Wolves team, let alone find ways to beat the best Chinese search team, which is, again, on the other side of the coin, Wolves. And I'm looking at Yang to be the guy to kind of step up here.
right, I love that. I love that call as we're getting an opportunity to take a live कोई look. तू आएगा घर में घुस गया ना भाई बड़ा खेलने का सामान मिलेगा उसे ready to go, but we haven't gotten a chance to deep dive. एक कार्ड तो मेरे पास भी है यार Look, Wolves, we kind of got a little bit of a look at just a little bit earlier in this day. And I think that there's one thing that does immediately jump off the page. In between a lot of the different teams that we had last year at Worlds 22 to now Worlds at 23, 4 out of the 5 players are returning. You want to talk about chemistry? GTR का चंदा एक नहीं है दो है अरे थैंक यू सो मच यार ऋतिक भाई सभी लोग थैंक यू बोल रहे हैं ऋतिक को एक बार थैंक यू ऋतिक You did qualify. Yeah, you might be a little one-dimensional as far as how your respawns play out, but your search and destroy and control is something that you absolutely need to lean on. सबसे महंगी मेंबरशिप है कितने रुपए की है Zion Peg earlier, they dropped a combined 104 kills on the Summit Hardpoint. That was very, very close. You felt like that they should have lost. The slaying is there for Wolves. The team chemistry and cohesion to understand how to break as well as set up a lot of these hardpoints is also at an all-time high. Yeah, I think that is the best shout. It really does come down to, while we watched this Wolves team both last year and when they were at CDFI, it really had been those two particular players that really did a lot of the legwork in Respawn particularly, okay? We know this team is going to be nasty at Surge. They have to be. China's always been a Surge squad. But now that we start to kind of get the picks in, will there still be the comfort of Wolves going to Summit, which was by and far their most played hardpoint map? They're also a heavy-loaded Crossroads team on Control. Both of those two maps, I think, have broad stroke. You categorize play and you're going to win. So also get blessed with an opportunity to play on those type maps again, or will Q9 try to put them a bit at range and play a map with kind of keys to take off there? I don't know if that will जैसे जो उसका कार्ड होगा क्या कहते हैं उसे वो यार जो एंडर गॉड होगा उसका कार्ड बहुत रेयर होगा नियो गॉड डीमन गॉड जो होगा उसका कमांडर्स और सोचो ना कितना मजेदार होगा और ये बहुत मुश्किल से निकलेंगे समझ रहे हो और वो बारबेरियन एक्स का कार्ड होगा वो तुम्हारी बुराई की वजह से एकदम स्वाइप अल्ट्रा रेयर क्या मजा आएगा डीमन किंग का कार्ड होगा वैम्पायर का होगा वैम्पायर का होगा जैक के कार्ड होंगे अलग-अलग टाइप के जैसे एमडीबीएच जैक एक डॉक्टर वाला भी तो था डॉक्टर वाला जैक सारे जैक अरे मुझे अचानक से वो याद आया जब जैक पहली बार मीटेशन में आया था तो रॉनी पागल हो गया था रॉनी ने पत्थर मारे थे भाई मजा आ जाएगा कलेक्टेबल कार्ड जैसे नेक्स्ट लेवल 220 and भाई मजा ही आ जाएगा 250-249. But that's unexcusable. But Q9 looked really good on it when they played up against Standpoint, which is not the biggest litmus test in the world. So I kind of look to say Q9 may have an advantage here in map number 1. But then now I see Porsche 911 control, I don't feel as confident in that pick. I don't know if you have anything in particular on proper that kind of stands out to you in that map pick. For standoff, for control, I mean, this is just this is a map mode combination that you feel like has always been looked at when it comes down to China as a region. If there's one map in particular for control that they do not play, it's mostly raid, but I mean, standoff is something that's a little bit more comfortability when it comes down to both of these two teams. So not a whole lot as far as the day is concerned. But as far as the matchup, yeah, you're going to start to feel a little right. And I'm not going to lie, I just gave that to you because I was trying to look frantically for the Express stats when they played each other before. But Q9 he did tap me on the shoulder very aggressively with his pen. Now I think it is Porsche no एक का चंदा. Q9 did win both Expresses when they had played up against Wolves previously, both in Season 4 or their Masters, and then as well, I think, at CDFI. So that is kind of, again, you know, map set-wise, there is a bit of opportunity here for Q9 to upset Wolves. We'll have to see how accurate your predictions are, or how accurate they stay throughout the rest of the day, because you've been crushing here so far. We definitely want to hear from you as well. Let us know who you think is going to be taking this next one home between Q9 and Wolves, because it's definitely going to be a little bit of a back and forth here, as I believe we're moments away from getting into our 5th match on the main stage of the day. Let's dive into it. Yeah, it's going to be a fun one. And I think for Wolves, you have to kind of learn from what went wrong when you're playing up against Gundra until the last 30 seconds when you iced up. So let's see if they've made adjustments. Otherwise, for Q9, again,
again, just kind of looking at what they did versus Standpoint, it was very comfortable against a weaker opponent. So now a chance to play up against another inter-region battle. Q9 Wolves battle for China. Who is the best team in China? Let's find out. Apocalypse is such a slippery and fickle beast. It is a map mode combination that can quite honestly slip away from you if you make one honest mistake or even a dishonest mistake and you lose the spawns, which you can see team in blue, Q9 currently in possession of the right side of the map. Doesn't necessarily mean they're not going to be throwing bodies towards maps, and inside of P1 you want to try to keep things scrappy. But ultimately, when we rotate to the top right side of the mini map, that's where you're going to see a lot of time burn. I will say, just because we've tossed it out there, Peg's already got 5 kills. We're 40 seconds into the map, he's got 5 kills. This guy is an animal. A wolf, to be exact. Yeah. The crowd goes wild. 26-6, currently the score. Q9 will be bounced out of the favorite spawns, though, going over towards the second hard point. So look for Wolves to get themselves set up and chew into this already pretty significant deficit. Just comes down to can they get themselves going with a solid hold. Yeah, it's mostly going to be a break from the south side. That's why you're seeing the push through maps. It's actually a lot of information that Yang was able to pick up, seeing 3 players inside of maps, and then you can just look over the hop up to know that that's where the cross needs to be looked at. Still intact for the spawns. A lot of time to fight for here, too. Really good distraction here from Neon. Q9 double hitting over through the front. Able to at least get some success, but is there going to be a follow-up? Yeah, it looks like there will be. Okay, so very successful break. I mean, it felt like that was a laborious battle for a while, but a couple of kills over through tunnel leads to a chance for break. Wolves do not spawn out, though, so there is a chance for them to re-impress in this, and yeah, Jing will be able to get himself in for a double, and once more, Wolves supplant the setup and find themselves in the hill. And that is the hardest part when it comes down to P2. You can try to flood through ruins, and you can try to get into the front of P2. It is successful in a lot of different circumstances, but I would say that's still a job well done. Ultimately, you kind of deny the full 60, but if you are Wolves at the end of the day, at least you didn't get put in a spawn trap. Now we're rotating over towards B3. The south lane is completely open for Wolves. Nice nade coming through from Pegwa. Of course, end up taking down 2. That avenue just became so much more free, and now you're spawning out of your Q9. Yeah, that was a late commitment from Q9, trying to make things nasty over the top of the second hard point. Doesn't fully work out for them, so technically speaking, they will lose rotation over to 3. But here at Helicopter in this trenchway, really it's kind of a 50-50 hard point. You can successfully hit it from either side, as long as the kills on the outside of the middle of the map do go your way, which kind of flip the script again. Q9 don't really find themselves on top of the kill feed. Getting the last one left, he will be taken down, and it will be a very comfortable early 20 seconds here for Wolves. Important to know that Wolves, of course, coming in towards this matchup internationally, or even in their own region, was 2-0. Could end up being a little bit of a foreshadow for something that might end up coming their way. They currently have about a 20-point lead, which is nothing to scoff at. But still, Q9 are able to walk their way back in all the way through maps and through the trenches. And look, Wolves are still effectively spawning in, over buyback useless. And now the Purifier is actually being invested by Sun. They really want to try to soak up the back scrap time, but I mean, you end up at least having way too much coverage across the maps. I believe that there is a disconnect, so we'll wait for League Ops to figure out what we're doing. I think the thing about it is, like, again, let's just speak plainly. The Eastern teams have not played Hardpoint as well, at least not at the same level that we've seen from especially LATAM and NA. A couple of EU showcases here and there that have looked solid, but that was more from like Animus and 117 who aren't here. So with that in mind, I think that, you know, when you try to evaluate what these Chinese teams are going to be, they have to do to kind of compete against your LGs, because that's the easy storyline. You can't give up holds. No. I think it's the biggest thing. And being able to showcase you can break hard points or re-break hard points is nice, but you have to be able to hold key hard points like P2. So even though Wolves do regain, there is a moment of like, you really don't want to see them really give away their first setup as soon as Q9 is forced to break for the first time. Especially on a map like Apocalypse. Again, it is a monstrous of a map, pun intended, because you can put yourself in a position where key fundamentals for hardpoint, such as what you saw from the rotation from Wolves, they were able to flip out the spawns about 10 seconds before P2 pops, and they still maintain those spawns because they did force Q9 to kind of flood in through the middle, or through the opening of P4, excuse me. And that's exactly what you want to see, especially from an Eastern team. Good hardpoint diversity coming through Apocalypse, not just summon or takeoff. At least they're able to do it there on Apocalypse, at least through the first set. Yeah, and I think the other part of it, just to look at the individual, gaming range में वीडियो दे दी है रिवाइज, you know, 5 kills in his first life. Surprise Pikachu face. एक minor mistake हुई थी. He's unreal, man. बस render हो रही है, हाँ. When we were sitting doing our prep, you look at players like Zai, you look at players like Peg, they're shredding the region. And I think most impressively was why Wolves were able to beat Elevate in that grand final came by way of those two in particular on that map 7 summit hardpoint that was like
one of the craziest finishes that you could have possibly have expected. But the thing about it is, like, every time we watch this Wolves team, it's all based on tight close quarters battles where their SMGs are popping off. And is there an extra dimension to their respawn besides, I'm a nasty sub, I'm going to go kill everything? I think it's also the consistency factor as well. This is a very long tournament. Like, albeit, yes, 3 days, like most tournaments, this is a very long day of playing COD Mobile. Regardless of the matter, I think what also needs to be talked about here, specifically in the respawns of both their break and hold potential, is their operator usage. When they do have those streaks, resource management is everything when it comes down to holding and breaking these hard points as well. That is why we sing the praises of LG constantly, because it's one of their biggest and brightest points. Now, at least for Wolves in Q9, you need to be able to have all of that plus some more. If not only you want to potentially take down each other here in a best of 3, but also in a best of 5 down the road when you are facing these Western teams. And that's the bigger point is, you know, the best of 5, there's going to be Eastern teams that make it to the top 8. Not going to say how many or who, but there will be Eastern teams that make it. They heavily value Search and Destroy. They're 1-3 and they're 5 in both their regional competitions as well as things like the Fall Invitational have lived off of Search and Destroys being kind of a fixture, especially for Chinese Masters. They play that 1-3 and 5 instead of just the 2 and the 5 like we do out here in the West. And it's so crazy to see how different the series looked at CDFI when they only got the chance to play 2 Search and Destroys. You know, they had to play 2 hard points and a control. And that, I think, is going to be, I think, the big testing point, because, let's be honest, outside of Wolves, we really didn't have any Eastern representation in the top 8 last year when we had double elimination best of 5. Yeah, I mean, same could be said for a lot of those Eastern teams, like you were already talking about. The international competition is something that we've always kind of licked our lips at, because we know and we are always told how nasty they are at Search and Destroy. But just because you can win a map number 2 doesn't mean you can get by on losing out 1, 3, and 4. The series might be over before you blink at that point, but still, regardless, it's nice to be able to see the diversity just come through in between last year in 2022 to now 2023, especially for the showcasing that we have for these Eastern teams and what they're able to bring as far as hardpoint is concerned. Keeping things closer, I will say that much this year, than what we saw from a lot of different teams last year. So here's kind of the point of conversation that, again, this matchup is literally who's the best team from China. And yeah, though Q9 comes out, like we mentioned in the intro, they're the #1 seed, but are they? Because CDFI, they didn't look particularly great. Wolves did. And there was that element of, hey, you know, Wolves already kind of qualified. Yes, the hard point on Summit was close. Yes, there was an overtime Search and Destroy when they played. That was a long time ago. And I think the more accurate litmus test came by CDFI, where Wolves were champions. And Q9 didn't make it very far into the bracket at all. So there is a little bit of this, who's the best in China for those 2 teams on stage. There's also this collectiveness of one of the 2 of us might be the best chance for the East right now outside of Bolt, who's the only other 2-0 team. It's like villains right now against the stage, but then whoever loses and makes it into that single elimination bracket for top 8. It's like, we hate each other right now, but should you lose, I become your biggest fan. It's tough when you end up having what I like to call these TKs, these team kills, right? Because I mean, both Chinese representation, #1, #2, respectfully, but you know, it's just one of those things again where there can realistically only be one at the end of the day. I mean, $1 million prize pool, there can only be one champion for the lion's share. Who's to say it's not one of these 2 teams, like we said, Q9 in the most recent LAN tournament at CDFI didn't have a Herculean run, but Wolves on the other hand absolutely did. So a lot of eyes are looking towards the #2 rather than #1, at least from our perspective. And we haven't mentioned this yet. We should. Whoever wins this game gets the top 8. You know, right? This is the qualification match for the single elimination bracket. That's right. So that's also super important, is you get to just end your day here and not have to worry about the stress of possibly playing up to 3 more series if you find yourself losing and still trying to struggle to get to a qualification match, getting into that top 8. So, and trust me, believe you me, there is going to be a team that is 2-0 that is going to find themselves facing the 2-2, and they're going to have one last match, one last chance to make it. And whether they do or not, I'm not going to make that prediction, but I know for a fact that if it's 2-0, will find themselves 2-2 by the end of the day. It's a hell of an opportunity as well, and I'm glad you brought up that point, because I was thinking about it in the back of my mind. I was like, you have the chance to end your day at 3 o'clock here. You're here in Atlanta, and so you can walk around DreamHack, go back, watch VOD, prepare yourself for a single elimination bracket, judging off who you might end up facing off against each other. And I mean, if you're 2-0 now,
and then say you lose this series, who's to say that your day is just over on the next one? It's simply not. You still have so much more turnaround that you have to do, and quickly at that, there's so much COD Mobile being played again, starting off with 16 teams. You can only have 8 at the end of the day. Yeah. So what? We've got these 2 teams are 2-0, and then the only other 2 are LG and Volt, right? Yes. Damn. That's unreal, dude. Wow. Okay, so that's kind of what's on the precipice for the rest of the day for you. I guess we really didn't set that up well. We definitely should have. The fact that we've got nothing but elimination matches and qualification matches from here on out. So it's going to get real juicy here, friends. And I think, again, whether it's Wolves or whether it's Q9 or whether it's Volt, whether it's LG, I think one of the teams that's currently 2-0 is going to find themselves playing their 5th match of the day at 2-2. I don't see all 4 of our teams that are 2-0 qualifying at 3-1. No, I don't either. There's a lot of good teams that are 1-1 right now. Yeah, I mean, it's World Championships, right? Yeah. You better hope that everybody is able to at least show up to a certain monicum. But I mean, even like for those teams that are 1-1 currently, like Dev bhai ko maine bula liya yaar, warna Dev bhai to tumhe pata hi kar raha hai. Of all things, you know, they able to at least keep LG honest in their best of 3. और 9 बजे उठते हैं. 9 बजे I gotta tell you, the competition, it started off really hot. Some people had a little bit of an easier opening matchup than the next, but as more teams become eliminated, as you start to lean into the later parts of this day, it's only going to become more and more difficult. Yeah. I think, well, for what it's worth, I think the only other matchup that we're waiting for to finish their 2nd of the day is the Powerhouse versus Inco game. In the last I saw, it was a 250-205 to Inco on the Arsenal, and then a 10-8 on Express Surge to Powerhouse. So they're playing a crossroads control, which I imagine Powerhouse won't be upset about, but we'll see if we can get that update whenever it happens, and I'll kind of let you guys know. Because that's tough to be 0-2 of one of those, out of those 2 squads? To be 0-2? Legit, अगर तुम group देखोगे चौकड़ी और तन्मय भाई का. It's also like the scary thing too. Is like you show up, you know you're going to be playing a long day of Call of Duty, and then you just absolutely fumble the first series, and then the next match just becomes more and more difficult. You don't have the comfortability to be able to immediately turn things around, talk to your coach, walk over the VOD, get in your own head. It's all mental, yeah. All right, here we go. It's a full reset after this connect. So we got a little small teaser and a small taste. Some things to look out for. First and foremost, will Peg start off 5-0? I think that's what I'm looking for. And not as clean as you would have liked if you're Yang. Second won't come through. So just a 1-1 start for Peg, but Wolves a little bit more comfortable here off their break-off. Keep the hard point at worst neutral for now. Just keep looking at Peg's kills right now. He's not going to start 5-0. Okay, all right. Mathematically impossible. True. Q9 though, I feel like it is a double-edged sword, right? You don't want to यार have somebody मेरे को just बार-बार vitality वाला मैच आ रहा है याद में भाई कितना हाई you don't want to be losing those spawns for P2. There's still a lot of time, of course, to be playing here for P1 before P2 becomes absolutely vital. But with that one kill that Peg just found over in the middle of the map, has to immediately turn around and find another kill inside of Ruins. Doesn't go their way. So I would say, albeit Q9 are losing as far as score is concerned, in a good spot should they maintain these spawns for 2. They're stabilizing. They're mitigating some of the damage that's being dealt. Yes. Easy way to put it for sure. But a really, really solid break off here for Wolves. Going to find themselves right over 30 points on P1. They will be late to rotation here to the 2nd. In their way will be Yang. Good start for him, by the way. We kind of pointed to him to be kind of a flex player and maybe an influence maker here for Q9. Of course, we can after curse him as soon as he's on camera. But Q9 still will hold on to spawns. And as the hard point opens up, looking pretty comfortable in the hill. Just comes down to will Wolves find any success on this last attempt? कितनी fast pace game है यार, बहुत ज़्यादा fast pace है भाई. 2 kills and Yang will clean up mid-map. Q9 बहुत तेज है भाई, बहुत तेज. These parallel spawns, so at least look at maps. You just have to maintain presence to make sure the hop-up isn't an immediate focus for Wolves. So by the time you're done dealing with all the players inside of Ruins, then you can shift your focus in towards the map. The desperation push, perhaps by Peg, to get inside of Ruins becomes unsuccessful. Still 20 seconds left to fight for here at P2. Very, very good stuff. And as I just looked down to check it, भाई इसके लिए बहुत स्टडी लगती होगी मैप की भाई. Control, so Inco are 0-2 in their start. Didn't have that on my bingo card. Professional compete करना भाई बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी. Q9 holds all the way through P2. They find themselves up just over 30 points.
on rotation. A couple of streaks to assist on this move over towards trenches. But Wolves there first in a pretty solid spot. Oh, Shannon over to the backside. Not quite able to make the flank work out. A bit surprised. Looked to get a couple of freebies. Not to happen. So now Demauchi able to clean up the bottom side of trench. Does have the Sparrow to work with. Q9 advantage in the operators. Also the ability for others to follow if needed. Demauchi only gets one. But Q9 successfully break, and they've got numbers here, so not bad. Yeah, and the operator advantage, as you were talking about, is the most important part. So how much do you want to snowball this? How much do you want to invest knowing that the spawns for P4 need to be an immediate focus in the next 10 to 12 seconds? And the answer, well, gonna invest a few more operators. War Machine, Claw, also being pulled out. The Purifier immediately shut down by Sun. But it's keeping all of Wolves at bay. I mean, this is a being able to find more with the War Machine means that you can push through Chicken Coop, you can make the spawn. It's Q9 club up on gets taken down by the last grenade left. This is going to get called in, trying to make life easy on rotation with the last couple of seconds going the way of Q9. Wolves have not found a single point of time since really about the opening of P3. And they're not looking all that great. Moving over towards new as the MP has also been called in. So Q9 are just, they earn the kitchen sink and they throw it at them. Take this. Immediately. And I think, again, once they had the kitchen sink, they literally just threw it at them. The answer had to have been right there for P3 just to force out more and more resources from Wolves, and they're still getting them online, by the way. So now you have to start investing the operators. Claws pulled out by Zai just to maybe try to sniff some time here. For Wolves, again, you've got the operator advantage here, late earning that bot. Oh my goodness, Willing from the side is able to take down two. Those are immediate shutdowns. Game off a three-piece. Peck the last one standing, but Purifier shuts everything down from the front door. And then, of course, right after that, the War Machine will lock the door afterwards. So Wolves a decent moment, but that's expensive for what has so far only been 7 points of operators for what, about like 10, 12 seconds? All that for a drop of blood? Sure, why not? 128 to 43 is going to be the end of the first set. Going back to do it all over again. Q9 have the spawns for P2, but that is, again, it's Apocalypse. So if Wolves can somehow, some way find themselves in a position where they can find all these eliminations, get the spawns for P2, who's to say we might not have a lead flip at the end of the second set? It's bold prediction there, proper bold prediction. Thank you. I don't know if I was giving you praise. Well, if I'm right, then thank you. There you go. It comes with a caveat there, Brett. Nice play from Sun, locking things down over towards Maps. And this one time is going to feel like the daggers just being dug in deeper and deeper. North of 100 all over it. Yang making life difficult with the gravity vortex gun right over the top of the hard point. Peng feeling like he has to make a play for times, tries to step in, but is immediately swatted away. And Q9's lead continues to grow. Oh my goodness, what happened to Wolves? Did they load in? It's hard to say. I think Q9 heard our conversations about hardpoint. They took it personally. Well, I think they heard the conversations about Wolves potentially being the #1. And they took that even more personally. 179 going in towards a rotation towards P2. And I know, yes, Q9 are currently from the outside looking in, but the leader's advantage is so egregious. They could play for breaks for the rest of the game and probably win if they're trading 20-20s. Absolutely they could. And that really, I think, do they have the maturity to kind of read that? I mean, you don't need it right now because you're literally just beating Wolves down. I mean, this is ugly from the side of Wolves. Q9 making it even uglier. You've got Sparrows, Claws, War Machines. Comeback बहुत tough है भाई ये बहुत ज़्यादा tough है. If they could still throw Goliath, and they probably would have been able to do so by now. I mean, this is a bloodbath. Yeah, it's gross. I mean, hello? भाई मारे जा रहे भाई. But these Wolves are puppies on the map right now because I would reckon that Q9 are making them look like the latter. This is disgusting. It's been a long time since I've seen an Apocalypse be a blowout this heavy in between two powerhouses, regardless of the region. This Chinese is just absolutely brutal. Resource after resource. This Chinese region तो नहीं है. Immediately just being snuffed out, shut down, not even with operators on the opposite side. Now Sun has a Purifier of all things utilized for this rotation over towards New. नहीं समझे नहीं मतलब वो जो skill set होता है ना उनका ज़्यादा Chinese का. हाँ तो वो है ना Chinese club Chinese लोग तो है वो. You have to get a full 60 here. भाई मार कैसे रहे हैं भाई dangerous है. Just do it. मोबाइल गेम में बहुत आगे हैं. Just do it, forehead. Math.
not looking very positive for the side of Wolves. Day 1 से And practice कर Q9 रहे will हैं. make things even worse, stepping right back in towards the trench. 45 seconds to fight for. Q9 technically could still win here, but I wouldn't figure that would occur. Very difficult hard point to soak up every bit of time. Underdog Finding the War Machine for a little bit of success. Does get shut down, only finding a single kill, and the specialist on पहुंच रहे हैं वो जगह जीतने वाले हैं. null. I mean, Wolves have found next to nothing in terms of kill potential out of these operators. Finding a way to get it done here a little bit late. But, I mean, at this point, it's just get out of the 100-point club, I would say. That might be a small silver lining. Yeah, I mean, like, maybe make it a little bit more respectable, but if you're Wolves, you're immediately already having conversations about the S&D. This scoreline is just way too far gone. And even when they were about to get over the 100-point club, I mean, Wuling just pulls them right out from the hard point, peg there for 2. And albeit they are finding slays, it again comes down to the consistency that Q9 have been finding the kills across the map. सबसे खतरनाक मैच होगा पूरे उसका. Very much so could be the final one. You have players for Q9 that are already set up inside the hill, but Malchi just slides on in. Xenon again there with the War Machine just letting him have it. Operator advantage there. Q9 break once again. Yeah, and Sun's now also got the Purifier out just to kind of go back and forth between the doorways. Does get shut down though, so an opportunity here for Wolves to break. They're also, they're calling it everything because there may not be another hard point, so they throw all the rest of the operators currently earned into the mix, and they will get past the 100-point mark. But it's still, I mean, yeah, small celebrations were to be had. And by celebrations, I mean maybe a small smile at best. I just look at the stage. I don't think anybody's smiling right now. Okay, yeah. Predator missile being called in. 20 seconds left here as far as P4 is concerned, and then we'll go back over towards P1. But I mean, to say that it needs to be perfect is just putting it lightly. 226 to 133 if Wolves capture all last of these 10 seconds. And again, this is the leader's advantage in a nutshell. Q9 could benefit just from hitting this hard point continuously because they know it's going to force Wolves to spawn all the way across the map. Last player through the mid-map scoop, of course, will be Zai. Needs to try to stay alive as long as possible. Maybe buy some time for reinforcements to come through. So here's what has to happen. Yeah. Wolves have to, at worst, 50-50 P1. They have to win rotation to P2, full 60 it, and then have a battle for P3 to stop the map. Oh, it's just that easy, right? Yeah, it's small laundry list. Yeah. Make sure you don't wash your colors with your whites and you put your delicates in the spin cycle. Brew love from Shimla. 236, 129, Q9 still going back and forth, pinstripe kill feed. That will stay the case. Hard point battle back to neutral. Still over 110-point game though, and it's just not looking convincing enough. Wolves also get flipped in the process, so the countdown starts to come through. 245, 129, and Q9 blow Wolves out the map. Mercy. From day मेरा one, पता क्या हुआ करता Could था. have been a lot. From day one. Here. Let's just मैंने पता पहला नाम क्या रखा था अपनी गेम में जो ऑनलाइन स्टार्ट करी थी. Lords of Demons. 100 points, but 250 to 129 off what things look like at the beginning. मैंने Clash of Clans में रखा था. Lords of Demons रखा था. Everybody was in the lobby. Q9 were forced to be reckoned with, and again, it's more than just okay, we'll fight for the spawns over towards new. It was how they understood when they had an advantage off the PC with the first set. They had an operator advantage. They knew that at least you had a few over by Wolves. P3 pops. They pull all their operators out at that moment in time. Angel Priya वगैरह for तुमने making शुरू fully करा. great. It was about an 80-point lead that you felt like Wolves were in desperation mode. It's just one of those things I will say, and this is where I was kind of curious to see how dynamic and versatile Wolves are going to be in Respawn, because the only maps they've really played are Summit and Takeoff. Two maps that are really just about can you outplay your opponents. You don't really necessarily have to force terribly difficult rotations and then you can guarantee full 60s because of it. Sure. AKA what I'm getting to is it doesn't necessarily provide the same snowball Indian opportunities you get on a Dragon map like में थे, Hacienda उसमें or Indian you Dragon get on में नाम Arsenal or you get on here in Apocalypse. And Q9 take the momentum. We're able to hold things down very cleanly on the first set, and it just put Wolves into panic. And I will also say, for what it's worth, I'm generally pleased to see how Q9 spent. It was never won by itself. It was always in situations of we need to break, so let's use these. Chill guys, chill. And it worked out perfectly. And you can see it reflected in the stat line. Everyone goes positive. It's just also sharing is caring. I think everyone's around 30+ kills in a minute of hard point time. So it's all what you want to see from Q9. They're passing the eye test for me right now in that Apocalypse at least. I will say this much, is that the selfish level, as far as Q9 is concerned, was not even there whatsoever. The teamwork was absolutely at an all-time high. And albeit Wolves, you felt like at a certain point in time, you needed that heroic moment. You needed someone to go full on Hercules across the map.
again, when you talk about the players that it needed to be, albeit they were finding at least some kills, there was no follow-up soon after. All of that, the equation plus some more, was so leaning in the favor of Q9, and it really did start off with just how wonderfully spent all those operators were. So Hardpoint has been done. It is now devastated. Now the real consideration comes to be what the hell's going to happen on this express search to destroy. We saw Wolves play earlier today. They look pretty damn good. Yeah, I don't necessarily want to throw all of my eggs into that basket. I'm more looking at the history which is long between these two teams on this map. And Express has been the search and destroy bread and butter for Q9. 5-0 in total from when they were going back towards their master seasons as well as CDFI. And more importantly, two of those wins were versus Wolves. Body mass index. Again, this was my issue, and I know those of you out there were kind of getting me on Twitter for saying that Kings are going to be Wolves is a one-dimensional team. If you just look at what maps they play, you're going to deal with two options in every mode. They play Summit, they play Takeoff, they play Firing Range, and they play Tunisia. So would you agree with me that Kings kind of played themselves in that series? Absolutely. Kings threw. Well, I mean, like, it's funny because I was talking about earlier, I don't know if you could hear me or not, but like they were literally telling us that they were going to ego chat on Summit. अरे नहीं मतलब बीच में ब्रेक हो गया था ना सही में स्टार्ट कर दिया भाई आज रात नींद ना आने वाली play it on your map, get rid of their best, play it on a better map for you. मैं भी मोस्ट प्रोबब्ली ये वाला मैच देख के चले जाऊंगा और थोड़ा कार्ड अनबॉक्स You can both veto your worst as well as your opponent's best. That's crazy. I know it. You know ball. Unreal. And again, just to kind of bring it into the now, feels like a little bit of a miss here. Yeah. Wolves have not beat Q9 on this map. They let it through. तो देख रहा हूँ देव भाई कब से चेयर पे बैठे हुए हैं सोए कैसे नहीं भाई Like, let's go. The amount of VOD that they have watched on this map. बाबा ये बंदा गाड़ी में बैठते ही सो जाता है जैसे भाई ये बेकार बंदा है भाई मेरे को पता है सो जाता है Take this in आदमी a 2-0 fashion. It's hard to बेकार justify बंदा just है from भाई 6-6 बेकार alone that this has any chance of going to that standoff control. As much as I would love to, just watch these two teams just continue to अपने batter पास each 7 other. कार्ड है I just और really एक have जने की to लेके तो देख think. I तो mean, नहीं you know देगी me. I love my numbers, man. I do know that. कोई बात नहीं मैं तो देख रहा हूँ I feel like this is going to be really tough just to get past the threshold. I feel like this is going to get probably reach 7 and Q9 are probably going to put this to rest. And that would be really, again, it shakes everything up. Because, you know, kind ये तो स्कैम रहेगा चलो seeing सबसे राइट वाला मेरा सबसे राइट वाला मेरा it's like, oh, Wolves are going to be the best team here. They're going to beat LG. I don't know how you can actually go into battle with that argument and think you've got water to hold. Like, they're so one-dimensional. And now we're seeing Q9 finesse the veto system, put him into trouble. And again, I don't want to sit here and say, like, oh, if Q9 wins, the Wolves are done. Like, they're still going to qualify probably for tomorrow. This does reveal a lot of the vulnerabilities that Wolves come into this event with. So, we'll see. Have they been able to fix things up? Last time these two teams played, it was a 4-9 in favor of Q9 against the Chinese region playing to 9 instead of 7. And off the get-go, good opening here for Wolves offensively. They get a lot of standing over toward B, and, well, our observer just got so caught off guard, he could not find anyone to swap to, because everyone died. Everybody just died. Oh, Frankie. And look, that is the tango if you're new to Express Search and Destroy. You go down towards B, everybody wants to check you over at the info station, right in the elevator at the same time. It's all paper mache now. Gunplay being showcased by Wolves, kind of reoccurring of what we saw earlier. Trying to rotate. अच्छा कार्ड है एडमिरल निकल गया फिर से किजारू मैं तो बोल रहा हूँ भाई बेस्ट लक ब्रो बेस्ट लक इन द गेम वाओ ओके सो लेकिन क्या वो स्टार्ट हो गया भाई वो जीत भी गए वो निकालने लग गए थे फ्रॉम डे 1 बोल रहा तुम्हारा भाई फ्रॉम डे 1 just literally कितना कुत्ता आदमी हो सकता है कोई भाई retake back through middle hall ऐसे कह रहा हूँ and it should be a little bit easier because these gunfights and these team shots are so electric. Wolves looking to change the pace. ये तो है चॉपर भाई कह रहा डॉगिन डे 1 चॉपर कुत्ता नहीं है अगर इंडिया रहे हो playing through stair side so there's actually nobody here today. They can't even stop this bomb from being planted. Oh no. This is a perfect read from Wolves. A game of rock, paper, scissors. कुत्ता कौन है ऐसे कुत्ता मैच हो गया He gets out? No chance. भाई मैंने अपने कुत्ते का नाम एस रख दिया एस कुत्ता सुनना होगा यार अच्छा सॉरी भाई मैं बोलूंगा एस मर गया था ये एस की टोपी तो है Close to the A bomb, but definitely not with any map control to allow them to even consider it useful to this point. Being able to clear out lockers for one. Good shots from Sun. Okay, time starting to be a bit of an issue though. Just down to King and Ion. And both only have scopes. Pretty up close and personal. King's in the backside. भाई जैक को बोलना ओली मारी स्कोप मारा क्या Stop shooting indeed.
And now it's up to Yang. Not able to do anything either. And get into the mix and say, thank you very much. You just simply never allow that to happen. You shoot until they're dead, and then you make sure that they're dead some more. That is inexcusable. Mostly inexcusable for their setups as well. You cannot be that one-dimensional on defense whatsoever. This time around for defense, Q9 at least splitting their affairs, but smoke's already out. It's back to B. Yeah, same setup here as far as the offense is concerned. Q9 changing things up just a touch. Heavy stack over towards that departures area that you were talking about earlier. But Zaya's kept them at bay. भाई अपन जितने में प्रिपेयर होते हैं ना गेम के लिए इतने में इनकी खत्म भी होती है And it will actually push Wolves into a pretty tricky spot here. Both down and everyone is scattered. And I don't know if you know this. This is my bad wordplay of the day. Wolves are a pack animal. Not where you want to be. By yourself. Yeah, big boo. Hey, you've done worse. I've done way worse. Yeah, way worse. That one's up there, though. I'm not going to lie. Yeah, some of the dad jokes that we've had on broadcast. I know it. That's up there, though. Hey, look, Q9 finally get themselves on the board, and it's all thanks to just being able to train off the information that they got very early on. You're going to need that adaptation plus a little bit extra. So Wolves not enjoying how that B hit went previously. Q9 still set up in the middle of the map, but they have players at least ready to defend A. ये जो snipe मार रहा है ना भाई यार उसका बंदा The mental chess right now is all coming up Wolves. Wolves are playing chess while Q9 is playing Go Fish. Okay. They're not even playing board games right now. They're playing card games. It's just that's one of those moments where again you don't see that the offensive smoke come through. There's not a lot of offensive utility being thrown, but you still over peak and ready to a sniper rifle waiting for you. It's just got to be more disciplined than that, especially with a team that has played each other a lot. So really convincing opening offensive here for Wolves. 4-1 up. Only one moment of panic, and really I don't even consider that to be a major factor in these first 5 rounds. No, I don't either. Q9. I mean, you really do feel like you need this last defense to go your way before we switch sides. And it's going to be a middle tunnel hit. This is the first time that Wolves have thrown this all offense. Yep. Q9 getting a little frisky, trying to see things over towards arrivals. First blood through mid-map is good. Q9 splits the offense up and around A. They do have a deep play, though, between both Peg and Jing. This comes down to can those two players actually be a difference maker, because you're going to need a little bit more help here for King to stay on top of this bomb by himself. And Oling is actually going to know that there is a threat here on the top of this bridge. So now it's kind of the question of can Q9 break this down, and the kills will give us our answer. Yes, they will. King, last one left. Good quick first scope, but second one won't be there. And Q9 will exit the half 2-4. Yeah, and that was a great collapse, ultimately speaking. And that is just express, or just search and destroy realistically. You put everybody to push through B, you see absolutely nothing. You find kills across the bridge and looking through the middle of the map. And you have to push through arrivals. You have to completely clear all of the spawn, and by proxy know that they're mostly on the departure side of the map, flipping the map included. At least Q9 stopped the bleeding ever so slightly. Now it's their turn for offense. Neon first blood. Heavy stack for the defensive Wolves right through mid, but Maushi able to kind of do some damage of his own, and his teammates will pick up on it. Zai following up. Oh my goodness, this guy is on pogo stick. It was all over the place. Eventually gets taken down by Willing. King now last one left for the 1v2. Bomb being planted, and King will try to play this from the middle of the map. Jump peaks will not see too much. I don't think he actually got confirmation on Yang's position, so this has been made much more difficult trying to retake this with just a scope. Yep, sure has. We'll have to see how much space King can honestly clear just with this hard scope. He's pinched in between two individuals, and just when you're looking one way, he gets pinched from the other. To be fair, he was looking down towards info, where he did die from, but ultimately speaking, Q9 do strike first on their offense. They bring this within one. Wolves on defense specifically versus Kings is where they shine the best, being able to play for the retakes, but it's all off being able to find that first blood. Sure. Can they adapt to Q9? 5-man hit for Q9 over towards A. Nade supporting over the top. Trophy Yeah, system skins also OP है यार utility, of which there's none. Wolves have instead defaulted to playing very heavily handed over towards B. Offense making its way through this smoke. Wait, are they going to try to get to bridge side here again to play their post plan? Mauchi seems to say, sure we do. 1v1 here. Wow, huge shot. Shuts down the play. Zai follows up. There's only one trade to speak of, but Jinan through the middle of train does keep things a bit more chaotic in favor of the offense. Nice change over towards Jing.
Sun playing forward still. Again, this post plant is still out in the open. Just comes down to who sees who first. Lots of 1v1s. Neon up top, able to catch one from the side. Just down to Sun. Over the top. He hits a hand. Maybe just a pinky finger. That's enough for Peg to slide out, find the kill. Headshot, headshot. Everything. Truly. लेकिन वही हो रहा है ये थोड़े एक दो राउंड निकालने फिर वो 3-4 राउंड लाइन चले He could reposition at that point. There was only 17 seconds left on the clock. And that 17 seconds was the biggest differential, and next to the hit marker, of course, which means that Wolves can extend their lead back to 2. Really cool push over towards A. Yeah. Not to see what Q9 decide to do on this upcoming offense. Q9 again have nobody looking at A directly, but at least they have mid-map coverage. Yeah, and I think the biggest thing here is Wolves, this is now the third straight defense where they have heavy stack towards B, and then they're just happy to play retake over towards A. That's right. And maybe something to be said about they know Q9 like to push through A, so you're going to have an opportunity for kills. Speculation, but this time Zai gets behind the offensive play. Checked out by Yang, who it looked like had an 8 in his hand, so he will fall for free. First blood tally, and King will know that he's probably in a little bit of trouble, so he'll value his life and just kind of play some heady angles in the back stairs with the scope. Xian was still waiting for the push all the way through arrivals. He's so late behind over by bridge that now Zai is quite literally up a train track without a paddle. Haven't seen that train come through lately either, so that could come into play. Zai finds the perfect timing. 1 for 1 there. Trade away. Chef's kiss, perfect. 4v3 hai. Follow up from K. There to check. And Q9 have fallen apart here offensively. G9 last one really to kind of make a play happen. And actually, hold on a second. LILYVILLE's going to actually push through A, and they're going to find an isolation. So that makes things more doable here. 43 seconds, and now it's decision time. Do we back up, or we don't know if anyone's in lockers, and try to play at A, or do we re-wrap? Did Wuling just see the rotation? Yeah, he did. He had to have. Right? Oh my, brilliant. That timing was everything to be able to see the complete coverage. You have now flipped the map, and that is such a good call. Back to check over at A. You know you have B completely covered. You saw everybody over towards A. And look where Ginon's playing. Just tucked over towards the top side at mid. There's the train. Oh, careful, brother. G9 checking just over the middle through ticket. Nothing to be seen yet. It's a 3-man stack through staircase. Do they line up here? First contact made. Lots of damage, but no kills. Off the reload. Almost able to find a kill. Still all in there. Wuling following up. Sloppy, but the kill is still coming through. And what a play from Wuling. Last one left to shake. Down to the 1v1. Wuling dealing damage, keeping the regen away. Fighting with some time, and there's the last shot. Give credit to Wuling. That is essentially a 1v4 with the final kill, plus the call to rotate, getting the last 3 kills. I mean, that's just insane. You were mid-call, just saying it. You have to push it, you have to be able to find that thing if you have any hope to be able to plan at A. But then you turn around, you get the timing, you see everybody rotating over towards A. Brilliant, now back within 1. Quick hit. Very ceremoniously over towards top at B. King able to get first blood, but it's not going to stop Q9 trying to play forward, although maybe it should. A little bit of a lineup here, though, for Wuling. He's able to get another double. But he's got to find so much more than that, and what would have to be a 1v5 and Wolves opening first bloods. Getting them now up to point. B-site defensively. Yeah, that's where the Wolfpack is at, baby. I'll say. Q9 has no chance. They have to try to get themselves through the middle halls or over towards A, and that's going to be the immediate call. Would be nice to at least have the bomb on this rotation, but not hey. important. No. Yeah, you're right. Just get kills. Yep. Good point. Now Chi will back up. Looks like he will be the designated bomb carrier for the round. King hasn't sniped this angle yet, and he is getting risky. Oh my goodness, this is deep through the offensive train side. Hasn't seen anything yet. Timing's not good. Oh yeah, Q9 on the other side was able to scout him out. So first blood tally, nice little patient play here from Q9 in a 5v4. Options as well. With that sniper off the table, you can continue to play through mid or hit the outsides of either bomb site. They have to know that at least one more player is going to be playing deep around the bridge, if not inside the train, right? That's Zai you can see on the X-ray as well as the minimap. Needs to at least be cleared. All these angles need to be watched. One player watching the flank. Of course, he's Xian, just in case. And the bomb's going to get planted. Now it's just about the post plant. Needs to be the one you're looking for. Want to push it to another round. Good opener here from Zai. Still kind of stuck just inside of planters. Yang steps forward, finds one, and keeps his life. The chase is on, and he predicts it, goes to the drop shot, spree fires it out, and the spam will work. So now just down to Neon. And oh my, there are Q9 members all over that train. And Neon will change the angle, try to give himself a bit of a chance here through mid, but
I mean, there's just not enough लगाया time. उसका Another hit snipe. marker comes through. We're clipping toenails out here. Looks like what the. You know, they always say to at least get your haircut before land. They never say get your haircut at land. That's exactly what is happening right now at Express. ये round जीत Also के तो never got खत्म my बनना haircut तो at a फिर train OT station. मानो, Can't say I've ever looked for one. 5-6. Still the chance to close things out here if you are Wolves. Q9 though starting to adapt and overcome. It's a mid-map push once again. Wall bang है, अरे बाबा. First blood for King, followed up by ओ Shing. 5v3 हो गया वहाँ दो बंदे निपटा दिए Is forward. दिखा नहीं रहे Could ना make a वो bit of a हमारे mess of के this, but decides instead to default Yeah, back Brandy for a भी little कर bit of देगा. safety. And now he's stuck. King sees him. And Yeah, the slow yeah. peek that leads to eventually an easy scope. क्या So, sniping कर रहा trouble है here यार. on the side of Q9. It is all down to Willing. Gets the first, that's fine, but 11 kills पे और वो kill है sniper sniper on होगी. life raft here, but he is so down current. उनका जो मेन स्नाइपर है Maybe दो out of किल नहीं reach. उठा नहीं पा रहा हूँ You got time? Do you have a hope and a dream for an ace 1v5? Everybody's just stacked together. No chance in hell. Wolves. All off the offensive opening for them. They have built themselves such a massive lead. They'll take this map number 2 in kind. It was a 4-2-half, a 7-5 finish. And I gotta say, this is exactly what they wanted, isn't it? The ability to be able to at least push it to a control, something that has been quite good for them historically. But that was a massive opening offensively, just completely playing Q9 like fiddle. Yeah, and I wonder how much of the previous experience playing up against this Q9 team kind of had them read on that offensive play where Q9 wanted to push not just to A, but through it. Yeah. And kind of the same thing of how they like off the get-go to play their break off towards B. Because all the first 3 rounds were so damn convincing for Wolves defensively over the top of this B site. And then once things naturally started to move, it ended up being pretty clear that there was a good understanding of how Q9 wanted to play their post-plant situation. So really good on both sides of the bomb there for Wolves. Q9 kept it interesting, mostly because of this guy right here, saving a couple of the rounds आइए individually. देखें क्या हर्षी के पैक में कुछ अच्छा मिलेगा. ये एपी दोनों एकदम cool एच इन हो तो भी कैसा. Drop a third straight Express Search and Destroy versus their came to play in this one for Wolves. They didn't want to drop a third straight Express. Fact, not doomed to repeat itself this time. लेकिन भाई ये सब चीजें बड़ी जल्दी नोटिस कर रहे हैं यार मेरे को बहुत awkward हो जाता है कि मेरे साथ ना हो करके. यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? मेरे को लग रहा है गियर 5 है क्योंकि गियर 5 भी सिल्वर और व्हाइट में होता है ना. गियर 5 भी सिल्वर और व्हाइट में तो होता है. ओ भाई यार हो भी सकता है भाई. क्या है यार क्या है सबसे पहले तो एक मरीना आया है. कुमा आ गया. कुमा. बार्थोलोमियो कुमा ये वो सी ड्रैगन. चलो कम ऑन. ओके ये वानोकुनी का है. जायंट है. बाबा 7000 भी है भाई. भाई ये कुछ लेजेंडरी है, मस्त है और कम हो रहा है कहने को. इसकी पावर भी 7000 है, तुम समझ रहे हो? अरे भाई ये मेरे को दिख गया, ये समझ गया मैं इसको. देख एनएल है क्या? एनएल है. एनएल सॉरी एनएल वो गॉड वाला एनएल. भाई ओ एनएल है ब्रो. इसका भी आर्क एनएल. भाई ये कार्ड क्या चमक रहा है ब्रो. ये कैरेक्टर याद करना, ये भी आएगा ब्रो. भाई लग रहा है यार, ये क्या लग रहा है भाई. लाइटिंग चमक रही है पूरी. मैं तो हुई लकी यार. क्रेजी भाई. वो दोनों कार्ड्स भी, वो जो दोनों वो है ना, उनको भी मेरा बोल दो और फिर खोलो, उसमें और अच्छे अच्छे कार्ड्स निकलेंगे. मेरे वाला बढ़िया था कि ये वाला ज्यादा बढ़िया है? अब अभी तक का सबसे बेस्ट कार्ड ये हो गया है. हाँ. जज करना टू बी ऑनेस्ट. नहीं दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा पावरफुल है. नहीं किजारू है. हाँ ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो है ना, इसकी लाइटनिंग वाला बहुत क्रेजी है. लेकिन क्या कहते हैं उसे, बट ये किजारू पीक है और वो स्टार्टिंग है, ये याद रखना. ओके. बट कार्ड में तो पावर दिखाई है, ज्यादा दिखाई है. चलो ये भी हर सी दिखा है, कुछ अच्छा निकल जाए बस. आइए देव का कार्ड अनबॉक्सिंग हो रही है. कुछ नहीं दिखा यार. बा मुझे तो क्रेजी दिख रहा है. तुझे कैसे नहीं दिख रहा है भाई? दिखा अब दिखा भाई. तुझे कैसे नहीं दिख रहा है भाई? ये मेरा वाला खुल रहा है शायद, है ना? अब तो कार्ड खुल जाती है. ये मेरा है. बहुत ही गंदे लोग भाई यार. अबे पहले कौन आ गया? ये तो आ गया रोनी. दोबारा ड्रैगन. 2 रोनी आ चुके हैं. ये वो है
जिसको जोरो पेलते हैं। ओ चॉपर चॉपर यार बहुत देर में दिख रहा है हमको तो। चलो ओ भाई बढ़िया कार्ड 6000 भाई ये कुछ ज्यादा ही अच्छा कार्ड है भाई ये। ओके किड निकल गया, किड निकल गया भाई। एडमिरल वो है यंग को माना जाता है इसको। शीश भाई दिखने में कितना कूल है ब्रो। वाओ शिट भाई एडमिरल भाई, एडमिरल बहुत क्रेजी। लास्ट वाला भी मेरा नाम लेके खोलना। लॉस्ट जनरेशन वाओ भाई यार। लेकिन रुको अभी देखो तो भाई क्या कार्ड भाई निकले, लेकिन क्या हुआ ये तीनों क्या क्रेजी कार्ड निकले भाई हमारे। एनएल निकल गया, किजारू निकल गया, तीनों कैरेक्टर कार्ड जो बहुत क्रेजी कैरेक्टर्स है भाई। गेम कैरेक्टर है सारे। अब यार तुम्हारे में कुछ अच्छा नहीं निकला तो तुम्हें तो फोमो हो जाएगा ना। क्यों ए फिर बार तुमको पता है किड कौन है इसका? मतलब ये लूफी के बराबर है और सैंक्स एक नेम अटैक मारता है, खत्म पूरा क्रू खत्म शिप के साथ। ये भी हाँ क्योंकि ये कुछ करने वाला था सैंक्स के फ्यूचर जो वो हाकी देख लेता है। अच्छा इतना पावरफुल है सैंक्स, डिवाइन डिपार्चर मारता गया। ओके लेट्स सी। ओ मैच स्टार्ट होने वाला, जल्दी करो। चलो हे बिग मॉम आ गया सही में। बिग मॉम नहीं हाँ ओके ये वो है गार पे है। अरे हाँ गार पे वो लॉ आ गया, बचपन लॉ आ गया, छोटू लॉ। तेरा उसी 0 पावर बस ये वो है मतलब खुद पे वो है एक एंशिएंट वेपन है यार। मैंने तो पहले ही बोला था कि बोल देते कि ये हर्षी का कार्ड है तो कुछ अच्छा निकल आता। लग तो सही रहा है ना। ब्लर क्यों हो रहा है, कर ले फोकस भाई। वैसे ब्लर हो रहा है, अब जब काम आए तब ब्लर नहीं हो रहा है। ये भी एंशिएंट वेपन है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं यार, कोई बात नहीं ब्लीड भाई, कोई नहीं यार। वेपन तो मिल गया ना भाई। हाँ, वैसे एंशिएंट वेपन है। ये कार्ड अच्छा हो सकता है। देखो पावर एकदम 0 है, यूनिक भी हो सकता है। होता है यार, ऐसे फोमो करने वाली कोई चीज नहीं है। फोमो हो भी नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। 3 कार्ड ना रो अच्छी निकले, एक बेकार निकलेगा, क्या ही दिक्कत है यार, क्या ही दिक्कत है। फन फैक्ट बताओ, सारे कार्ड इन्हीं के हैं। वो तो है। गेम स्टार्ट हो गया। वो पहला राउंड वुल्फ जीत रही है। कौन सा वाला है? ये मैप भाई एनिमेशन तगड़ा है, मुंडे गिर से That's a bit of a miss, and a 4-life gap is not insignificant. Sure. Wolves have to still be a little bit careful here. Lots of time in the clock. No need to rush anything. Good elimination over the backside over towards gas. Off respawn. Shinan will go right back over towards the warehouse. Mauchi does really good work trying to keep this spawn trap in play here on the other side. This is going to be a battle of who gets the kills first here. You've got spawn traps starting to come through for Q9, but they only have 5 lives remaining. On the other side, Peg is also kind of floating around the Q9 defensive spawn. Still a minute 10 on the clock and a 7v3. You have to know that Wolves are saying play for the kills. And boy, stuck on opposite sides of the map from one another. This would have to be a hero play. And well, for a moment I had to say वाले हो गया। Because a couple of individual kills did come through, but now Wolves are stacking. It's going to force the hand of Yang into the full stack. No worries there. Wolves will get the second tick at 8 and take the round. Yeah, and it's literally just more massive than it does sound like. Being able to find that second segment again, how standoff does play out. We will see a lot of kills be the discrepancy when it comes down to winning control rounds on standoff more often than not. But if you want a round 5 defense and a little bit more of an easier advantage, then you want more segments of progression. So we'll see how well things progress on through this opening break for Q9. A little bit of a trade discrepancy going back and forth, but Wolves being on the defensive side of things have mid-map coverage, and they're also watching their flank. All long-range shots from Peg. He does have the Purifier at the ready if he needs it. No cause for concern yet, though. As once more, Q9 just kind of find themselves just battling for every inch possible. Smoke takes over the front side. That's actually where Neon has to pull the Sparrow out to contest.
Does get one before taking himself out, and the follow-up from Wolves, pretty much picture perfect. 50 seconds on the clock. Over towards B, there is an opportunity for Yuling to kind of play his own life and keep the clock down, jumping वो jump कर रहा था direct मार दिया ओए one shot one kill body लगेगा तब भी लगेगा अच्छा तो streak वाली गन हाँ ऐसा कुछ करने वो देखो एक और ले गया used to put the spawn trap ओबे भाई ले ही जा रहा है भाई ये पुल का बंदा पेल रहा है भाई for the side of Wolves. 10 life discrepancy with 35 seconds. Wolves looking good for a 2-0 start here. Man, it's a real pain in the ass being right sometimes, isn't it? It truly is. Yeah, I mean, Wolves just quite literally right at home. तो उनका हाथ फिर उस वाले गेम टाइप में ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से किस्मत होगी वो मैप उन पे आ गया तो उनकी पोजीशन अच्छी थी मुझे वही लग रहा है उनके पास जो मारते गए स्टार्टिंग में उन्होंने लीड ले ली फिर वेपन फिर वो तगड़े मिलते गए धड़ाधड़ चालू ही हो गए No respawns remaining. At least they broke past the 25-yard line. Might be able to show some presence over at A, but again, the numbers just you feel like are too far gone. They're down by 10 lives for crying out loud. Yeah, they can get past the 25-yard line, but it's still 4th and forever. Unless you're Alabama, it's not going to work out well for you. I know you didn't catch. Roll Tide. Catch that? I did. 4th and उसको 31. सिर्फ एक और जीतना है ये वाला जीत के वुल्फ जीत गई क्योंकि फर्स्ट मैच जो था वो ये जीते गिंग जीते सेकंड मैच वुल्फ जीते थर्ड भी वुल्फ जीत That जाएंगे is abusive. That's as devastating of a round as you could possibly ever ask for when it comes down to control. And that's why we put such a massive highlight on Wolves getting this standoff. Now you go in towards round number 3, potentially the final, but Q9 have an abundance of operators to play with, all 5 to be honest. Prejudice called in, will not land though for Zai. So defense will stay healthy through this. Again, a full 6-pack, 5-pack of operators at the ready here for Q9, and most of them are trying to be pulled in this particular moment. Live staying even. Wolves staying a touch at bay, trying to play through the AS and D site over towards the B zone. But that largely has not worked out all that well. So for Q9, pretty comfortable to this point. And it really comes down to the decision-making of where does Wolves want to go here. Their option towards B has been shut down, and now they're defaulting to playing around the backside of A. Got one player at least slipping the net. That's Peg, because of course it is. Immediately just pushes past Deli and in towards Hotel as well. So everybody that was kind of threatening them over by Granny's car is just immediately dealt with. But the biggest issue is that those trades are still there to speak of. 20 plays up against 21. It still feels like Q9 has the majority of the map control. And well, Q9 tried to call in a couple operators. The big thing's really punishing. Doesn't fully work out, but the clock is starting to get to that point where it's do or die time here for Wolves. It's going to force the hand towards A. One member on, will start making a little bit of progress. First tick does get locked. Wheeling up top, trying to find a way to contest. Doesn't quite scout the player down low and gets forced into a battle with Sai, where fortunately there's a trade. And the clock will continue to tick. 18 seconds on the clock. Here comes the next hit. Purifier out for Sun. Ooh, bold call here, but lives are becoming a bit of an issue, so he'll take this in towards Diner. That'll be enough to clear the space, but look at the route from Wolves on the minimap. They're going to start spending operators of their own to get on towards B all of a sudden, and the clock will stop at 10 with 2 members on the first tick lock. Gravity Vortex Cannon invested here for Xing. Also had a Sparrow that was shut down there for Q9. Oh, no. And what a crazy call coming through from Wolves. They caught Q9 lacking. Neon with the Sparrow is able to go on a 3 spree, and the Annihilator soon after for Zai. That is going to be a chalk B zone, a 5-life lead, and 60 seconds added on towards the board. Yeah, the extra minute may be all that's needed here for Wolves to put this one out of reach. 11 plays 5. No more operators at the ready here for Q9. It was a heck of a battle, but it looks like it's on its last stand here. Okay, does get taken down, trying to get a little bit aggressive in towards spawn. Peg, Purifier in spawn. Oh my, is the oven on Grandma? Because here comes the fire, or is it? Okay, hold on. He does at least get 2 post-death, but did not happen as cleanly as you would have anticipated off the flank. 6 feet 3. Q9 just looking for some ground to stand on. They were being hunted. Yeah, I mean, this is not good news. Not good news at all. 3v1 situation. Last one standing is Maushi on the backside of that gas station. He is going to be forced to come contest A because there's already members on. And very, very casually, Wolves are going to find themselves a 3-0 here and avoid the embarrassment from Apocalypse Hardpoint and still clean things up against Q9. Saying that, yep, they are indeed the best team in China right now. Look, man,
You lost the hard point. Scoreline wasn't all too respectfully, but 2-3-5, we know that is Wolves' mainline focus to be able to winning a lot of these different series. It is insane to say the least. Again, with that standoff control coming through, that is the devil's dance. If you are Q9, you knew that it was either going to be a crossroads or it was going to be a standoff, or it could end up being right. Don't really remember what the veto was. Regardless of the matter, the standoff was the pick for Wolves. You knew it was coming down to it. The homework was there for Wolves for the Express Search and Destroy. It simply was not there for Q9 on the standoff. And I'm still not convinced, friends. Like, there are still moments in there where it's for Wolves. They're going to qualify to tomorrow, but there's a lot of vulnerabilities on this team. They're going to come out 3-0, and the people on the squad are going to say, hey, Wolves came out undefeated, but they were tested, man, like flat out throughout the day. And I think once teams start to kind of put together some of the things we've been talking about in terms of what they're bringing into this event, things like... कॉल कर लूंगा, मुझे मत कॉल करना भाई, इधर को मत आना फिर. लेके आऊंगा अपने पिच उठाया. अरे मुझे कहाँ पकड़ ले हो, ये लो. अरे मुझे कहाँ पकड़ ले हो. रोनी का एड्रेस भेजना. आजा मेरे को पकड़ लो. बाबा रोनी के पापा आएंगे साढ़े. चलो गाइस, मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम. आई होप यू गाइस एंजॉयड. मजा आया होगा तो लाइक वाला बटन दबाना, जो भी नहीं सब्सक्राइब करना. चलते, मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है. एक्चुअली मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है. तबीयत वैसी खराब है, यू नो. और दोनों भाई को नींद भी बहुत तेज आए. आंखें देखो हमारी भाई, जहरीली आंखें, और जहर लग रखा आंखों में. नींद मांग रही है. मेरी आंखें तो पहले से जहरीली हैं. ये तो पहले से लेके आया था जहरीली आंखें भाई. चलो गाइस, गुड्स की नाइट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम. आई होप मजा आया होगा. गुड नाइट लमू. कल मिलते हैं, कल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 23 डे 2 पे मिलेंगे अब.